हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक जिया जाए ना और पिया रे और लम्हे तू कहीं मत जा हो सके तो उम्र भर थम जा जिया जाए ना और पिया रे धूप आए तो छाँव तुम लाना ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना बारिशों में भीग संग जाना जाए ना और पिया रे जिया जाए ना और पिया रे पिया रे छिपा मैं किसी से
तो चलिए आज आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। CG टॉक्स एंड OHSSAI प्रेजेंट्स कॉन्क्लेव 2024 में मेरा नाम ऐश्वर्या है और आज के पूरे इस कॉन्क्लेव के दौरान हम आप सभी लोगों के साथ बने रहेंगे। तो इससे पहले कि हम हमारे अतिथियों के स्वागत की ओर बढ़ें और हमारे गेस्ट का वेलकम बहुत ही जल्द होगा, जैसे ही उनका स्वागत हम करेंगे, जैसे ही उनके वेलकम की तरफ हम बढ़ेंगे, आज के हमारे इस इवेंट की, आज के हमारे इस कॉन्क्लेव 2024 की हम ऑफिशियली शुरुआत करेंगे। सो एज यू ऑल नो, आज का हमारा ये जो कॉन्क्लेव है वो एक कोशिश है टू ब्रिंग ऑल द सेक्टर्स टुगेदर सच एज ESG, सेफ्टी, हाइजीन एंड HR। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आज के हमारे जितने भी डेलीगेट्स जो बाहर की तरफ है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ जॉइन अस इनसाइड। जितने भी लोग, जितने भी गेस्ट जो बाहर की तरफ हैं, आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और देखिए, हम शुरुआत करेंगे ऑफिशियली बहुत ही जल्द, बट बिफोर दैट मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर बनी हुई हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या है और आज के हमारे इस इवेंट में बेसिकली फॉर्मल पार्ट्स ज़्यादा होने वाले हैं। बेसिकली एज यू ऑल नो, आज के हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं वो पैन इंडिया से यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनकी बातें सुनेंगे, उनके पर्सपेक्टिव्स जानेंगे और उनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे भी। बट बिफोर दैट आई एम हियर, तो मुझे लगता है मेरा काम है आप सभी लोगों को थोड़ा सा एनर्जेटिक रखना थ्रू आउट आवर मीट, थ्रू आउट आवर प्रेजेंटेशन। तो अभी कुछ छोटी सी ऐसी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे आप सभी थोड़ा एंटरटेन्ड फील करेंगे, थोड़ा एक्टिव फील करेंगे, बिकॉज वी ऑल आर हेयर सिंस मॉर्निंग। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे पहले कि हम फॉर्मल पार्ट की तरफ बढ़ें, आप सभी लोगों के साथ मिलकर आज के इस इवेंट को थोड़ा एनर्जेटिक बनाते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों की तरफ से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटलमैन, बिफोर वी बिगिन, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द होल टीम ऑफ कॉन्क्लेव 2024 एंड फॉर यू ऑल। एक बार जोरदार तालियों की आवाज़। सो आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आज हमारे बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो पैन इंडिया से आए हुए हैं, तो हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, यूजुअली हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, राइट? लेकिन हम छत्तीसगढ़ से हैं और आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि जब छत्तीसगढ़ी में किन्हीं का वेलकम करते हैं हम छत्तीसगढ़ वाले, तो क्या कहते हैं? जय जोहार। तो मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जितने भी अतिथि, जितने भी डेलीगेट्स, आप सब भी जो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी अंदाज में वेलकम होना चाहिए। तो मेरे ऑन द काउंट ऑफ 3 to 1 सभी मेरे साथ एक बार मिलकर जय जोहार बोलेंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ पूरी एनर्जी के साथ आप सभी लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पर आवाज़ सुनने को मिलेगी। सो आर वी सेट? ओके, सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। अच्छा, इस तरफ से थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, इधर मुझे मामला बहुत शांत लग रहा है। थोड़ी सी और एनर्जी आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल। कम ऑन एवरीवन, 3, 2, 1। आई गेस बेटर था पहले से। सो मेरी, एज आई सेड, माई पार्ट इज टू कीप यू ऑल थ्रू अवर टुडेज इवेंट। मेरा पार्ट तो वही है, लेकिन अभी चलिए एक छोटी सी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करेंगे। सो वी ऑल आर हियर सिंस मॉर्निंग, वी ऑल आर ट्रैवलिंग, हम बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हुए हैं। तो अभी इस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी से मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप मेंटली भी एक्टिव हो जाए और हमारे इस मीट को बिल्कुल 100% अपनी प्रेजेंटेशन के साथ इसे अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ 1, 2, 3 की गिनती आप सभी लोगों को आती होगी। सो आने वाले 30 सेकेंड्स के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप में से जो जहाँ कहीं भी मौजूद है, जहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, आप सभी के दोनों हाथ एक बार ऊपर होने चाहिए। कैन वी रेज बोथ ऑफ आवर हैंड्स प्लीज? ओके, फैंटास्टिक। सो अभी जब भी मैं 1 कहूंगी, 30 सेकेंड्स प्लीज प्लीज सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। जब भी मैं 1 कहूंगी, 1 पे एक बार चुटकी होनी चाहिए, 2 पे एक बार चुटकी होनी चाहिए, 3 पे एक बार सिंगल टाइम क्लैप करेंगे। चलिए कोशिश करके देखते हैं। 1, 2, 3। ओके, अब बस थोड़ी सी एनर्जी के साथ। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। फैंटास्टिक। मुस्कुराइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। सो नाउ आई होप यू ऑल आर फीलिंग एक्टिव। आप सभी थोड़ा सा एक्टिव फील कर रहे होंगे। सो मूविंग अहेड जेंटलमैन, हम बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को आज की हमारे इवेंट की तरफ लिए चलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। चलिए आज के हमारे इस
इवेंट की शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा वेलकम सॉन्ग आप सभी लोगों के लिए, उसके बाद फिर भरतनाट्यम की तरफ भी लिए चलेंगे। सो मूविंग अहेड वी आर हैविंग आज हमारे साथ देवेंद्र मानिकपुरी जी और उनकी पूरी टीम है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक प्यारा सा स्वागत गीत वेलकम सॉन्ग उनकी तरफ से। सर प्लीज। स्वागतम स्वागतम आपके आने से धन्य हुए हैं हम। स्वागतम स्वागतम आपके आने से धन्य हुए हैं हम। स्वागतम स्वागतम थैंक यू सो मच। सो बहुत ही प्यारी सी शुरुआत बाय द टीम देवेंद्र मानिकपुरी जी और उनकी पूरी टीम। आज पूरे दिन रहेंगी हमारे साथ और म्यूजिकली एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगी। तो चलिए, जैसा कि हमारी रीत है, जैसा कि हमारी रीति है, हम उस और आप सभी लोगों को लिए चलेंगे। और अब बारी है लैम्प लाइटिंग यानी कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के हमारे इस
कॉन्क्लेव 2024 गुफ्तगू की खूबसूरत सी शुरुआत करने की मैं निवेदन करना चाहूँगी। हमारे जिन भी अतिथियों का नाम हम ले रहे हैं, आप सभी प्लीज़ हमें ऑन स्टेज ज्वाइन करेंगे फॉर लाइटिंग ऑफ द लैम्प। सबसे पहले तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, बहुत ही प्यारी सी शुभ शुरुआत करते हैं बाय लाइटिंग ऑफ द लैम्प। हमारे जिन भी अतिथियों का नाम हम ले रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी प्लीज़ हमें ऑन स्टेज ज्वाइन करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। सबसे पहले हमारे बीच आज मौजूद हैं ग्लोबल प्रेसिडेंट ऑफ OHSSAI. I would be requesting Shri Avdesh Malaiya sir to please join us on stage for lighting of the lamp. बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है थोड़ी सी तालियों की आवाज़। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल DGFASLI श्री H विश्वनाथन सर फ्रॉम मुंबई। वी वेलकम यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ जॉइन अस। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ उर्ला एसोसिएशन श्री अश्विन गर्ग सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज़ जॉइन अस एज वेल। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं from Hyderabad we are having Dr. Major Bakhtiyar Chaudhary sir. I would request you sir to please join us. As well as we are having Dr. Ravi Gurbani sir from Nagpur, as well as we are having Dr. S.K. Haldar sir. He's the Deputy Director General of DGFASLI. I would request you sir to please join us. साथ ही मैं request करना चाहूँगी, I would be requesting Mr. Shyam Dev Tale sir. So we welcome all our dignitaries on stage. I would request you all please join us forward for the lighting of the lamp. और साथ ही आप में से जो जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, आप अपनी जगह पर खड़े होकर इस दीप प्रज्वलन का हिस्सा बन सकते हैं। I would request you all gentlemen to do. So चलिए लैम्प लाइटिंग की तरफ लिए चलते हैं आप सभी लोगों को। बहुत ही प्यारी सी शुरुआत आज के हमारे इस इवेंट की हम करने वाले हैं दीप प्रज्वलन। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड पंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती एष बोलो सरस्वती मैया की। I would also be requesting Dr. Manohar Kamble sir, can we have you sir please? Thank you so much, gentlemen. I would request you all to please be seated. Thank you so much, everyone, for joining us on the dais. ऑल्सो आप सभी लोगों को हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज का हमारा कॉन्क्लेव 2024 फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन पर हमारी जो भी गेस्ट जो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, दे कैन ऑल वॉच इट लाइव ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड लिंक्डइन एज वेल। सो ये इन्फॉर्मेशन हम आप सभी लोगों को देना चाहेंगे। और चलिए आज के हमारे इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही प्यारी सी शुरुआत करते हुए अप नेक्स्ट वी आर हैविंग gentlemen the very talented Vanshika Thakur with us on stage.
और वो हमें ज्वाइन कर रही है एक छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए एंड द डांसिंग फॉर्म इज भरतनाट्यम. लेट्स वेलकम वंशिका ठाकुर ऑन स्टेज. स्वागत करते हैं हम आपका. Everyone. Mother,
थैंक यू सो मच वांशिका फॉर द वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत। और चलिए एक बार फिर से आज के हमारे इस इवेंट को फॉर्मली बिगिन करते हुए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल जेंटलमैन टू प्लीज बी सीटेड। तहे दिल से स्वागत करता हूं और हमारे बीच उपस्थित हैं लोक कलाकार मीर अली मीर साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। वो इंटरनेशनल फिल्म में लोक गायक हैं और नंदाजा ही रे करके गाना आपने सुना होगा, वर्ल्ड रिनाउंड। मैं स्वागत करता हूं श्री M.K. अग्रवाल साहब का, एक्स चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। मैं स्वागत करता हूं एंथोनी तिर्की साहब का। मैं स्वागत करता हूं श्री D.M. नेमा साहब का और सभी उपस्थित सज्जनों का। जो है आप लोग तो उठाइएगा, ये महज सेफ्टी का प्रोग्राम नहीं है। और छत्तीसगढ़ में पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी फ्रेटर्निटी जो कारखानों में कार्यरत है, चाहे HR हो, चाहे सेफ्टी हो, या फिर ESG हो, या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो, अभी लाइव डेमो भी होगा, बहुत सारे। और साथ ही साथ आपको इतना दावा करता हूं कि आपको बोर होने नहीं दिया जाएगा, जैसे आमतौर पर टेक्निकल कॉन्क्लेव में होता है। तो हम लोग आमतौर पर सेफ्टी का तो प्रोग्राम करा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी से जुड़े हुए हम लोग कारखानों में काम करते हैं या किसी उत्सव में शामिल होते हैं, होटल में जाते हैं, किसी बड़े रिसेप्शन में जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो वायलेशन होता है, आप देखेंगे, सेफ्टी नॉर्म्स का होता है। और एक छोटा सा गलती, न जाने उपहार सिनेमा कांड दिल्ली में जो हुआ था, उसकी परिणति के शक्ल में देखते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मैं पेन इंडिया में अलग अलग जगह जाता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आमतौर पर ये एक अभाव की स्थिति था, इसीलिए ओसाई इंटरनेशनल, जिनका अस्तित्व जो है मिडल ईस्ट, सिंगापुर और देश के तमाम जगह जो है इनका अस्तित्व है, उसके कोलेब्रेशन से CG टॉक्स द्वारा ये छोटा सा प्रयास किया गया है। आशा है कि आपका आशीर्वाद, स्नेह हमको मिलता रहेगा। दोस्तों, हम चाहे कहीं भी जाएं, गैदरिंग जहां होता है वहां सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है। तो मैं ओसाई ग्लोबल ऑपरेशन के डायरेक्टर श्री संजय साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे ओकेजन में जहां जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या इस प्रकार के प्रोग्राम हो या सेमिनार हो, इवन शादी का भी, तो सेफ्टी कितना महत्वपूर्ण है उसके संदर्भ में थोड़ा सा जो है ब्रीफ जानकारी आपको देंगे। संजय सर, ये मुंबई से आए हैं। जय जोहार। मैं तो मुंबई से आया हूँ, लेकिन ओशाई फाउंडेशन की तरफ से ये हमारा पहला ही चाहते हैं कि जो भी जिसमें भी इवेंट में हम कोलैबोरेट करें, वो खाली नेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो मैं पैन इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा हूँ। तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट काइंड ऑफ अप्लॉज, दैट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन एंड स्टैंडर्ड्स। अभी जो भी हम इवेंट कभी भी करते हैं, तो पहला चीज़ है जिसको हम सेफ्टी ब्रीफिंग बोलते हैं। तो ये हमारा जो पहला इवेंट हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है रज्जू सर के साथ में। तो पहला चीज़ ये है कि जब हम साथ में काम कर रहे, तो जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है उसका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो सही है या नहीं। तो हमने मोटी मोटी चीज़ें तो देख ली है। तो ये होटल के अंदर में जो फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम है, या फायर एक्सटिंग्विशर्स है, या फर्स्ट एड बॉक्स भी रखी है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए खाली एक ही आदमी है, जैसे कि हमारे साथ ऋतुराज देशमुख जी है। तो कोई भी चीज़ होनी है तो कोई एक सिस्टम होना ज़रूरी है। तो लेट्स गिव अ बिग अप्लॉज टू ऋतुराज देशमुख। कोई भी चीज़ आपको तकलीफ है तो आपको ऋतुराज देशमुख से बात करनी है। ही इज़ फुल्ली अवेयर एंड वो तुरंत आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे।
जो मोटी मोटी चीज़ है जैसे कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन है तो असेंबली पॉइंट बाहर ही है तो सब तरफ जाने का है। थोड़ी और कुछ हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और बेंचमार्क और ज़्यादा करेंगे, जैसे कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी बहुत जगह सिंगापुर में या दुबई में लगाते हैं। तो स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे और ये आशा करता हूँ कि ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो सही तरह से चले और सब मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड की तरफ से चले। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। दूसरा चीज़ है कि जो भी मैं कुछ कंपनी में अवधेश सर के साथ में कल गया था, जैसे कि इंडियन ऑयल, अडानी है या HPCL, हमारे दोस्त भी बैठे हैं, तो एक चीज़ तो अहम है कि भाई आपको यदि जागरूकता लानी है कंपनी के अंदर में, सेफ्टी अवेयरनेस है या जिसको हम हमारी HSC प्रोफेशनल के लैंग्वेज में बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी जो बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जागरूकता, what are the various tools available that can be used, and one of the tool available with us is called safety moment. It basically connects the audience or the participants of the meeting or the event to the commitment on safety. तो ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो करीबन 4 या 6 वीक्स पहले मेरे को मेयर अवधेश जी जा रहे थे, हमको जमशेदपुर जाने का था। तो ओशा इज़ वेरी वेरी कमिटेड टू रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारा हैदराबाद में एक बड़ा इवेंट हुआ था। तो उस इवेंट के पहले से ही वी आर कमिटेड टू रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बिकॉज द नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ in India that takes place is as high as 1.68 lakhs per year, which is more than the COVID. So many people may not be aware. तो जब हम रांची एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वोल्टास के साथ था, वो एक कार आई थी। तो नॉर्मली वी डोंट गेट इनटू एनी कार अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ गॉट प्रॉपर सीट बेल्ट्स। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो वो जो ऑर्गेनाइज़र है उनको बताते हैं कि भाई आप कौन सी भी गाड़ी भेजो लेकिन उसके सीट बेल्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो हम जब गए तो सीट बेल्ट तो अच्छे थे और चल बसे वहाँ से जमशेदपुर के लिए। तो वो जो ड्राइवर था वो बार बार टेलीफोन के ऊपर बात कर रहा था। तो एवरी 2 minutes सम कॉल वाज कमिंग एंड ही वाज रिस्पॉन्डिंग एंड टॉकिंग. So which was quite disturbing because as you know that as a part of compliance, rule compliance, we don't encourage doing that. तो अवधेश सर ने बोला कि ये बार बार आप चलाते हो, ये तो बगल में जरा स्टॉप करो और फिर बात करो। लेकिन वो नंबर ऑफ कॉल्स वेर सो मेनी दैट आई टोल्ड हिम, लुक आई विल गिव यू मैक्सिमम 3 calls you can attend till the time we reach जमशेदपुर, और ये आपका कॉल नहीं लेना है। तो बोला ठीक है सर। तो कॉल आते रहे, वो डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉल ही वाज आंसरिंग टू द कॉल। तो 3 कॉल तो हो गए, भाई चौथा कॉल आ रहा था। तो उसने हमको पूछा कि भाई सर आपको चाय पीनी है, तो बड़ा अच्छा स्पॉट है, आप वहाँ पे चाय पीजिए, बाद में आगे देखेंगे। तो हमको समझ में आया कि भाई उसमें कुछ वो चतुराई कर रहा है, लेकिन हमने मान लिया, हमने चाय पी तो उसने चौथा
Thank you so much, sir. So moving ahead, as you all know, आज की itinerary थोड़ी ही देर में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी. But now it's time, I guess, to get started with our today's conclave. So once again, before we begin, स्वागत है आप सबका CG Talks and OHSSAI Presence Conclave 2024 के इस विशेष समागम में आप सभी लोगों को बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो हमारे स्पीकर्स हैं, वो अपने अपने एरिया में एक्सपर्टीज़ तो है ही, और साथ ही आज के हमारे इस इवेंट में आप सभी लोगों से अपना नॉलेज शेयर करने के लिए आए हुए हैं रिगार्डिंग ESG, सेफ्टी, हाइजीन एंड HR. आज के हमारे जितने भी गेस्ट हैं हमें बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे पैन इंडिया से हमारे डेलीगेट्स हमारे बीच मौजूद हैं. मूविंग अहेड, चलिए शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा समय सारणी यानी कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए आज सबसे पहले एज यू ऑल नो कि आज का हमारा ये कॉन्क्लेव 2024 गुफ्तगू इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ CG टॉक्स एंड OHSSAI. सो मूविंग अहेड, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज के इस विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो HSC एंड S के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए जो है प्रशंसित हैं. सो मूविंग अहेड, श्री अवधेश मलैया सर जो ओसाई के ग्लोबल प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना समर्थन और साथ ही नेतृत्व और अपने विचार जो हैं इस क्षेत्र में रखे हैं और एक नया आयाम इस क्षेत्र को दिया है. एंड नाउ टुडे फॉर अ कीनोट एड्रेसर टू गेट दिस कॉन्क्लेव 2024 started, it is our honor to welcome श्री अवधेश मलैया सर ऑन स्टेज, ग्लोबल प्रेसिडेंट ऑफ ओसाई. वी वेलकम यू सर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ हमें ज्वाइन करेंगे फॉर कीनोट एड्रेसर. एक बार ज़ोरदार तालियों की आवाज़ आप सभी लोगों की तरफ से. Dice mine. Hello. Good morning, everyone, once again. So basically, this is a presentation on OSHI Foundation and its capability. So OSHI का जर्नी अभी तक क्या रहा है वो हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं, because this event, first event in Chhattisgarh, we now foresee you all as a part of OSHI Foundation family also. So OSHI Foundation जो है वो हमने क्यों बनाया पहले तो, correct? And what is it? So actually OSHI Foundation is a voluntary organization which is not for profit organization, which has been formed by all the heads of HSE. So जो corporates के heads हैं, हम लोगों ने सोचा कि हम अपना कंपनी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, करेक्ट? क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमन लाइव्स, करेक्ट? बट देन इफ यू सी द फिगर्स ऑफ एक्सीडेंट्स विच आर हैपनिंग आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ एन इंडस्ट्री, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज मच लार्जर देन व्हाट इज हैपनिंग विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ इंडस्ट्री, करेक्ट? तो जैसे संजय जी ने बताया कि 1.68 lakh of deaths is happening every year on roads in India. ये तो reported figures है. You know, in India there is very much of under-reporting. So this figure goes fourfolds if you take entire figures, correct? Not only road safety, but if you see there are a lot of accidents which are happening in railways, correct? Which are happening in aviation, correct? And also in public places, but they are not reported, correct? Even housing societies में भी एक्सीडेंट होते हैं, हमारे घर पे भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं, लेकिन कभी रिपोर्ट नहीं होते हैं, correct? तो what we thought is, since we all are HSC and as professionals, why don't we come together, we form a body and then take up initiatives which will support government agencies to control such kinds of accidents, correct? So that is how this complete organization was formed with the like-minded people, firstly from the Maharashtra state, and now it has been expanding
not only in India but also internationally. Again, here what we have done is we have kept exclusivity for heads of HSE and top management, because what we believe is that safety or HSE is top to bottom driven approach, correct? तो जब तक टॉप के मैनेजमेंट या टॉप पीपल आर नॉट कन्विंस, इट कैन नॉट बी कैस्केडेड टू द ग्राउंड लेवल. So that is why we have kept exclusivity. We don't want to show the number of members who are associated with us. We are more interested to have members who are decision makers and who are at leadership roles. Correct? So that is how this organization came into picture. Again, we are promoting Make in India, not only in India but also internationally, because human talent, which was earlier being governed by the Europeans. आप अगर मिडल ईस्ट में भी जाएंगे तो पहले यूरोपियंस थे जो टॉप की पोजीशंस पे थे. आज की डेट में इंडियन प्रोफेशनल्स है वो की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, मेनली बिकॉज द horizon of India is expanding. The talent of India is being recognized not only in India but internationally also. And also vocal for local is our मेन मोटो, बिकॉज हर एक रीजन का एक इश्यूज होता है, वो इश्यूज को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है rather than working on conventional kind of thing. So that is why we have kept it vocal for local. In OSHI, what we believe is that behavior of a person is very much important, which has to be influenced or transformed. So what we believe is that parents and teachers, these are the two key stakeholders who play important role in our life. Correct? तो हमको जो भी माँ बाप ने सिखाया है, जो हमारे टीचर्स ने सिखाया है, वही हमारे बिहेवियर में है और वही हम बिहेव बाहर भी दिखाते हैं. करेक्ट? तो अगर उनको भी हम अगर हमारे इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करेंगे तो हम ज़्यादा चेंजेस लेके आ पाएंगे. मे बी we cannot change this generation entirely, but we can influence them and we can bring a change in the behaviors of the next generation. So that is the main motto which we are carrying with OSHI Foundation. So the journey was started in 2013. We are in 2024. Through this many years, we have gone through lot of maturity cycles. And in 2024 we started with Middle East chapter. So वहाँ के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, HR, ESG, सेफ्टी प्रोफेशनल्स, उनको भी ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा. उन्होंने बोला हम भी मिलके वहाँ पर एक OSHI का ब्रांच खोलना चाहते हैं. And that is how Middle East chapter is started. Even we have started footprints in Singapore. वहाँ के भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं. So maybe by next year we will start a chapter in Singapore also. So we are trying to explore that how Make in India can go into different countries. तो अभी तक हम जो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल या अमेरिकन सोसाइटी को फॉलो करते थे, so why not have an Indian body which will support Indian professionals and upgrade their skills and take them to international level. So this is the team that we have. So I will not go into detail of it, but we have Sanjay ji over here from operations. He is the operation director globally. We have Sunil Balirao ji, who is the global general secretary. Mr. Murli PA, he is from the Naira Energy. He is also a director. Similarly, there are different people who have taken different responsibilities and they are voluntarily supporting us in this drive. So basically we have a very general kind of structure. So core team है, core team के बाद में regional teams है, regional team के बाद में different initiatives है, and then we have formed different SIGs. So special interest groups हमने बनाए हैं. We also have regional teams in all the 4 corners of India, but now this is the first event which we are doing state-wise. So we are likely to do such kind of events in each and every of the states, and we want all the professionals to come together and form a body over here, exchange the best practices and also the lesson learned, so that we transform ourselves from the compliance culture
to the best safety culture. Within OSHI, again, we have formed 3 verticals because OSHI is completely not-for-profit organization which requires certain fundings from different sources so that those not-for-profit activities are also run. So we have a not-for-profit organization. We have also started with advisory and consulting services. So whatever profits are generated from advisory and consulting services, it goes to the not-for-profit organization. And we also have a startup ecosystem. Mainly, we want to bring focus of the students or the education institutes towards safety. So we have formed a startup ecosystem wherein अभी तक क्या होता था कि जो students है research करते थे, तो they used to take certain topics from the Google and then they used to do certain research on that and then they used to publish their research papers. But then ultimately at the end होता क्या है, वो सारे research papers आपका कॉलेज के लाइब्रेरी में चले जाते हैं and then it is of no use. Correct? So what we are doing is we are trying to take industry issues from all the industrial members that we have. We give those issues to the students. Students or educational institute क्या करते हैं, because they have a good research setup with them, they do research work on those aspects and they come up with certain good solutions. And you know आज की generation जो है वो mainly technology से भी है, innovations के ऊपर बहुत सारा ध्यान जाता है उनका, तो वो जो solutions लेके आते हैं वो एक कुछ unique solutions होते हैं. Then we present those solutions to the industry and if they are feasible, the industry can either hire those students or the students will get an opportunity to start their own startup. So we also run global awards. So I think most of you might be knowing OSHI Foundation, wherein there is a very strict evaluation process. There is a 3-stage evaluation process. आप बाहर कोई भी अवार्ड के लिए अप्लाई करते होंगे तो आप अप्लाई करते हैं और आपका इवेल्यूशन हो जाता है और उसके बाद में आपको अवार्ड मिल जाता है. बट हियर वी हैव अ 3-stage evaluation process. Not only 3-stage evaluation process, the unique feature is that we also have a surveillance attached to it. तो आपको जो अवार्ड मिलता है वो एक कंडीशनल अवार्ड मिलता है जहाँ पर 5 पॉइंट दिया जाता है इम्प्रूवमेंट एरियाज. वो 5 पॉइंट इम्प्रूवमेंट एरियाज आपको 6 महीने में करके दिखाना है एंड उसके बाद में एक सर्वेलेंस होता है टू रिटेन दैट पर्टिकुलर अवार्ड. एंड दिस काइंड ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर यू विल नॉट सी इन एनी ऑफ द अवार्डिंग सिस्टम्स. So these awards are yet open, so anyone who is interested can apply for them. Again, within awards we have a rating system. I'll not go into detail of it. The events that we do is a very different kind of events which are workshop kind of thing. So last event that we concluded was on the best practices. We are working with schools and colleges on an extensive level. We have a tie-up with Sona College in Chennai. We have a tie-up with Indrashil University. We have a tie-up with IIM Mumbai. And we are also have a tie-up with Alva Institute in Mangalore. So these are the activities that we are doing with Educational Institute, because Education Institute में भी क्या हो रहा है कि सिखाए तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जब स्कूल का अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो वही सेफ नहीं है. तो बच्चे क्या सीखेंगे, जो उनको दिख रहा है वही सीखेंगे. करेक्ट. तो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सेफ स्कूल जोन. तो जब स्कूल छूटता है, आपको मालूम होगा जब आप बच्चों को लेने जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, और जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं बच्चों के साथ में तो क्या हम करते हैं, हाथ दिखा के रोड क्रॉस कर लेते हैं. करेक्ट. तो भले उनको स्कूल में सिखाया जा रहा है कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना है या सिग्नल यूज़ करना है, लेकिन जो माँ बाप और टीचर से वो सीख रहे हैं वो हाथ दिखा के क्रॉस करना सीख रहे हैं. तो अल्टीमेटली सेफ स्कूल जोन कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर स्कूल के बाहर वो सेफ स्कूल जोन बनाया जाता है. एंड देन everyone who is using or exiting the school or coming to school obeys those rules, then वो क्या होता है, डेली आपके रूटीन में आ जाता है, and then it goes into behavior of it. So this kind of initiatives we are doing it with colleges. So this was one of the first safety hackathon which was done with Alva Institute, जहाँ पर almost 700 students ने participate किया था. Out of 700 we have shortlisted 10 initiatives which we are now mentoring, and then we will be showcasing into industry so that it can be there will be a buy-in by the industry of those solutions.
PIL, I don't know how many of you are aware about it. There was a certain incident in which safety officer was arrested, correct? So, lot of organization, they did awareness programs, counseling kind of thing. But what we thought is that unless and until you bring an impact on the policy framework, you cannot bring a change. So what we did was we filed a PIL in the High Court of Mumbai, जहाँ पर हमने अपील किया था कि आप किसी का अरेस्ट डायरेक्टली मत करो. देयर शुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन ओनली अरेस्ट शुड बी डन. So the PIL was ultimately rejected by High Court of Mumbai, but what has happened is that now the arrest of safety professionals has been stopped. अभी भी FIR हो रहा है, but then we will be going for a next PIL in which we will emphasize on special laws should prevail the general laws. तो फैक्ट्रीज एक्ट और BOCW एक्ट और माइंस एक्ट वगैरह जो है वो स्पेशल लॉज है, तो दे शुड बी फर्स्ट कम इनटू द पिक्चर एंड देन ओनली IPC कोड्स कैन कम इनटू द पिक्चर. So that will help us in ease of the business also. Road safety, as Sanjay ji said, we are doing extensively. Shell India is helping us into it. We are focusing on ISO 39001. How many of you know about ISO 39001? Anyone from you? ISO 45,000 मालूम है आपको, correct? ISO 14,000 मालूम है, correct? Anyone who knows about 39,001? So that is a ISO which is on road traffic safety management, correct? तो जो road accidents हम रोकना चाहते हैं, वो अगर आपका holistic approach नहीं होगा, PDCA cycle complete नहीं होगा, तब तक आपको results नहीं मिलेगा. And that is why India is also facing such kind of issue with road accidents. Housing societies में we are piloting with JLL because housing society में बहुत सारा time हमारे family गुजारते हैं. अगर वो safe नहीं है, तो जो वहाँ पर लोग सीखते हैं वो एक अनसेफ चीज़ ही सीखते हैं. तो दैट इज़ वाई वी हैव फॉर्म्ड ए 5S मॉड्यूल विच इज़ ऑन सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, सोशेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, करेक्ट? तो ये 5S के मॉड्यूल के ऊपर हम JLL के साथ पायलट कर रहे हैं. वो एक बार सक्सेस हो गया, देन वी विल इम्प्लीमेंट इट अक्रॉस इंडिया ऑन इट. So I will skip this. So this was the last best practice event that we did with, wherein we took the participants to Petronas and Tata Autocom. Mostly क्या होता है, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में तो मालूम रहता है, लेकिन जब आप वहाँ विजिट करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, उसका क्या इम्पैक्ट मिल रहा है कंपनी को, करेक्ट? एंड उसके साथ में एक वर्कशॉप होता है जहाँ पर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवाते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं. तो ये सब करने से क्या होता है, आपको एक्चुअल सिनेरियो पता चलता है कि आप वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर कर पाएंगे तो आप मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस करेंगे. तो वो सारा वर्कशॉप के साथ में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं. So this is kind of program that we have done in Gujarat also. So mainly industry, academia and government interlinking kind of projects. मिडल ईस्ट में भी हमने चैप्टर खोला, तो वहाँ पर भी हमने वी हैव मेट द गवर्नमेंट इन मिडल ईस्ट एंड वी हैव अपील देम ऑल्सो दैट द अरेस्ट विच इज़ गोइंग ऑन इन मिडल ईस्ट कंट्री, वहाँ पर तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है. कुछ भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सेफ्टी मैनेजर दे विल बी बिहाइंड द बार, करेक्ट? सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन दोज कंट्रीज ऑल्सो एंड मे बी बाय नेक्स्ट ईयर वहाँ पर भी सारे चेंजेस आ जाएंगे. सो ऑल द companies which are associated with OSHI are listed here. Top 50 companies are here. We want all of you to be part of it and be collaborative with OSHI Foundation on all its initiative. कुछ video clips हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. Hello everyone, I'm Lisa, China EHS Manager of Jordan. I'm great honored to receive the award. First, I want to express my thanks to Ocean Foundation to give the opportunity to show Jordan culture and the global sustainability ambition. I really enjoyed the process of the evaluation and gained from our interaction of various jury members.
The Gold Stand Award is a motivation for our improvement on EHS. Thanks. Hi, I'm Sandeep Sethi. I'm the Managing Director of JLL. On behalf of JLL, I want to thank the Oshai Foundation for the good work that you've been doing in promoting occupational health and safety and in making workplaces safer. We look forward to continuing to support you and partner with you in your initiatives in this regard. Thank you. Hello, India, from sunny Malaysia. My name is James Thorne, CSP. I'm the Area Director for Microsoft for Asia Pacific. I want to say I'm sorry that I can't be there in person, but I am delighted to be nominated and then awarded the Lifetime Achievement Award by the OHSSAI organization. It's been a long journey. I know that many of you are on it, been many places, many faces. But I do want everyone to know that India is dear to me and deep in my heart. I remember my years working there with fondness and with a lot of love. India is a special place, and it's an emerging business opportunity. It's also emerging so much when it comes to safety. I saw rapid and massive changes during my time in India, and I know that India can progress to where they will be world leaders, world class in every way, not just output, not just productivity, but also in safety. I applaud all of you. I wish I was there with you to celebrate. Jai Hind. Good evening. We at Toyota Gosai South India have embarked on a journey of safety, focusing on safe mind, safe environment. So everyone can go to OSHI website. They can register their projects, their sites, or their organizations based on the safe man hours achieved by them. It is already available in the website, and we want everyone to register on it and give recognition to your organization or your projects or your plans based on the million safe man hours worked by you. Since 2023, OSAI Middle East has collaborated with OSAI India to strengthen health, safety, environment and sustainability practices across the Gulf Cooperative Council countries. Our vision is to integrate all GCC nations into a unified platform that enhances HSES culture through comprehensive training, policy development, and resource share. This partnership aligns with OSAI India's global vision to promote sustainable practices, improve workplace safety, and engage local communities in sustainability initiatives, ultimately fostering a healthier and more environmental responsible future for the region. On behalf of OSAI ME, I wish all the very best
to the new initiative called Osai Global Millionaire Club. Jai Hind. Hello everyone, I am Gitali Thakur from Singapore. I'm part of OSI Foundation and I would like to congratulate each one of you who is connecting to the OSI Foundation Millionaire Club. It's an excellent initiative, very creative as well in terms of how we want to be promoting millionaire, not just in terms of wealth of safety. Thank you very much and looking forward for more Millionaire Club members to the OSI Global Millionaire Club. Thank you very much. Yes, so they too are the representative of OSHI. He is from Nile General Group. He is heading HSC function over there. She is Geetali Thakur. She is heading the HICL group globally. So they have taken the responsibility of taking OSHI in their own countries. Hello everyone. I will skip other parts. So thank you very much. Thank you so much, sir. Right after this presentation, moving ahead, gentlemen, बढ़ते हैं आप सभी लोगों को आगे लिए चलते हैं. And now we are all set to welcome our next speaker, श्री ऋतुराज देशमुख सर, जो कि CG Talks को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, CG Talks is a platform with a motive to integrate the diversified sector of industry professionals in safety, HR and ESG and hygiene. So let's welcome. मैं चाहूँगी आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें श्री ऋतुराज देशमुख सर का. Very warm welcome to you, sir. Esteemed guests and distinguished speakers. Myself, Rituraj Deshmukh. I am founder and CEO of Hexagon. I would like to give a brief about CG Talks. So we have recently started this CG Talks initiative. It's an integrated platform, quite a new initiative in Chhattisgarh to integrate HR professionals, safety professionals, ESG professionals, and industrial hygiene professionals. And we are likely to develop some new formulas, some new events to integrate industry professionals which are not being highlighted, not being introduced to such events. So we are likely to be concluding such events in near future. And with that, I will conclude my brief. Thank you very much for coming. Jai Hind, Jai Chhattisgarh, Jai Johar. Thank you. Thank you so much, sir. So this was a very brief representation about CG Talks. Moving ahead, gentlemen, बढ़ते हैं आगे और साथ ही आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज के इस विशेष अवसर पर हमारे बीच एक ऐसे लोक गायक उपस्थित हैं जो न केवल अपनी शायरी और अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत के अनमोल धरोहर को अपनी आवाज़ के माध्यम से और भी जीवंत बनाते हैं. मीर अली मीर जी का हम स्वागत करते हैं. हमारे छत्तीसगढ़ की विरासत और संस्कृति को नया आयाम देने वाले कलाकारों में से एक इनका नाम है. आज हम उनका स्वागत तो कर ही रहे हैं और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर, एक छोटी सी परफॉर्मेंस अगर आपकी तरफ से हो जाए तो आज का हमारा ये कॉन्क्लेव 2024 और भी सक्सेसफुल और भी वंडरफुल लगेगा. एक बार जोरदार तालियों की आवाज़ आप सभी लोगों की तरफ से. इट इज़ अवर ऑनर टू हैव यू हियर टुडे. सीजी टॉक्स का एक प्रयास ये है कि मिट्टी से जो है खुशबू आना चाहिए और उसी बात को तरजीह देते हुए आज मीर अली मीर, बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म जो है आपने गाना मीर अली मीर साहब का सुना होगा, आज प्रत्यक्ष तौर पर जो है आप देखेंगे. एक बार पुनः गुजारिश करूंगा कि जब मैं उद्घोष करूं सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया तो आप लोग जो है अवश्य साथ दीजिएगा. सब मीर अली मीर साहब. बहुत धन्यवाद. जय जोहार. छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल, माता कौशल्या के मैके और माता सीता ला लांछन लगते तो लक्ष्मण जी छत्तीसगढ़ के रमई पाट के जंगल में छोड़ के चल देते हैं. तब गंगा मैया
गुप्त रूप से छत्तीसगढ़ आए, ये वो छत्तीसगढ़ है जी हाँ गंगा मैया ला गुप्त रूप से आयल पड़े कि पावन जल माटी चुप रे बल इहें खलबल खलबल आथे ना और रमई पाट माँ जाके देखो गंगा उहों माथे ना। और सेफ्टी के दायरा जब हम लोगों के आसपास सिमटता हो और जो प्रिय लोग जिन्हें हम चाहते हो हमारे बीच नहीं रहते तो कितनी पीड़ा होती है। परिवार के साथ साथ पूरा देश के मुखिया भी, उनका मन भी उद्वेलित हो जाता है। तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से सेफ्टी के प्रति भी कि छल कतरी ही से सागर चरनी गुन ले आगर तिरिया के रेंग रद्दा छरिया व करिया बादर तोर बिन सुन माने किसी के नहीं रहने से सूनापन जो आ जाता है, उनका प्यार, उनकी चाह चीज़ें हैं समाज में, संस्कृति में, परिवार में, देश दुनिया में, वो सब बिछुड़ जाते हैं तो कितना दर्द होता है। वही है तोर बिन सुनना लगा थे, माने आप नहीं है, सब सुना सुना लग रहा है। तो ये है सेफ्टी के प्रति अभी हम समर्थन दें। तो ये रचना उन्हीं के आधार पर आप सुने कि छल कतरी ही से सागर चरनी गुन ले आगर चिड़िया के रे गए रद्दा छरिया व करिया बादर तोर बिन सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है। और सुरता गोहरावत है मन उन्ना भागत है। मई के महतारी ममता सुनना लागत है, भुइया सुनना लागत है। चीरई चुरगुन रूख राई घाट घटौंदा बरपुरवाई चीरई चुरगुन रूख राई घटौंदा बरपुरवाई पीपर डोले पाना बोले आघावत करे बड़ाई टोर बिन सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है। अब भुइया महतारी ममता ममता महतारी मई के सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है। तुलसी चौरा अंगन दुआरी घर पछोत माँ फुलवारी तुलसी चौरा अंगन दुआरी घर पछोत माँ फुलवारी आँखी रोए आंसू बोए ओ नारे यारी पारी तोर बिन सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है। मई के महतारी भुइया सुनना लागत है। छल कतरी से सागर चरनी गुन ले आगर चिड़िया के रेंग रद्दा छरिया व करिया बादर तोर बिन सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सो दिस वाज डेफिनेटली, लेडीज एंड जेंटलमैन, लिसनिंग दिस वाज ब्लिस टू द ईयर्स। एक बार जोरदार तालियों की आवाज। एक्चुअली कोई चीज़ नंदा जाता है, जैसे आज कारखानों में सेफ्टी नंद आ गए हैं, तो वही ला याद कराए के लिए जिन्हें मीर अली मीर साहब के सुप्रसिद्ध गाना अवश्य से जिन्हें मैं गुजारिश करा तो मीर अली मीर नजा जाहिर है नंदा जाहिर है। हाँ, एक फिल्म आई है छत्तीसगढ़ में, पहली फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला, भूलन द मेज। उसमें ये रचना विलुप्त होती हुई चीज़ों को लेकर के इसमें चिंतन का गीत है, नंदा जही का। नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का
कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और ता छो। हजारों साल पहले हमारे किसान मेहनत कश लोग कोड वर्ड बनाए थे। अरा मने राइट साइड का, और तता मने लेफ्ट का, और सेंटर में छो। ये कोड वर्ड था हमारे पूर्वजों का। ए नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और ता छू के होत भी हिनिया पखरा के आगी टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है पागी नोई झूले जैसे घर आधार कसेली दौड़ते ग्वाला पीला बाखा दबाए बंसी के धुन माँ धेनु चरैया नंदाज। एक आते हैं जय जोहार, तो नंदा जही का एक बार एक साथ बोलेंगे। नंदा जही का बोलिए तो करूंगा। के रच रच मच मच गेड़ी मचैया गाँव गली माँ पड़की नचैया मांदर के छाप माँ रहस रचाए पंछी के झुल्ला गाए गाँव के लीला चाऊ ला मेला मड़ई माँ ढलवा झूलैया नंदा जही का। आप बोले यहाँ पे नंदा जही का के जिमी कांदा कन छैया उसनागे लड़का बरी के बनैया नंदा के दार के पीठिया दौरी बरीला चेच भाजी संग धर मही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कढ़ी के रंधैया नंदा जही का। ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और ता छू के टेढ़ा भारी के टेढ़ा घेच मघाटी घुंघरू गोलर दौड़े खावैया खावे हर हमर हला कोनो नहीं भा कामेड़ वार के गांधी मुंदी माँ गाए दरिया दौरी खेर दैया नंद जही का। ए नंदा जही का नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और ता छो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तातू की आवाज़ आप सभी लोगों की तरफ से। ये बहुत ही प्यारी सी प्रस्तुति जो थी वो मीर साहब की तरफ से थी। और आगे बढ़ते हुए चलिए अब बारी है हम कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। और आज का हेलो चेक या सो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन अब बारी है इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने की। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पीएसएम अवेयरनेस इन इंडस्ट्रीज, जिसे लेकर हमें ऑन स्टेज ज्वाइन कर रहे हैं एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल DGFA लेट्स वेलकम श्री एच विश्वनाथन सर फ्रॉम मुंबई। मैं चाहूंगी आज के हमारे पहले गेस्ट स्पीकर हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका स्वागत करें। Okay, good morning to all. So it gives me great pleasure to be amongst you all, to be on this day, on this very beautiful program organized by CG Talks and OSHA India. And it's a very good thing to see so many people who are really committed to safety and health and also the environment, because we are living in an age where environmental is going to become the next big thing that we should take care. I always say that environment, is something that we have inherited and that we need to give to the next generation. Because we are here just as in a train, I just say we are like a passenger in the train. So I boarded the train, and when my station comes that I have to get down,
I get on and I'll get another passenger who's going to take my berth. The place where I sat for the 24 hours of the train journey. So this environment we should see how we are going to protect it to a very great extent. Because we know how much of the climate change, how much of the global warming and other things are doing. But today my talk is on something which is very, very dear to me, and that is called as process safety management. And in our country, PSM is one which has got very little or no awareness, I can use the word if I go to that extent, because we always think that when we talk about safety, we always think about personal injury. Rarely we talk about process injuries. Or process can have, the processes could be due to very high temperatures or high pressures, or, I usually use the word, 3 words, that is called as fire, explosion and toxic release, FET, otherwise it is very commonly known. And these are all related with the process safety. Okay, so if you all, I think, we are very close to that, and all of us know about the incident of, all of us know very much why, one very unfortunate reason why we are all, India is very famous for, and all safety professionals will take it. And I always say I'm very distressed that when I start talking, I think I cannot start talking without mentioning about that particular city, which is very near to us. I think everybody understood? Yeah, that is the Bhopal gas tragedy. And the Bhopal gas tragedy and a similar incident which happened in Europe, where there was no death to people, but there was a dioxin, a pesticide, which did not have any impact on the people, but nearly 3,300 cattle died when they were eating the grass from the chemicals which were deposited on that, and which resulted in soil degradation. And many of the children after that started getting lot of, in their body, lot of action of the dioxin chemical. And that is actually called as Cervaso. And if you know, after the Cervaso disaster and certain such incidents, the process safety management came into force. Till that time we are always thinking about, when we think of an accident, we always used to think about what? किसी का हाथ में चोट लगा, किसी के पाँव में कट हुआ, किसी के हाथ. We never cared about the impact of chemicals can have on the people. And that eye-opener was. But sorry to say, even after 50 years, still we think process safety management is not required. I'm very sorry, because I was in the government of India. Okay, not taking much time, because I know I have, and I'm just to, after this my friend already reminded me that boss, at 1 o'clock you should somehow leave here, because you have got a flight which I have to, I have to do the boarding and everything by 1:45. Okay, and all of you all know about Indigo. Indigo is such a flight owner who just waits to see when somebody can make a mistake so that they can deboard them. And I am a victim of it. Only 2 minutes late, sorry sir, boarding closed, we can't do anything. Why? Because you will lose 5,000 rupees. Okay, anyway, so this is what is my experience. Anyway, so I had been with the government of India for 27 years. I took voluntary retirement with the only objective of taking rest, but I could not take rest. And one of my great friends says, after retirement, you are roaming around more than when you were in government. And I have done a lot of programs both in India and abroad also. So I started going on international assignments, especially in the area of process safety. I'm a HAZOB, certified HAZOB trainer for both chairman as well as member. Because in our country, HAZOB and QRA and HERA is all taken a back seat. And yesterday also we were discussing, it's all only on the paper. We don't believe only it should be in the paper. I always say safety is not in the paper. Safety should be in the mind and heart. दिल और दिमाग, बिकॉज दिल से कोई काम करेगा और दिमाग को यूज करेगा तभी कोई चीज सक्सेसफुल रहेगा. हम कानून बनाने वाले थे, लेकिन कानून को खाली बनाने से कानून अमल नहीं होगा. एंड द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट ESG is what is about the governance. We always are talking about
I'm not a political man where I say that I want less laws and more governance. These all are, according to me, not the thing. Okay, so I have been doing a lot of things on the process safety, and that's why. And why it has come is because of certain instances which made us required to do it. And the worst industrial disasters which we talked about, 3, Flexbro disaster, the Servoso disaster, and the Bhopal gas tragedy, which made us important to understand what is called as a major accident hazard. See, major accident hazard means not an accident which happens inside, but it is because of handling of chemicals where people even outside the factory can get impacted and can meet with an accident or an adverse impact on the environment. And that's why it has got a very, very important thing that PSM does not rely only on what is in the industry, it relies what can happen outside or outside the boundary. So I think everybody may be knowing about this disaster where you can see that 28 people died and 36 were injured, and only because of very small thing, somebody thought one knockout drum was having problem, there are 10 knockout drums, we remove one knockout drum and nothing is going to happen, and they put a small pipeline to connect these two, but the pipeline was inadequately not fit for that one, and when this cyclohexane released due to the rupture in that pipeline, so many number of people died. And this is because we did not know the value of impact of pressure. We are always thinking about kuch nahi hoga. Okay. This is what I talked about, the Servoso disaster. You can see 3,300 domestic animals died and the soil got degraded. Now in our country, just imagine if a diesel tanker overturns and say 10,000 liters of diesel gets impregnated into the soil. Does anyone know how much that the soil gets degraded and how much of soil has to be removed out? The soil where the diesel has spread to a depth of 5 meters has to be excavated, treated as a hazardous waste. And so hazardous waste management rules say that you have to dump. Now if you have to remove 10,000 tons of soil degradation to a depth of 5 meters, and then you have to transfer that to a hazardous waste, dump it there, and you have to refill that one. That is called soil remediation. That much amount of environmental damage can happen. And this is why the process safety becomes very, very important for us. Not to talk about it, because I always feel that Bhopal gas tragedy is always in our mind because of the impact. Even today, we are. And slightly I can tell you, we do not know what is the situation inside Bhopal, inside the Union Carbide factory. Because nobody knows. It has been shut from 84 to date. So that means 40 years. When can something happen? When can a volcano erupt? Nobody knows. And we can't take risk, but we have to live with it. Okay, so that's how it has come. And that's why PSM, I say, becomes a very, very important. And those who are handling hazardous chemicals, or those who are then coming in contact with hazardous chemicals, need to understand what is PSM. And this is the foundation for PSM because it's a proactive and systematic approach. It's a systematic. So when there's a system, there are policies, procedures in place. It's a very systematic approach. There are 14 elements in it. Each of the elements has significance. And in our country, if you ask some of people, are you following process safety management? He says, yes, I'm doing. What are you doing? Sir, we have carried out HAZOP. By just carrying out HAZOP, do you think you are a PSM you are complying with? Because I said there are 14 elements, and HAZOP is one part of a process hazard analysis. That is 1 by 14. 1 by 14th you have done, and you think you are a PSM compliance company. So PSM, and if you think HAZOP you are doing and you are doing PSM, and sorry, you are only 7%. The remaining is not yet touched also. So PSM is framework for identifying and managing process risk. Nowadays, everything is associated with risk. And the biggest, when you talk about risk, I take there are 4 types which we think about. That is the risk to the people, risk to the equipment or to our asset, risk to the environment, which is very, very important, which we are neglecting. And the last is called as business reputation or business risk.
whole Union Carbide worldwide, because of this Bhopal incident, has been wiped out. Nobody can remember or nobody can even think about it. So if we do not know to manage our business risk, we will be thrown out. So it covers, and sadly in our country, as I said, we always have people like me and others who think that law में नहीं है तो क्या है? Is there anything about PSM in Indian law? It is there in the Factories Act, in the MHIC rules, in scattered ways. In what I use the word bits and pieces. Thoda ikra, thoda ukra, thoda ikra. Because we are Marathi people, na? Thoda to tukra or is very a word which is loosely talked. So if you ask people what is there, we may have somewhere about training, we may have somewhere about process safety information, we may have somewhere about supervision or employee participation, and somewhere we have got on emergency response plan. That much is there on as we think about PSM, and then we say that otherwise when you ask them, Factories Act में कहाँ लिखा है कि हमें PSM compliant होना चाहिए? That is our way of thinking. Okay. So what it is? It works on 4 themes. Basic foundation of PSM is commitment. So we are talking today also, why I'm very happy when I heard OSHA saying that we want the top leaders, because they are the commitment from the top, because we always believe top-down, bottoms-up approach. Because many of us only remember about the bottoms-up, which we do after the office work. Sorry, let's not be in that mode. We must think about the top-down, bottoms-up approach. So both of us together have that commitment. Then hazard assessment. The first step in HERA, or first step in risk assessment is hazard identification. We need to identify the hazards, and once we have identified it correctly, then only we can carry out the risk assessment. When our identification is not on target, then everything else goes. My friend talked about continual improvement. I really think because we have to improve, and we have to improve continually. Because if we have achieved 85% and think we have achieved 85% is sufficient, I'm mistaken. You have to think how from 85 I can reach 95, from 95 I can reach 98, and from 98 I can reach 99. Because I believe nobody will be 100% perfect. Now the imperfection of sometimes is also we have to try to see how we can do. So we need to have the process of continual improvement on process safety. So it talks about 3 things: process design, process technology, process changes. So you can see PSM goes into operation, maintenance, emergency response. That means all facets of an activity of an industry which is handling hazardous chemicals will need to be covered by this process safety. So PSM is applied, this standard is a regulation in OSHA, in USA. In India it's not a regulation, but in USA it's a regulation. It applies to 179 chemicals in India, which is covered under the MHIC rules in the 3rd schedule of the MHIC rules, and these will apply. It also applies to flammable liquids and oil and gas, in which they are flammable, and the quantities they have given as 4,539.5 kgs. Okay, this is the requirement as per OSHA. Okay, so you can see these are the people, technology, and facilities. So if you can see that it's a synergy of all the 3 when any organization works. That is the process, the technology, and the people. So this is the PSM 14. So we talk about process safety information, process hazard analysis, operating procedures, or what we call standard operating procedure, management of change, pre-startup safety review. PSSR is very, very important. And it's somehow in our country one of the most neglected. And I think everybody may know about the LG polymer case which happened in Vizag. It is a failure of the pre-startup safety review when they started just after the COVID lockdown, and it resulted in such a big issue. Then we talk about the mechanical integrity, compliance audits, employees' participation. Employees' participation in process safety is very, very important. So we need to get them involved in our process safety. Training is very important. Incident investigation, because we have to do root cause analysis. We should not think about accident investigation, but we should think about incident investigation. Contractors, because
Nowadays, 80% of the workforce is through contractors, emergency planning, permits and trade work, secret. Okay. So this is, I always talk about management, leadership and commitment is the fulcrum. So it is the fulcrum of any system, is the management system, and we need to achieve operational excellence through operational discipline. So if you see this wheel, through this whole wheel you can see the whole process safety management gets captured. Okay, so after that after the PSM came, then we came up with what is called a Center for Chemical Process Safety, the CCPS, in which they have come up with the theme of 4. Again, we have to commit to safety, understand the hazard and risk, manage the risk, and learn from experiences. So the very much important thing is learning from experience. We don't need to get again one type of incident. We should learn from whatever mistakes or whatever experiences of others and see that we can implement it, that the same mistake does not happen again. And so this is what it concentrates on. What can go wrong? It goes wrong, how it could impact us or how bad it, and how often it could occur. So if you think about the frequency and severity, as we all know that risk is a product of severity into frequency. So if we can able to control both these two, then we can have our plants in a very safe way. So this is the pillars of 20 pillars of CCPS, which I say is an extension of the 14 elements. I always concentrate and tell that first we have to at least complete 14 elements and then we can think about 20. And if you see the 20 elements is a breakup of the 14 where they broke up the same into different other parts. So we will just grow through this, and so we can see that how they put it in this framework. So what are the 14 elements? We will just touch very briefly because of shortage of time. The first and most important is called as process safety information. So we need to have a good knowledge about the process safety so we can understand about the toxicity. So you have the material safety data sheet which will give you the toxicity, the permissible limits of exposure. Everybody knows in the Factories Act in the second schedule we have given the permissible limits of exposure for TEL for 123 or 124 chemicals. That quantity is there. The data, the reactivity, so what type of reactivity, corrosivity data and thermal and chemical stability. So these are the process safety information, material safety data sheet. If you see the MSDS now, as per the global harmonized system, GHS, has got 16 elements. India were for a long time following this 10 only, but recently in 2023, IS standard has come up on chemical safety on MSDS, which has adopted the global harmonized system of 16 elements. So these are the 6. And out of these, you go and ask many of the organizations, everybody heard the word MSDS? Yes. Who have not heard MSDS, please raise your hands. So everybody heard MSDS. But when you ask them deep down into MSDS, what they understand on MSDS, what is the thing that I always get? Sir, it should be displayed. It's a place where I've seen in many of the big organizations also, MSDS is kept near the thing in a file, which will be a Xerox copies and kept there. And after that, you will find that this MSDS is not understood by people. Now, in MSDS to be displayed, as per GHS, you don't have to display all the 16 elements. The most critical thing you have to do is this. So you should have a pictogram. You have to know the identity of the chemical and the supplier information. Half the time we get the MSDS taken from the Google. MSDS actually should be seen that it is revised or renewed once in 3 years. But what we do, we get a Google print and just place it there, and we think that we have complied with it. No. So you need to have also the pictogram, which gives you whether it's a health hazard, whether it's a fire hazard, whether it's a toxic hazard, whether it's called as an exclamation, whether it's a danger sign. There are 9 pictograms. Signal word. What is called as a signal word? All of us are used for signals. Line मारने के लिए signal तो चाहिए ही चाहिए. अरे क्या, I don't need to tell you कि आप ऐसा जाएंगे. नहीं करना है, चलना है यार. That means if I just put a signal, that way, so in the GHS they talk about 2 words only. What is called as a danger and what is a harm. Whether this is harmful or whether it's danger. If it is a harmful, what are the precautions?
If it's a danger, what additional precautions I should take when handling that chemical? So when you see a danger as a signal word, that means you cannot handle this chemical taking additional engineering or administrative controls. It's like the three words that we look. So we see a signal, red, yellow, green. Green means safe. Yellow is like a signal word of yellow is dekh ke jao bhai. Because in India what happens? All over the world when you see a yellow, people will stop. In India what do you do if you get to see yellow? अरे भागेगा 3 सेकंड बाकी है तो 3 सेकंड में मैं भाग सकता हूँ. So we are not following the principle of, okay. So these are the two signal words, danger or warning, and we must understand that hazard statement and what is called as precautionary statement. And GHS is a very good, which many organizations still are not added, what is called as hazard communication system. Okay, coming to PHA, there are many, and the most important I have written here in red is called as the hazard and operability. For chemical process industries, HAZOP is a very good important technique because it is done by brainstorming with the team personnel, but the people at the plant. The chairman is only a person from external, but the other all should be, because they know the hazards in and out of their particular process. So HAZOP is always to be done with the help of certain guide words, certain PNID. There are prerequisites. Those prerequisites need to be done, then only you can carry out a successful HAZOP. And most of the time what we have seen in the HAZOPs are, people do not get the involvement of the plant personnel. A chairman, if he dictates terms, the recommendations will go for a haywire. Okay, so this is about the HAZOP. There are many techniques, and the one which I liked most was, nowadays we are going into what is called as LOPA, layer of protection analysis. So 7 layers of protection, because ahead of HAZOP, when you find out your recommendations of the HAZOP cannot come to a very conclusively to what to do, then you can go to the next step. You can go into LOPA, and by doing LOPA, you can integrate whatever is your outcome of your HAZOPs can go into your LOPA work exercise. So this is the definition of HAZOP. So mainly it identifies hazard and operability problems and how the plant may deviate from the design intent. That is what we have to see. Okay, I'm not going to go through all this, but very important is that there are certain guide words. The guide words will help you. So guide word plus a parameter will give you the deviation. So how it can deviate from the design intent. And so there are 7 guide words, no more, less, as well as, part of, reverse, other than. These 7 guide words, if you are able to apply to a process, in almost all cases, you can come to the deviation, will come to the causes properly. So these are the 7 guide words, and as I said, we will go to just a brief of LOPA, because in LOPA you can see that you got the mitigation strategies as well as the prevention. The bottom half talks about the prevention, which is connected with the frequency. The top half is about the mitigation or control, and that is related to the consequences. So these 7 starts right from process control to basic process control to alarms, safety instrumented, process physical protection like your relief devices, then your dikes, plant emergency, and community response emergencies. So this LOPA is a very good thing, but LOPA is still, because HAZOP itself has not taken too deep in India, then doing a LOPA will become near impossible. Okay. The next is about standard operating. All of us know. Just 2 days back I was talking, where SOP in our country is how? Because we have to display the SOP. So what do we do when we do auditing? Most of the plant knows that I am coming to audit. Tomorrow I am going to audit a power plant. They know 1 month before I am coming. So 1 month before they are planning how they can comply with or whatever the things I am going to do. So there was one plant where there was an internal audit by OISD. So what did they do is they phoned up, because there are about 160 outlets. Achha, tomorrow is coming to, just I am giving you again indoor IRD. They said, okay. So that fellow phoned his counterpart in, say, Bangalore and told him, yeah, we are getting OISD internal audit. We have to display the SOPs and all. तुम्हारे पास SOP display किया क्या? Yes, अरे एक भेज दो ना यार मुझे, मैं इसको प्रिंट आउट डाल के लगा देंगे वहाँ पे. अरे उसको क्या मालूम पड़े.
हो गया, he brought the one. Next day, in the previous day night, he took a printout, made a very good, like our banner, these the flex, all are there, displayed it over there and satisfied, very good. Acha display kiya. The auditor, what he said, you did very good display, but only thing is, you have displayed an ETP where you got a OWS. दैट मीन हमारा प्लान में क्या है क्या नहीं है, हमको ऑडिटर को डिस्प्ले करना है, इसके लिए मैंने डिस्प्ले किया. एसओपी में बहुत सारी जगह पे यही हालत है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ. बट व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिविएशन. सो व्हेन यू आस्क द पर्सन कि इसका डिविएट करेगा तो क्या होगा, इफ यू इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, देन द एसओपी इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज एसओपी विल वर्क ओनली व्हेन यू डू 1 2 3 and not 1 4 3 2. If you do 1 4 3 2 instead of 1 2 3 4, it could become a hell. And I always give this example, but shortage of time, I'm just going to skip that example. Otherwise, I tell them, just for time when you have to open a drain wall, the drain wall should be opened as the fourth step. On the second step, you open the drain wall. All of us know what can happen. So, it's very, very important that we understand SOP. The next is about what we can call as MOC. Because in most of the process plants, bypass authorization. Management of change process is very, very important. Whenever you have to have a management of change process, it should go through a 3-step process. And you should have an initiator, you should have a responsible person and authorized person who will initiate, who will go through that, and who will approve. And MOC is very, very important because sometimes many major accidents have happened because of failure of the management of change process. So this is how it goes. So we should see what is the technical basis, impact on health and safety, modifications to the procedures, time period. Now, during COVID time, lot of changes in MOC need to be taken because people started doing lot of things working from home, and sometimes safety cannot be driven from home. So that is why, whether it's a temporary or permanent, and so that is how we have to do. Okay. So this is about MOC. The next is about what I can call as mechanical integrity. Because we have got all our tanks, maybe pressurized tanks, maybe storage tanks, where mechanical integrity, the tank integrity is very much important because we are storing hazardous chemicals, and if we don't follow the procedures, including the safety relief system, you have to have a rupture disk. Many times we'll see that the process safety elements, instrumentation part is not taken care of, and they are not maintained properly, can result in the inspection and testing procedure should follow one, the Indian standards or the legal requirements or the company standards. And this should be for the entire cycle. You know, that's why we have got nowadays what is called as life cycle assessment or remnant life assessment. So a remnant life assessment for chemical, especially for chemical storages, need to be carried out to see what is the effective life of left and whether there is any internal corrosion or internal deviation which can result in a big mishap. Okay. So these are the, so mechanical integrity goes through everything, right from the piping system to the pressure vessels, to the controls, to the pumps, and also your shutdown systems. Okay. So when you do mechanical integrity, it's very, very important to know that it meets the company standards, that is the manufacturer standards, legal requirements, and if there is any deficiency beyond the acceptable limits, that should be corrected before we proceed with the thing. But many times we've seen that there is a deviation, that deviation is noted, deviation is not getting corrected. That is why, okay. Now it up, the tank was taken for repair, but one thing that they wondered how long this tank will work, and so they took a thing to get it repaired. When they started to repair it, they found spare parts were not available. And when spare parts were not available, what do we generally do? Bypass it. And that resulted in a major accident. When there were 3 tanks, and the 3rd tank was taken down, during shutdown they found that it cannot do, and spare parts were not there. Till the spare parts to come, they thought they can bypass it. They kept it blocked, but somehow vapor from the top entered into the tank and there was a major explosion. We call that as hidden hazards. Okay. As I said, pre-startup safety review, so we can have a pre-startup safety review, especially for process, and have a checklist
And the detailed checklist should be developed and checked before you start after any shutdown. So before you start after any shutdown, you have to have a pre-startup safety review. All of us know about permit. And now I'm very happy that after a long time, Indian standard has also come up on a permit to work. Till now, we were always thinking permit to work is the... So what is permit? Actually, it is a written authorization to carry out any activity in the most hazardous or unfavorable conditions. So the conditions are not favorable or it's hazardous, then you need a permit. So there are 7 types of permit. But now, as I said, so in India, I do not know how many of you all know, there's a word called as in Middle East, another used called as LMRA. Anybody had heard of LMRA? So yes. Those who have heard LMRA, please, because I want to you all active. If I don't ask questions, it's like I'm reading my own PPT. Reading, I'm telling you. Okay, how many of you knows LMRA? Please raise your hand, except my gentleman in the front. Very good, I got one friend of mine. Anybody else? Okay, it is called as last minute risk assessment. And LMRA is a very good thing when you are trying to implement a permit to work activity. Just before, and now, we always talk about how many directions we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many directions we have? Rick, come on. 8 directions. Acha? I only used to remember north, south, east, west. That is how news is made. News can 8. Okay, can you name the 8? No, it's a combination of northeast, northwest, north-south, not that way. Okay, so this 6 directional, when you do LMRA, do 6 directional. That is northeast, south, west. Look at the top and look at the down. Top and bottom. These 6, if you can do a LMRA, it will help us. And that's why we say that LMRA should be. Now, how many safety professionals signs the permit? Please raise your hands. I see one person, he signs everything. He does everything. He's universal. Anybody else? As per the latest permit standards, safety officer is not to sign the permit. The safety officer role is not to sign a permit. The role of the safety officer should be like that of an inspection. He should see whatever the compliance given, whatever the things mentioned in the permit are complied. Any deviation from the permit which is mentioned there, that activity he should have the power to stop. That is right to stop activity. We don't have right to stop activity. That's why our permits, after the failure of SOP, the next biggest culprit is the permit to work. Because we are signing permits left, right and center. And half the time safety officers get very much happy when they sign a permit. I said, why are you happy? You are giving like a, you are signing a document where you have no role. It's an agreement between the issuer and the acceptor. Your role is to only see that the condition is applied. Okay, permit form should be displayed, that's why at site. So permit, as I said, this code is there and everybody can go through the code of IS 17893. Very, very beautiful standard. Because it gives you clearly the direction of how the initiator, the acceptor and the executor should carry out. Okay. So emergency response. So all of us know about the on-site and off-site. There are 2 plans. One within the boundary is called on-site. Outside the boundary is off-site. On-site is the responsibility of the plant head. Let me say the plant head or location head. And off-site is the responsibility of the district collector or district magistrate as per the MHIC rules. So this is how mock drill. कभी-कभी मैं बोलता हूँ ये जो word mock है ना, मजाक. And all of you all who are doing mock drills are really doing a majak of themselves. I'm sorry, because our mock drills में क्या करेगा? Scenarios are well defined, planted, and everybody knows tomorrow is a mock drill. Everybody knows tomorrow at 11 o'clock siren बजने वाला ही है. तो मैं 10:45 के लिए मैं तैयार हूँ. कब siren बजेगा? I'm waiting on my chair.
सायरन बजेगा, मैं उठ के भागेगा, असेंबली पॉइंट, मुझे सब कुछ मालूम है. Sorry, we should, and also the scenarios, whenever I see the many audits when I do, I ask them, ki, have you, whatever you have sent in your OSEP document, on-site emergency plan document, have you done any time mock drill taking that into consideration? Or we have got our mock drills doing what is called as a snake bite? Correct me if I am wrong. Fire in the pump house, fire pump house mein pass mein fire hai. And one more location you will get where they will write normally a person fell down. But when I see the on-site emergency plan, a person falling in the 4th floor or 3rd floor is never captured. And then you will see a person readily taking a stretcher and going up, and that fellow knows clearly everything. So I said, this is somehow, I'm little against this, but that's how things happen. Okay. So this is, I'm not going to go to all this because everybody knows MHIC rule says that once in 6 months for on-site and once in 12 months for off-site. And many times off-site is really not being done by the district collector, where the role is of the district collector. Okay? Incident investigation. So we say that you go to find the root cause, try to eliminate the root cause, because there are 3 causes. One is the basic or root cause, which is the management policies or decisions, environmental factors and job-related factors. We always concentrate on what is called as unsafe act and unsafe condition. So mind you, unsafe act and unsafe condition are not the root cause. They are the intermediate cause. By correcting unsafe act and unsafe conditions, you are not coming to the root. You are just trying to handle this. And so we need to concentrate on what we can call as root cause analysis. So whenever you do any incident investigation, try to go to find the root cause. And the root cause I have written here, it can be 3 main parts: management, safety policies and decisions, or what we generally say is the management thing. Next is the personal factors. How much the person there, we have talked about behavior safety. Because the behavior of the person is said that if you are a BBS champion or a BBS person, that 96% of all incidents are due to behavior of the people. And here we have people who think that मुझे सब कुछ जानता है, मुझे कुछ नहीं जानता है. If you have that thing that I will follow whatever are the policies and procedures in toto, then my behavior will change. Anyway, this is the thing. And so this is what we have to try to do. Okay. Sorry. This is the contractor, because as I said, nowadays 80% of all our jobs are done through contractors. So contractors who are associated or near the processes, though if you see in the Factories Act and rules, contractors are not to be involved in the process. But here when we go and see in the factory, 80% I said workers, they are doing the process related activity by contractors. Kali when we ask them and say, that contractor काम process में नहीं काम कर रहा है, process के पास काम कर रहा है. Process के पास क्या करता है? झाड़ू मारता है बोलता है. These are all what I think. But actually what they are doing, one person told me, sir, वो कुछ नहीं करता है, वो chemical उसके अंदर, reactor के अंदर chemical डालता है. Reactor के अंदर chemical डाल रहा है तो वो process में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Sir, no, process अंदर होता है sir. Process अंदर होता है, तो वो process में काम नहीं कर रहा है. So very good logic, but that's not right. Okay, so they should not be, because they must be understood. They must know about the legal requirements. They must know, because if you tell them, then only they will understand what are their hazards and risks associated and what are the precautions to be taken. Okay? So there should be a written plan to implement PSM. Conduct PHA, get them involved in PHA. Get them, because they are the people who are at the site day in and day out. They know the hazards much better than many of us. So you have to get them involved. Involve them in the discussions on process safety. Training. So हमारे यहाँ training, I'm very happy when I see a lot of people smiling. But the end result is, half of our training is becoming a chai party training. I'm sorry. We give training, we try to impart to see effectiveness of the training, we do a lot of training programs, we do a lot of this. But what at the end of the day, are we able to modify, to enhance their performance by modifying their knowledge, skill and attitude? We have to change all the 3. If you're not able to do it, we'll not be able to achieve. 2 minutes more. Okay. So this is very much important.
So we need for process safety, emphasize on safety and health hazards, standard operating procedure, rules, regulations, emergency procedures, etc. Compliance audits. Why compliance audit is required? Compliance audit is required to see that what level we are actually doing. An audit is not to find mistakes. An audit is not to find blame people. Audit is to find what is the deviation from the standards or procedures and how to help. So an auditor should not become an inspector. I've got a lot of inspector friends with me. So inspector's role, I don't want to emphasize here, but I'll try to put an auditor's hat here. Auditor's hat, he should be a friend, philosopher and guide. He should not be year one trying to play the role of an inspector. Ki factory act ye kehta hai, kiya nahi. Don't try to become an. You have to tell them why it is required. Most important when you do audit, don't do audit like an inspector. Try to do an audit where you are going to help the organization to improve safety and health. Ensure your recommendation should be that more to see how the non-compliance could be made as a compliance and not going to what I use the word. When you do ISOs, they talk about non-conformance. Here I'm not talking about non-conformance or non-compliance. You need to help to improve. And the last is about trade secrets, because we are handling a highly processed chemicals sometimes which are dangerous. So we need to see that whatever other trade secrets of that particular process are not revealed to your competitor or not misused. And so this is what I thought. And so I just thought of giving you an awareness on this. Okay. Any questions? Yes. We have mic please for questions. Okay, so there will be a time for 2 minutes for questions or 3 minutes, depending upon the state where we are. Yes, sir. Okay, you are nearby. I wanted that all understand your question, because sometimes the question you ask is applicable to all. As you rightly said, that trade secrets cannot be revealed. As happened in Bhopal, you have told about the Bhopal gas tragedy. Methyl isocyanate that was propagating from the factory premises and taken into the grasp of the inhabitants of the nearby area also. So in that case, if the secrets are not known, even in the case of MIC, Union Carbide, the MSDS of MIC was not known to anybody in India, forgetting abroad. So unless we know the trade secret, how can we develop MSDS? Second point is that unless we know how far is the vapor travel with respect to the height of the vessel and the propagation limits, so up to that limit, if the habitation is stopped while taking into consideration, site appraisal committee should meet and take care of these exigencies so that the persons are not getting affected outside the factory premises. Okay, thank you. So it's a very good thing, but this is not, sir, this is not a trade secret which you are talking about. There is a requirement under the MHIC rules to call what is given to information to people who are liable to be affected by a major accident. Sir, this amendment has taken place only after Bhopal gas tragedy. Sir, that's prior I told to you in the Bhopal gas beginning. tragedy, nothing was known to us. Why process safety management came? Till that time we are only concentrating on people. Do you know in Bhopal gas tragedy, my friend his Dima is an inspector from the same state, and Avinash at that time was a part of this one. Do you know before Bhopal gas tragedy there was nothing called as MSDS? There was nothing called as information to the public. In fact, more accidents have happened outside that people came running to the factory instead of running away. So there is a requirement under the process safety that you have to inform. You gave me your question, yeah. Yes. Okay, you given your question, I'll answer you. And if you have any more, I'll give you my email address at the end. You put me, I'll view you in that. Okay, because your question is, your first question was, is it a trade secret? No, it's not a trade secret.
Display of MSDS was not developed there. MSDS, they did not know. That was their lack of public information, lack of emergency response. I talked about LOPA. If you see the Bhopal gas tree of LOPA, at 5 levels it failed. If you do a LOPA, at 5 levels, Bhopal gas tragedy failed at all 5 levels, right from the basic control. Their basic control was bypassed. The temperature started rising. They said the pressure gauge was defective. The pressure gauge was not defective, the temperature gauge was not defective, but we assume that temperature gauge is faulty temperature gauge, and we have a very good habit of procrastination. आज का प्रॉब्लम आज नहीं सॉल्व करेगा, उसको कल के लिए शिफ्ट करेगा. सेकंड शिफ्ट वाला देखेगा, सेकंड शिफ्ट वाले बोला और सेकंड शिफ्ट ने नहीं किया, थर्ड शिफ्ट वाला देखेगा, थर्ड शिफ्ट वाला फर्स्ट शिफ्ट को. ये ऐसा चलता रहा कि प्रॉब्लम को. Do you know that in Bhopal gas, one big reason was the refrigeration cycle was made inactive, and they transferred the Freon gas to another plant in Hyderabad. If you do the whole Bhopal gas strategy, you'll say because they thought Bhopal in December is low temperature से कुछ नहीं होगा, गैस वहाँ हैदराबाद में चाहिए. ये Freon gas का सिलेंडर जो भोपाल में emergency के लिए था, वहाँ बेटा no emergency response planning. Right. Okay. One more question before we end. Anybody else? Okay, so everybody knows, and anybody wants can always send me a email. My email details are given, and I'll be very happy. And thank you for giving me an opportunity. Thank you especially to Raju sir, who was instrumental in bringing me here. Thank you very much, Raju sir. Thank you, sir. And thank you to all participants. I would request you to please be on stage just for 2 more minutes. And now I would be requesting Sanjay sir, and also I would be requesting Avdesh sir to please join us on stage, and yes, to please present a token of love and token of appreciation to our guest speaker, H. Vishwanathan sir. Thank you so much, sir, for joining us here today for Conclave 2024. A round of applause, ladies and gentlemen. So here we go. Once again, the topic was PSM awareness in industries. Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for our speaker? Thank you so much for being here today. We are once again very, very grateful to you. So moving ahead, gentlemen, I would request you all to be seated, and for the refreshment, it's time for a very wonderful song. We are having Vindru Manakpuri sir and his whole team. तेरी खुशियों की खातिर में
थैंक यू सो मच। सो डेफिनेटली दिस वाज वेरी रिफ्रेशिंग और थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर बिट लेट फ्रॉम आवर स्केड्यूल। आने वाले हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं या पैनल्स होने वाले हैं हम एक समय सीमा में करेंगे। अभी बारी है एक पैनल डिस्कशन की जिसकी समय सीमा 20 मिनट है, समय अवधि 20 मिनट है और इस पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। Let's welcome Shri Ashwin Garg sir on stage, President Todla Association. Let's welcome Shri Vikram Jain sir from SBT. Also let's welcome Shri Neeraj Agrawal sir from Satyapriya. We welcome all three of you और साथ ही इस सेशन के मॉडरेटर होंगे श्री प्रदीप अग्रवाल सर, प्रेसिडेंट जुंदल। वी वेलकम यू सर, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। So let's welcome श्री प्रदीप टंडन सर ऑन स्टेज। आप सभी स्वागत करें इनका एंड चलिए मूविंग अहेड। ये सेशन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन factories of Chhattisgarh. So moving ahead, as we all know, Chhattisgarh with its rich mineral resources and expanding industrial base offers tremendous employment and opportunities in its factories and manufacturing units. The state's major industries include steel, cement, aluminium and power have seen substantial growth, creating jobs for both skilled and unskilled workers. With the government's focus on Make in India and investment in Special Economic Zone (SEZs), Chhattisgarh is emerging as a hub for industrial development. This growth is not only boosting the state's economy but also providing employment to thousands in various sectors like textiles, engineering and food processing. Up next, we are all set for our first panel discussion, New Prospect of Employment in Factories of... So let's go. Also, आप सभी लोगों का ध्यान हम ऑन स्टेज चाहेंगे as our moderators. We are having as our moderator Shri Pradeep Tandon sir, President Jindal. We welcome you sir, and on this panel we welcome Shri Ashwin Garg sir, President Todla. थोड़ी सी तालियों की आवाज़. Come on everyone. Shri Vikram Jain sir, SBT and from SBT, and Shri Neeraj Agrawal sir from Satyapriya. We welcome all of you. थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों से निवेदन है 20 मिनट में ये पैनल डिस्कशन हम खत्म। Thank you so much. We are here to debate a topic of very importance, like new prospects of employment in factories at Chhattisgarh. And we have with us eminent association members and presidents who actually regulate the entire MSME sector in Chhattisgarh, giving huge employment opportunities, creating it for them. So today's debate, today's discussion will be on various opportunities that are created. I will briefly tell you what exactly we want out of it was that how new opportunities can be created, how career advancements can be made, how layoffs can be stopped, and at the same time how business can grow, which is more friendly towards employment and less toward digitization. Where it is necessary, digitization should happen, but India being a big population, the focus has necessarily to be on employment opportunities. So I will start with Ashwin Garg ji to give his views on that, how to increase more employment prospects. सभी को नमस्कार। पहले तो मैं सीजी टॉक और ओसेसिस को बधाई देना चाहूँगा कि आज उन्होंने ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और खासकर इस पे जो फोकस रहा है वो सेफ्टी के ऊपर रहा है। अभी टंडन साहब ने जो कहा है कि भी रोजगार जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम रोजगार कैसे एमएसएमईज में उपलब्ध करा सकते हैं या रोजगार के बिना क्या हमारा देश या प्रदेश तरक्की कर सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोजगार जो है वो हर प्रदेश की तरक्की के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा प्रदेश जो है अलग राज्य बनने के बाद में काफ़ी औद्योगिक प्रगति कर चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े कोर सेक्टर में जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे स्टील, सीमेंट और पावर, और एमएसएमई सेक्टर ने भी यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ की है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टील के साथ साथ में डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी बहुत आई हैं, फैब्रिकेशन यूनिट्स आए हैं,
फिर अलग अलग सेक्टर्स में भी हमने काफ़ी प्रगति की है, और उस बिना एम्प्लॉयमेंट के कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। उद्योगों को चलाने के लिए हमको परिश्रम, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। आज से 20 साल पहले अगर हम जाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि उस टाइम में लेबर की समस्या इतनी ज़्यादा थी कि हम अपने छोटे से कारखाने को चलाने के लिए लेबर को हम पड़ोसी राज्यों से बुलवाते थे। जैसे मध्य प्रदेश में हम रहते रहे तो उड़ीसा से बुलाते थे, या बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक हमारे यहाँ के कार्य करते थे। बट समय के अनुसार जो है काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। रोजगार के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफ़ी ITIs खोले हैं यहाँ पे। पहले जो ITIs थे वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा संचालित किए जाते थे, अब ये PPP मोड में चल रहे हैं, जिसमें जैसे जिंदल भी चला रहे हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, उन्होंने उस मैनेजमेंट को लिया हुआ है। और वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि पहले ITIs में जो कोर्स होते थे वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के फ्रेंडली नहीं होते थे। हमारी रिक्वायरमेंट मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन की होती थी, तो जो ITIs से जो बच्चे निकलते थे वो उस कोर्स को प्रॉपरली नहीं करके आए रहते थे, वो बिल्कुल फ्रेशर्स के तरीके से रहते थे। तो बहुत बड़ी समस्या थी। इंडस्ट्री में चलाने के लिए मशीनें चलानी पड़ती हैं, बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो अभाव होने के कारण से हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बट अब जब ITIs जो अपग्रेड हुई हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और उस फैसिलिटीज़ के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए वो कोर्सेज को अब गवर्नमेंट के द्वारा उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये एक एडवांटेज हो रहा है। तो काफ़ी कुछ रोजगार जो हमारे को अनुपलब्ध था पहले के समय में, अब वो रोजगार हमको यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। समस्याएं अभी भी हैं, क्योंकि जो ITIs हैं वो वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो जनरली गांव के या दूर दराज के इलाके के होते हैं। वो शहरी एटमॉस्फेयर में जनरली अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सरकार से कई बार कहा है कि जो ITIs आप खोलते हैं उसको नियर बाय टू इंडस्ट्रियल स्टेट्स खोलें, जिससे कि वहाँ से बच्चा पढ़ के जो है डायरेक्ट फैक्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप के लिए जा सके, और वहाँ पे हम अपने अनुसार उनको ट्रेन कर सकें, और जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम उनको एब्जॉर्ब अपने यूनिट्स में कर लेंगे। थैंक यू सर। अश्विन जी, एक चीज़ जो मैं जानना चाहता था आपसे कि अभी जिस लेवल तक आप पहुंच गए हैं, जहां तक आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए हुए हैं, इसमें और बढ़ोतरी आप कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, या कैसे, क्या आगे क्या कर रहे हैं? मतलब आपकी जो सहयोगी इंडस्ट्रीज़ हैं एसोसिएशन में, उनका आउटलुक क्या है एम्प्लॉयमेंट को? मतलब किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फर्दर हो सकता है, या इसी को अपग्रेड कर रहे हैं आप, एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा क्रिएट होने की अभी चांसेस कम है विदाउट एक्सपेंशन? देखिए, अभी इसको अपग्रेड और करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो गवर्नमेंट और उद्योग एसोसिएशंस, मतलब इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जो आज नया ज़माने में जो CNC मशीन्स आ रही हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, उनको समझाने के लिए हमको अपने युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और वो ट्रेनिंग उनको वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो ज़माना है तेज़ी से चेंज हो रहा है, अब हर मशीन्स में नए नए तरीके से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी हमारी मदद करें, और हम ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाएं जो पूरी फुल्ली इक्विप्ड रहे, और वो ट्रेनिंग उनको जो युवा जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं उनको वो ट्रेनिंग वहाँ पे प्रॉपर हर मशीन्स की मिल सके, जिससे कि वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही इंडस्ट्रीज में जाके काम करने के लायक हो सकें। मीन्स ट्रेनिंग करके अप्रोप्रिएट पहले उनको हम बना लें, देन वी गो फॉर एम्प्लॉयमेंट। इट्स अ वेरी गुड आउटलुक। आई थिंक इट विल वर्क। गवर्नमेंट काफ़ी काम इसके अपग्रेडेशन पे कर रही है, मिनिस्ट्रीज़ भी इस पे वर्कआउट कर रही हैं। और इस बार रिसेंटली एक मीटिंग मैंने अटेंड की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि करिकुलम को भी वो रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बहुत पुराना करिकुलम हो गया था उसको चेंज नहीं कर रहे थे, तो ITI से जो प्रोडक्ट्स निकल रहे थे वो अपडेटेड नहीं थे। तो बहुत लार्ज स्केल पे इस पर वर्क हो रहा है, एंड आई होप आपने जो बात कही है वो पूरी होगी बहुत जल्दी, और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। थैंक यू सो मच। मिस्टर अग्रवाल, आपसे मैं पहले पूछूंगा
सवाल कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसमें जॉब एनहेंसमेंट को लेकर, एडवांसमेंट को लेकर, ले-ऑफ्स को लेकर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा कि नौकरी जाए ना लोगों की और लोगों की लगे वो बेटर रहे। सर हम लोग तो जो देख रहे हैं बेसिकली इंडस्ट्रियों में, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ स्टील इंडस्ट्री से, तो स्टील इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल स्टील इंडस्ट्री हैं वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत जगह है, बल्कि हमको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे ड्यू टू नॉन स्किल। बेसिकली एक्चुअली क्या है, स्किल्ड, हमको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं जिनकी मार्केट में बहुत क्राइसिस है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रोजगार मेला लगा रही है अभी, जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जगह जगह पे, हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट पे भी लगा था और सिटीज़ में भी लग रहा है, बट वहाँ जितने रहते हैं सब फ्रेशर होते हैं और टेक्निकल नो हाउ उन्हें भले बुक्स का होता है बट प्रैक्टिकली नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ जब काम पे भी आते हैं तो इन्हें ट्रेंड होने में 6-8 महीने लग जाते हैं, और ट्रेंड होने के बाद ये श्योरिटी नहीं होती कि हमारे यहाँ फिर आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो ज़रूरत है, जैसे अश्विन भैया ने बोला, आपने बोला, बेसिकली हमारा जो स्टडी सर्कल है वो ऐसा हो कि उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, ताकि वो यानी वर्किंग पैलेस में आने के बाद जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ट्रेंड होके प्रॉपर वर्क कर सकें। में हाउ विल यू गो अबाउट, क्योंकि आप बिजनेस तो आप रन कर रहे हैं, एक्सपेंड भी करेंगे, कैपेसिटी ऐड करेंगे, तो आपके खुद एसोसिएशंस का और मेंबर्स का इसमें क्या आउटलुक है, हाउ टू मीट दिस, ये जो एक गैप हो रहा है बिटवीन स्किल्ड वर्कफोर्स एंड अवेलेबल वर्कफोर्स, इसको कैसे कर रहे हैं? क्या बाहर से ला रहे हैं लोगों को या यहीं पर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं? मतलब आपका क्या प्लान है इसके बारे में? गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बट एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और प्राइवेट इंडस्ट्री में आपका क्या आउटलुक है, क्या करना चाहते हैं आप या क्या करेंगे? इसमें सर जैसे एक्चुअली क्या होता है, स्टील इंडस्ट्री में मिक्स लेबर होते हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं और यूपी बिहार के भी काम करते हैं। तो जैसे जो नए एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं उन्हें हम पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रेनिंग देके फिर एडजस्ट करके वर्किंग करवाते हैं सर। कितना टाइम लग जाता है इनको ऐसे मर्ज होने में और एनवायरनमेंट में आके प्रॉपर परफॉर्म करने में? आपके हिसाब से कितना टाइम लग जाता है ऐसे लोगों का? सर 10 days to 30 days. Okay, that's a pretty good Yeah. small time, but like I have heard in big companies it takes 6 months to 1 year for them to adjust and follow all the routines including compliances. वो करने के बाद प्रॉपरली वो परफॉर्म कर पाते हैं, तो उनको हमेशा किसी आदमी के संग गाइडेंस में रखना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है। वैसा वेस एमएसएमई में अगर इतनी जल्दी वो ट्रेन होके हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आप ट्रेन करके यू कैन एम्प्लॉय देम, बट येस सेफ्टी इज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ताकि एक्सीडेंट्स बिल्कुल ही ना हो। टॉलरेंस तो ज़ीरो है ना गवर्नमेंट की इसमें, ओके, बिकॉज विद इन दी फोर वॉल्स जो इंडस्ट्री कर रही है उसको मॉनिटर बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं जी, और इसकी वजह से जो भी प्रोग्राम्स आप बनाते हैं या स्किल एनहेंसमेंट सेंटर्स लाइक एसोसिएशंस कैन आल्सो क्रिएट स्किल एनहेंसमेंट सेंटर्स, अगर वो जॉइंटली बनाएं और अपने हिसाब से ट्रेन करें। लाइक बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अभी ऐसी हो गई हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो अपने हिसाब से ही बच्चों को प्राइवेट उसमें ट्रेन कर रहे हैं एंड फ्रॉम डे वन अपने यहाँ एब्जॉर्व कर लेते हैं उनको अपने हिसाब से, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं उनको, स्टडीज़ भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। तो इस टाइप का आउटलुक क्या आप लोग भी लेना पसंद करेंगे एमएसएमई सेक्टर में? सर एमएसएमई में बेसिकली एक्चुअली छोटी छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं, तो ये एसोसिएशन लेवल पे किया जा सकता है सर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है और इंडिविजुअल बेस पे तो मुश्किल है सर। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आपने टेक्सटाइल में काफ़ी काम किया है और उसके प्रमोट भी करते हैं आप, और एक अपकमिंग इंडस्ट्री भी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, वो काफ़ी जो भी कर रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुल है। आपका व्यू, इस सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपका व्यू क्या है कि अगर एसोसिएशंस मिलकर हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मेंबर्स अपने एक ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, और उसमें ट्रेन करें और ऑन जॉब ट्रेनिंग दें, 6 महीने के, 1 साल के कोर्स, 3 महीने के कोर्स जैसे होते हैं आपके रिक्वायरमेंट, और फिर उनको एम्प्लॉय करें लोकल पॉपुलेशन को,
तो आपके क्या व्यू हैं, मतलब कैसे, क्या आप ये करना चाहेंगे या क्या रहेगा, कैसे करेंगे? बिकॉज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम everyone is facing, or because of that unskilled and awarenessness और casualness जो होती है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं. Why I am emphasizing on accidents? Because ये प्रोग्राम उसी के ऊपर है. तो the more they are trained, more professional, more exposed to the hazards, working conditions, they perform better, no doubt. तो आपका आउटलुक जो एसोसिएशन का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्या वाकई में ये चीज़ करनी चाहिए हमें, और करनी चाहिए तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं एट द प्राइवेट लेवल? धन्यवाद प्रदीप जी. बिफोर आई स्टार्ट विद दिस आपका क्वेश्चन, मतलब मैं चाहूँगा धन्यवाद देना भोई साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया आज पहली बार मैं तो पहली बार ही आया हूँ कि रायपुर में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि सेफ्टी के पैरामीटर्स बहुत बदल गए हैं अभी, जो पहले थे 15-20 साल पहले, अभी हम देख रहे हैं लोगों में, इवन एमएसएमईज़ में भी सेफ्टी के प्रति बहुत जागरूकता आ गई है अभी, और सब जानते हैं कि सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए. नाउ कमिंग टू हम लोग किस में हैं? हम लोग टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ में हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री नॉर्मली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर मशीन्स भी होती है, लेबर्स भी काफ़ी होते हैं. तो समय के साथ साथ में मशीनों में भी बदलाव हो रहे हैं, स्किल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं अभी, और जो हमें लोग चाहिए वो भी बदलाव हो रहे हैं अभी. तो उसके हिसाब से अगर मैन पावर की हम बात करें तो मैन पावर हमारे स्टेट में पर्याप्त है, उन्हें बस आवश्यकता है ट्रेन करने की, जो नई नई बदलाव हो रहे हैं मशीनों में उसके हिसाब से स्किल्स अपग्रेड करने की. और हमारे यहाँ मैन पावर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब दे कैन बी ट्रेंड वेरी इजीली, जैसे बताया अश्विन जी ने और नीरज जी ने. जो नॉर्मली एमएसएमईज़ में जो होते हैं उनमें प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं. आपने बताया कि बड़े इंडस्ट्रीज में नॉर्मली टेक 6 months टाइम, पर नॉर्मली छोटे एमएसएमईज़ में मतलब नीरज जी ने बताया 10 दिन 15 दिन 1 महीना पर्याप्त में एक अच्छा आदमी ट्रेनेबल हो जाता है और टू वर्क ऑन मशीन्स. बाकी एज ही प्रोग्रेसेस ही कैन अटेन मोर एक्सपर्टीज़, बट नॉर्मली मशीनों में काम करने के हिसाब से हो जाता है. सेकेंडली सेफ्टी को लेकर अभी काफ़ी कुछ काम हो रहे हैं, और इवन एमएसएमईज़ भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं सेफ्टी को लेकर. तो वो भी अपने स्तर पे जो भी संभावनाएं होती है छोटे छोटे स्तर पे छोटे सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो करवा रहे हैं, जो कि उनके दायरे में हो. चूँकि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट चूँकि अब इतना अवेयरनेस सब जगह हो गया है तो एमएसएमईज़ भी काफ़ी जगह हो गए हैं. जहाँ तक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात आपने बताई इसके बारे में कि एसोसिएशंस जो हैं अपने मेंबर्स से बात करके उनके स्किल्स को समझते हुए अगर एक प्रोग्राम बना लें कि हमें स्किल्स ट्रेन करना, डिपेंडिंग अपॉन कितने मेंबर्स दे टेक फोकस, दे टेक इंटरेस्ट, क्योंकि उनके इंटरेस्ट पे ही हम आगे बढ़ने वाले हैं. तो एसोसिएशंस डेफिनेटली आर अ गुड फोरम, बशर्ते मेंबर्स आगे आएँ और अपनी डिमांड्स बताएं वो चाहते क्या हमसे, तो हम एक कॉमन पूल बना के प्रोग्राम बना के वी कैन टेक ए प्रोग्राम्स. डेफिनेटली दिस विल हेल्प द मेंबर्स को स्किल मैन पावर लेने के लिए आपसे. ये मेरी सोच है. In short, skilled workers are required, training is a necessity, and safety of workers and the working environment conditions is a must. So जैसे व्यूज़ दिए, बिकॉज बहुत ही अश्विन जी का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, लार्ज मेजर कंट्रीब्यूटर है. तो अगर स्किल ट्रेनिंग गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है जो अगर एडिक्वेट नहीं है, तो उसको टेकअप करने के लिए वी शुड रिप्रेजेंट, अपग्रेड करें. एंड डे टू डे मीट करने के लिए इमीडिएटली कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा सभी इंडस्ट्रीज़ को कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वो रन करें, जिसकी वजह से बेटर स्किल्ड मैन पावर मिले, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हों उनके लिए 25 days 30 days 3 months के, बट एक फैसिलिटी क्रिएट होनी चाहिए सब जगह. अगर एसोसिएशंस हैं या से क्लस्टर्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, अगर कि एक एस्टेट है या कोई इंडस्ट्रियल पार्क है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वहाँ पर हो, ताकि उसकी ट्रेनिंग करें. फाइनेंसिंग फंडिंग जॉइंटली करी जा सकती है. आई डोंट थिंक इंडस्ट्री उसमें कभी बैक फुट पे जाएगी, बिकॉज सभी लोग चाहते हैं एक्सीडेंट फ्री गुड प्रोडक्टिविटी मिले. और जिस तरह के व्यूज़ हमारे मेंबर्स ने दिए उससे भी ये पता लगता है कि दे आर कॉन्शियस एंड दे वांट स्किल ट्रेन्ड पीपल, सो दैट प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो. तो आई थिंक द डिबेट वाज क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्वाइट फ्रूटफुल, एंड नो डाउट द एसोसिएशंस, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे ज़रूर सोचें कि
किस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग को हम और बढ़ावा दें और ऐसे कोर्सेज उसमें डेवलप करें इन लाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि वो ज़्यादा बेटर हो, एडवांस्ड हो, मॉडर्नाइज्ड हो, लोग बेटर स्किल्ड हो, कंप्यूटर सेवी हो, दे शुड नो बेसिक स्किल्स, एटिकेट्स, मैनर्स, उनको कंप्यूटर ऑपरेशन आता हो, और एम्प्लॉयबिलिटी जो है करती है फ्यू थाउजेंड्स में कर देती है अगर कोई एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बन जाए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। वेयर एज इफ़ यू कंपेयर बिगर बैनर्स। Thank you so much, everybody, for joining us on the dais. I would request you all to please be on stage just for 2 more minutes. I would request you, sir, to please join us. Also, I would be requesting Shri S.L. Matre, sir. So I would also be request you, sir, to please join us. So first of all, we would like to felicitate all our members joining us on stage for panel discussions and our moderator as well. So let's get started with our moderator of the session. I would request you, sir, to please felicitate Shri Pradeep Tandon, sir, President Jindal. It is our pleasure to have you here, sir, as our moderator for this session. Thank you so much. Moving ahead, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, I would request you, sir, थोड़ी सी तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। So moving ahead इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, I would request you, sir, to please present the memento to Shri Ashwin Garg, sir, President Urla Association. Thank you so much, sir, for joining us here today. Thank you. Moving ahead, I would request you, sir, to please present memento to Vikram Jain, sir, from SBT. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. Moving ahead, I would also request you both to please present the memento to Shri Neeraj Agrawal, sir, from Satyapriya. Thank you so much, everybody. Thank you so much, all. I would request you all to please be seated. Moving ahead, we would also like to felicitate Vanshika Thakur, and to felicitate her, I would be requesting Shri Vijay Balotia, sir, Vice President of Vijay Transmissions, to please join us on stage. Also, to felicitate Vanshika, I would be requesting Shri Vijay Balotia, sir, Vice President of Vijay Transmissions, to please join us. So, thank you so much, Vanshika. Thank you so much, Vanshika, for the very beautiful performance. और मुझे लगता है कि अगर आप सभी लोगों को performance अच्छी लगी हो, तो definitely एक बार जोरदार तालियों की आवाज for Vanshika Thakur, everyone. She performed very beautifully, ladies and gentlemen. I would be requesting Vijay sir to please felicitate her. Once again, we are very grateful to you. Thank you so much for being a part
of our Conclave 2024. So moving ahead, ladies and gentlemen, we hope आप सभी लोगों ने ये session enjoy किया होगा. But we are not over yet. It's time for a short break. आप सभी lunch के लिए आमंत्रित हैं. I would request you all to please proceed for lunch and for the next 30 minutes lunch break आप सभी लोगों के लिए है. We are cutting it short because of being thoda sa late with time, but I would request you all to please be back onto your seats by 2 p.m. Thank you so much. Everybody, please enjoy this lunch. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवाली बल बल जाऊं अपनी पिया को कि मैं जाऊं बारी बारी मोहि सुध बुध नाय रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी
हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है
जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल भर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल भर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने
देना मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ तुम्हें गर मिलूँ तो बता देना खो न जाना मुझे देखते देखते तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है इतना बता तूने छुआ जख्म को मेरे मरहम मरहम दिल पे लगा पागल पागल है थोड़े बादल बादल है दोनों खुल के भीगे बरसे आ जरा पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही मिल के लगा तूने छुआ जख्मों को मेरे मरहम मरहम दिल पे लगा थैंक यू So hey everyone, so we are all set to get started after this lunch. हम बिल्कुल तैयार हैं हमारे अगले सेशन के लिए, लेकिन उससे पहले आने वाले 2 मिनट, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की धरती से हैं तो चाहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा छत्तीसगढ़ी गीत आप सभी सुने. एंड वंस अगेन हमारे जितने भी डेलीगेट्स जो बाहर की तरफ हैं जिन्होंने लंच फिनिश कर लिया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ जॉइन अस इनसाइड. हेलो, एक छत्तीसगढ़ी सॉन्ग मैं आपके सामने लेना चाहूँगी, क्योंकि बाहर से भी कुछ लोग हैं तो मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी सॉन्ग भी सुने यहाँ का कैसे होता है. और सर रिक्वेस्ट था स्पेशली छत्तीसगढ़ी सॉन्ग के लिए, तो प्लीज़ सभी इंजॉय करें इस सॉन्ग को. साउंड थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे. टुरा नहीं जाने रे नहीं जाने बुली ठुली माया के. इको पसंद आए तो सभी क्लैप करेंगे. टुरा नहीं जाने रे नहीं जाने बोली ठोली माया के. टुरा नहीं जाने रे नहीं जाने बोली ठोली माया के. मोर माया लागे रे बता दे, मोर माया लागे रे बता दे, मोर मुन्ना होगे भारी रे बोली ठोली माया के. टुरा नहीं जाने रे नहीं जाने बोली ठोली माया के. इको इको एक नजर में पगला रे मोला बही बनाए ना. मोर तन के तिजोरी लगा तय काबर उड़ाए ना. एक नजर अरे मोला बही बनाए ना. मोर तन के तिजोरी लगा तय काबर उड़ाए ना.
सोच रही है ते बन गए दुल्हारे कबाबे मोर घर माँ टुरा नहीं जाने रे नहीं जाने बोली ठोली माया के गली मटर मटर कैसे मोर गली माँ वसना मोला करके इशारा दे डोली डहर बुला वसना पहली मटर मटर कैसे मोर गली माँ वसना मोला करके इशारा दे डोली डहर बुला वसना थोड़किन दया तो ला नहीं आइस रे जिया मोर जलाए दे टुरा नहीं जाने रे नहीं जाने बोली ठोली माया के सर बोल रहे हैं कौन सा कंप्लीट होगा उसके बाद ही करना है बंद ठीक है पहली मटर मटर कैसे मोर गली माँ वसना मोला करके इशारा ते डोली बाहर बुला वसना रीमाल जाके मोला तह काबर डुबाए ना दोनों जिंदगी बिताबो कह के तह मोला फसाए ना मोर तनला माटी समझे रे घर गुड़िया बनाए ते डुरा नहीं जाने रे नहीं जाने थैंक यू So, ladies and gentlemen, welcome back after lunch. हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं. And moving ahead, we are all set to welcome our next speaker on the dais. But before that, मैं हमारे सभी speakers से request करना चाहूँगी. As we are already late, तो हम समय सीमा थोड़ा सा कम कर रहे हैं और अब आने वाले सभी presentations के लिए हमारे speakers के पास 20 मिनट का वक्त रहेगा. Moving ahead, up next we are glad today to welcome our next speaker with us, and the topic is what are we doing wrong with man and machine relationship. ये आज का हमारा अगला topic. चाहिए था बचपन में
तख्ती कितनी साइज की होनी चाहिए, पेंसिल कितना थिक होना चाहिए टू प्रिवेंट पिंच फोर्सेस, कितना जोर से दबा के लिखना चाहिए, ये सब हमको नहीं बताया गया। आज तक हम बच्चे को, टीचर हमेशा बोलती है ठीक से सीधा बैठो, बट शी डजंट गिव टूल्स एंड मेथोडोलॉजी टू सिट राइट। शी ऑलवेज सीधा बैठो, बट कैसे बैठे, कोई यूएसपी तो होना चाहिए ना। तो यही है एर्गोनॉमिक्स। एर्गो मीन्स वर्क, इकोनॉमिक्स मीन्स लॉ। लॉ ऑफ वर्क इज एर्गोनॉमिक्स। मतलब हर काम हम एक मोबाइल मशीन को यूज कर रहे हैं। इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ जॉइंट्स, मसल्स आर कंट्रैक्टिंग इन डिफरेंट मैनर, एंड पूरा रेगुलेशन है एक सेंट्रल कमांड में। तो ये पूरे को सही काम करने के लिए एर्गोनॉमिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स 1 day वर्कशॉप, बट 20 minutes में उन्होंने स्पेलिंग अभी। वाई दिस टाइगर हियर? एम्पावरिंग। एम्प्लॉय जब एम्पावर होता है, जब उसके पास अच्छी हेल्थ हो, उसके पास बार बार फैक्ट्री को उड़ाने की मौका ना हो। ही शुड नॉट बी saying please give me sick in quarters 2 days leave, I don't want to come। क्यों करता है एम्प्लॉय? सब एम्प्लॉय झूठे नहीं है। HR मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर को लगता है कि मैन पावर कम हो रहा है, वो बोलता है नहीं डॉक्टर से फ़ोन मिलाओ। फिर मैं बोलता हूँ तेरे को मेडिसिन मालूम है क्या? पुट योर फोन डाउन। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट, you are not believing him। Maybe small group of employees धोखे हो सकते हैं, लेकिन your 90% of employees are all working for salary। They are not wrong। Why you need a medical certificate by a HR manager? That means you don't have belief। तो इसका एक रीजन है, एक्चुअली your occupational hazards जो है, not even 10% injuries happen today with the modern technology, with so much of safety regulation हम सुने हैं, but 60% of your employees are all sick because of lifestyle। They are all having a musculoskeletal disease, both at home, in the office। Domestic ergonomic defects and occupational ergonomic defects। तो वही मैं को ब्रीफ करूंगा। मैं एर्गोनॉमिक का डेफिनेशन बोल दिया। अच्छी एर्गोनॉमिक्स, अगर ये माइक बीच बीच में नहीं कटता है तो यू वोंट मिस वन वर्ड। इसका एर्गोनॉमिक्स नहीं, इसका जान ही खराब है। बार बार बीच में थोड़ा दम छोड़ता है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है। सो दिस इज हाउ आवर वर्क ऑल्सो। यू आर सिटिंग फॉर 1 hour इन फ्रंट ऑफ ए मशीन, बट इन 1 hour 10 minutes आप कमर को हिला रहे हो, ऐसा कर रहे हो और ऊपर देख रहे हो। दैट मीन्स ए फोकस ऑफ एन एम्प्लॉई नॉट 100% ऑन हिज जॉब, एंड दैट लीड्स टू डिफेक्ट इन सेफ्टी। जब वो कमर के ऊपर सोचेगा तो उंगली जाएगी ना लेथ मशीन में। जब वो हेडेक के बारे में सोचेगा तो ग्लव नहीं पहनेगा इलेक्ट्रिकल वायर पकड़ने के लिए। सो एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन ईच ऑक्यूपेशनल इंसल्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। हमारे जॉब्स है, आजकल के जॉब्स सिटिंग हो गए। किसी ने बोला है बड़े बड़े फैक्ट्री खोलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैं बोला गलत बोल रहा है तू, क्योंकि सिंगरेनी कॉलेज में 2 lakh एम्प्लॉयज थे, आज 30 lakhs है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। एक ड्रैग लाइन 30 टन्स का कोल निकाल देती है, जिसके लिए 200 एम्प्लॉयज पहले करते थे। सो यू विल बी ऑटोमेटेड, आपका मैन पावर कम हो जाएगा। यू विल बी ओनली सिटिंग एज ऑपरेटिंग मशीन्स और योर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, स्विच बोर्ड मैकेनिज्म्स, सब कुछ बटन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। Movement in the body, there is no energy expenditure in the body। This is the future। Sitting jobs, some jobs have to continue as a standing jobs, and bending and reaching, mechanical hazards, lifting, twisting, drilling, vibration, there are so much of musculoskeletal system। हमारे स्नायु, हमारे हड्डियां, हमारे जॉइंट्स पूरे इन्वॉल्व होते हैं काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये सही होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं, आज तक हमको ये नहीं बताया कि हाउ टू चूज ए चेयर हाइट। कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू चूज ए चेयर हाइट? वी आर नेवर टॉट एक्चुअली। योर चेयर सीट शुड बी जस्ट बिलो यू दी फोल्ड ऑफ योर नी जॉइंट, लेकिन हमारा हर आदमी का हाइट अलग है। तो हाउ ए 28 inches चेयर कैन फिट इनटू द होल इंडस्ट्री?
देर इज नो कस्टमाइजेशन ऑफ एनी। अब देखो हॉल में पूरी चेयर एक है, लेकिन हम लोग अलग अलग के गत के हैं। साहब तो बहुत लंबे हैं, मैं तो मीडियम हूँ, कुछ लोग छोटे हैं। So we need to understand how to fit into the chair, not change the chair. So that is how the ergonomic arrangement. There are so many activities. We do not know what is the brightness contrast of a computer monitor. आप लोग को कितने लोग को मालूम है कि फ्लिकर रेट कितना होना चाहिए? कितना फ्लिकर रेट के बाद आंख के ऊपर असर होता है? कितना अपना फोकस कम होता है? अभी ये कैमरा मैन यूज करता गिम्बल. Why gimbal? To reduce the movement blur in the picture. It assists him to move without blurring the videography. This is the most important area which is not being cared. हम लोग we are still in evolution. हम complete body नहीं है. We don't know after 1 million years. पता नहीं सर कितना छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा. We don't know. You must remember, इंसान के काबिलियत में थोड़े कमियां ज़रूर होते हैं. Because we are not a completely manufactured unit. We are still under evolution. ये देखिए, from a gorilla to human being, इसकी लंबी थी, हमारी spine छोटी हो गई. इसके curves नहीं थे, हमारे पास एक curve आ गया to maintain your center of gravity. And his bones are longer, hand and हमारे hand bones छोटे हो गए. Why? Because suddenly we want to walk, we want to hold, we want to break trees. Functional abilities have put pressure on the brain to evolve more dynamically. उसलिए हमारे shoulder problem ज़्यादा है कमर के problem से भी. ये मैंने 1999 में पब्लिश किया था. सब हिंदू पूरे नेशन वाइड आया था कि कंप्यूटर यूज करने से बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं जब आपको उसको यूज करने का तरीका ना मालूम हो. लेकिन आज के दिन भी many of the computer users do not know how to arrange their man-machine arrangement. So it research goes on. This I have published in 2000. Imagine, 2000, so many years before. अगर आपकी चेयर की सिटिंग सही ना हो, it will cause tremendous impact on your spine. Imagine, जो दर्द है ना, सिर्फ हमारी रीढ़ की हड्डी से आते हैं. We have 30 of nerves which supply whole body from your spinal cord. कुछ नस कहीं ना कहीं दबते होता है, and then it keep on producing our pain. Hear me? Yeah. इसका भी जान ठीक नहीं है. सबको थोड़ा ग्लूकोज चढ़ाना है आज. Now ये पिक्चर को गौर से देखिए. Can you give me one chair? Sorry, I won't take much time, but एक चेयर तो दिखाना जरूरी है. Short stature, ये है छोटा छोटा आदमी, and he will not be able to stay in the chair because पैर उसके लटकेंगे और हम लोग क्या बोलेगा, प्लीज मेरा चेयर नया ला के दे दो. He will need a new chair. He will always demand a new chair. Silence please. He will demand a new chair instead of learning how to sit. Now how to adjust this man? He is a manager. इनको पीछे रहने के लिए इनको चाहिए एक footrest. It only एक तख्ती जो road side पड़ा रहता है, 150 रुपए का अच्छा तख्ता will give him
tremendous output in his work, because once you give if you see his feet is not hanging on the floor, you give him a small footrest, he will automatically, he will sit straight, and then you can support his back thoda bahut. So ideally, your back should be always 90 degrees in contact. Your feet should reach the floor or it should be supported. यह है सिंपल बैठने का तरीका. या घर में बैठ के टीवी देखो, कंप्यूटर चलाओ, कार में बैठो, your sitting has to be more biomechanically suitable to your body. इसलिए किसी ने नहीं. Tall people, अमिताभ बच्चन needs a tall chair. अगर कुर्सी नहीं है, 2 cushion डालो नीचे. Or a short person needs a footrest and backrest. So it's very, very simple. Sitting is 80% of our life. हम लोग भी बैठे हैं सुबह से इधर. So this is very, very important. अगर wrong sitting, forward head posture will lead to straightening of the spine. ऐसी होती है हमारी spine बिल्कुल curved के तरह. लेकिन हम undue pressure डालते रहेंगे उसके ऊपर. It may be a singer or a guitarist or maybe anybody. All occupations will have this kind of trouble. ये हमने स्टडी किया था 2000 में, 2020. All children attending online classes. No teacher knew what is the ergonomics. No parent knew. And ये है almost 2 feet के बच्चे पूरे 6-6 घंटे टांग नीचे लटक रहा है. There is no footrest. He doesn't know how to adjust. Lot of people suffered, children with a musculoskeletal pains without answer. Painkiller is not an answer. Sitting abuse of spine is always very, very important. यह है सही तरीका बैठने का. अपनी कमर बिल्कुल 90 डिग्रीज लगी रहना है, कुछ भी करो आप. अगर बैठना हो तो it has to be like that. And your feet has to be in contact with the floor. क्योंकि your lower body is 1/3 of body weight अपने टांग में है. और कैसे भी वो नीचे खींच देंगे आप. Your feet has to be supported. Silence please. And your spine has nice beautiful curvature. ऐश्वर्या राय टू मी, सब लोग के लिए एक ही स्पाइन दिया है भगवान. Unless some anomaly, mostly you have a double less curvature. उसको throughout life हम लोग maintain करना चाहिए. Forward head posture, most common unergonomic position in any industry. It may be a telephone operator, security worker in the company, or a accounts department, finance, HR. Anybody will be sitting like this if ergonomics is not known to him. It can cause 30%, 38% on shoulder pain, neck pain, any part of the body which is involved in holding the position in an isometric type. ये देखिए some of the pictures during COVID. अब ये lady बैठी है बिल्कुल एक नाक के जैसे बैठी है, like a king cobra. घर में भी कोबरा ही होगी. But however, you can see the forward head posture, how it is projected. She is not aware. And it is not a disease. Orthopedic surgeon इसका कुछ नहीं कर सकता. हो सकता है 1-2 MRI निकाल के पैसे ले लें सब लोग. Medical science is dead when it comes to occupational hazards handling. वो occupation भी नहीं लिखता है prescription sheet में. I am telling you, I am a medical doctor, MBBS, MD, blah blah. Nobody asks about तुम क्या नौकरी करता है, how many hours you work, how much you bend, what is the limit of weight you lift. Nobody knows. We keep on treating disease. इधर पेन इसको ट्रीट करो, इधर पेन इसको ट्रीट, मार दो लोगों को बस. So you have to save yourself. Now you see, ये सब में लड़की बेहतर है. At least she is lying down on the table. मगर this man is completely gone. ये पूरे forward head posture. Remember, forward head posture is the posture attained by the body when your ergonomic goes out of line. That is a key factor. ये देखिए online classes. अब इसका बाप बहुत अमीर है, इसको इतना बड़ा मॉनिटर दे दिया, वो मॉनिटर उससे ज़्यादा लंबा है. He doesn't know. These are all candid photos I have taken from known people. All these caused a lot of pain to these children. And parents gave Dolo 65, $0. जो मार्केट में 10 easily मिलते हैं, सब खिलाते हैं बच्चों को. Unfortunately. What is the correction for this lady? Anybody? Young boys? Footrest, you are right. Because of her short posture, she has gone into this outside the chair. And ये है adaptive posture. Body is trying to adopt. Body भी थोड़ा
मेहनत करती है इकोनॉमिक्स लाने के लिए, एंड बट अल्टीमेटली शी इज गोइंग इनटू मुंडी सामने वाली पोस्चर. So your center of gravity is shifting. You remember human body always function with a proper balanced center of gravity. जब भी हमारा बॉडी बिल्कुल सेफ एंड स्मूथ होता है. कार ड्राइविंग में कई लोग ऐसे चलाते हैं और कई किस्म के भंगिमा है, वो भरतनाट्यम के टाइप डिफरेंट डिफरेंट भंगिमास में वो लोग गाड़ी चलाते हैं. कई इधर है, कभी तो ड्राइवर तो ऐसे बैठा था जीप में, टैक्सी वाला जीप में, इज लिटरली आउटसाइड. सो ऑल दीज विल कॉज क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर, CTD याद रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो असर होता है वो अभी 20 मिनट में नहीं खत्म होता है. इट विल बी पुट इन योर डिपॉजिट. आज आधा घंटा, परसों, ऐसा 2 years में पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एवरीथिंग गेट्स बैड. पर्सन इज योर एम्प्लॉय विदाउट मच प्रोडक्टिविटी, सो इट्स ए हिडन लॉस टू द कंपनी. आई स्ट्रेन, एनीबडी यूजिंग रीडिंग ग्लासेस? 50-50. मैंने कई लोगों को देखा, उनको है बियॉन्ड 35 years, एवरीबडी नीड्स ए रीडिंग ग्लास. व्हेन यू यूज ए रीडिंग ग्लास फॉर मॉनिटर, व्हाट यू विल डू? ये काम करेंगे, लेटर टाइप कर रहे भाई. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ऑफ ऑप्टिक्स वी हैव ए प्रोग्रेसिव ग्लास व्हाट यू आर वेयरिंग. इट हैज ए फुल रेंज. विदाउट प्रोग्रेसिव ग्लास नो एम्प्लॉई बियॉन्ड 35 years एज शुड बी अलाउड टू यूज कंप्यूटर. एक लाइन आपके USB में लिख दो, 35 क्रॉस किया, you better, if you are having a reading glass, you must wear, because he will be a perpetual loser from your company. वो बार बार लीव लेगा, गिड्डीनेस आएगा उसको, पेन आएगा, हाथ दर्द होगा, muscular cramps, very very serious. We also suffer. Ideally your monitor level should be at eyebrow level. अगर ये है monitor, बिल्कुल eyebrow level में होना चाहिए, और नीचे देखने के लिए chin dip process करें, chin dip. Don't do this. Do not use the bend. There is one special joint God has given, atlantoaxial joint, spine का और head का है. वो बहुत आसान से हिलता है. वो सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए नहीं है, कंप्यूटर यूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. स्टैंडिंग अब्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जब यंग था तो आई यूज्ड टू गो टू डांसिंग क्लासेस. रशियन एम्बेसी मद्रास में गया रशियन बैले सीखने के लिए. Even now I can dance. So when you want to learn ballet, first thing teacher taught is how you should feel. You should feel tall. अगर तुम 5 फुट के हो तो भी सोचने में क्या जाती है, 6 फुट के सोचो. That automatically makes your skeleton balanced. नहीं मैं गिड्ढा हूँ तो मैं और गिड्ढा हो जाऊँगा, ऐसी डिप्रेशन हो जाऊँगा. But you feel you're tall, you're automatically you're better. First class in dance class was, this is my slide. Feel that you're tall, feel that you're beautiful. कितना भी काला हो, कैसा भी हो, सोचने में क्या है, फ्री है सोचना. It's all happier thing only. Always think you are confident. किससे क्यों डरना है हम लोग, ये बहुत ही important है. After all, your body is your output of your personality, and that is what you're going to increase your occupational demand and occupational productivity. So this is very very important, how to stand. But industry mein standing is different. You are not standing for a minute, you are standing for hours. A security guard खड़ करता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कमर. 90% of my patients with security guards, क्योंकि 12 घंटे का ड्यूटी है, उसका 8 घंटे का नहीं है. You know, unfortunately OSHA के गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं होते हैं. 8 hours ड्यूटी विद ए लंच ब्रेक, विद टी कॉफी ब्रेक नहीं है. सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी इज 12 hours. Nobody objects. And he is having a standing duty. Mind it, huh? Remember, the gravity with your body weight, keep on pressing on your spine. There is a vertical loading. The weight of the pillar is, when it is vertical, it is heavier. When it is lying down, it is lighter. So, isliye, whenever you stand, this is how your optimal level of standing. Make sure, so many ergonomic lessons, parallelogram. Parallel nahi hai. Parallel hona chahiye aapke ungliyan. If you are sitting on a chair, your table should be below your elbow. मतलब सिर्फ आपके फिंगर्स कीबोर्ड में हिलना चाहिए, ऐसे नहीं है, यहाँ नहीं है टेबल. This is a wrong advocacy. Your table should be below your elbow. और उसको देखने के लिए हम लोग chin dip कर सकते हैं. It may be a power room, productive management room in the power industry,
or it could be a chemical industry, irrespective of any industry, wherever you have to stand, your monitor level, table level, working surface should be below your elbow. Now, this is a person who is, his machine is low. You cannot remove the machine. You cannot lengthen the machine. आदमी की कुर्सी तो दे सकते हैं हम लोग. So a good employer chooses anthropometry of personality and puts him on the job. अब मैंने देखा coal industry, they bought the Japanese dumpers, 100-ton dumpers. उसका sitting area है for a 6-foot person, at least 5'10", 5'11" वाला. और इतना छुटकू सा बैठा है, वो लटक रहा, टांग लगा तो हाथ नहीं मिलता, हाथ में से टांग नहीं मिलता. एंड वो कार के ऊपर चढ़ा दिया मैनेजर का, बिकॉज हिज विजिबिलिटी इज पुअर. Choosing a proper anthropometrically suitable people on a particular machines is very, very important, especially of safety officers. Safety ends when you put a wrong person on a right machine, because he's struggling. During the struggle, you make a mistake. Similarly, a very tall machine, very simple solution. उसके एक छोटा सा stool दे दे, छोटा सा platform दे दे. Don't say cut the machine. Don't change the person at least who is there. So ideally, instead of saying तुम ऐसी मकरा है, you have no pain, simply you're saying you want to run up, just आपने बोला ना, दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए. सर चले गए, बहुत अच्छा बात है. दिल को एक बार सुनो. Person cannot lie throughout the day, no, throughout the week. एक बार सुनो क्या बोल रहा है वो, एक बार सोचो. Probably you can help him. If you help him, he will be more honest to you. A officer helps the lower cadre, they will be much more honest to you than appreciation of his work. अरे तू इतना लंबा है, मशीन छोटी है, फिर भी अच्छा काम कर रहा है. I will provide you a stool, I will provide you a chair for that person, and for this person I will provide a platform, and 6 महीने के बाद आपको बदली करूँगा. This is the approach to prevent these problems. Lot of engineering advices have come in. Roller mills have come instead of pushing. Now you see the position of that man. मैंने काफ़ी लेथ मशीन पे देखा. He is facing on the machine, he is twisting his trunk and वो कर रहा है. But all he has to do is little bit turn. Turn the hip joint can make lot of good thing for the spine. Normally, lot of people twisting activity करते हैं. So example ये drilling या cutting or lathe machine or any tool activities. So better to turn the whole body and do your work. So these are the real good where there is a chance you must implement putting the machine. See 3 different height people, small benches. These are very good engineering interventions which can prevent. And these people will work very, very happily, because one is they know mentally you are helping him. Secondly, they are free from problem. Double dhamaka. A standing workstation. A wonderful picture, I copied, it's not mine. Now, there are a lot of standing workstations for computers in Google. मेरा 20 minute हो गया, भगा देगी लड़की. So, lot of, but this is very important, they won't get it. This is the most important thing. आप खड़ के काम करना है, समझ लो आपका, it may be a policeman on duty or it may be a operator. You must tell all your standing employees, एक पीढ़ी दे दो उनको, तो 1 foot on some height will increase the balance of the spine. तो थोड़ा देर ऐसा काम कर रहा है. अगर if they stand like this, slowly they will go center of the gravity, going out, they will cause tremendous problem. This is a perfect workstation. See his table is below his elbow and his monitor is almost eyebrow level. 1 foot on ground, other foot on a step. This is the most beautiful position I've ever seen for all standing employees, and they should keep changing their feet. आपको तो मालूम है bending तो सबको जानते हैं. So if you want to really lift a chair like this, so calmness thing, housewife क्या करते हैं, मैं लाई डोसा बोल के ठक करके she'll bend. 1 week आपको डोसा नहीं है, because she'll be sick. So the rule of lifting is go closer. Even to lift one guitar, people lift like this. My son is a big singer, that's why I know all the equipment. You must go closer, bend your knees. If your knee permits, अगर knee pain है osteoarthritis bend नहीं करोगे मत उठाओ. So then you slowly go. Assess your weight. If it is more than 1/4 of your body weight, never touch it.
Ideally, we are supposed to lift only 1/7 of the body weight. 100 किलो का आदमी कितना लेना चाहिए? 18-20 kilos उतना ही उठाना चाहिए. We normally lift more than our capacity. Even for babies, we tell the mothers if it is more than 12 kilos, follow all ergonomic methods. बच्चे के नज़दीक जाओ, bend your knees, pull him closer and then lift your chair. इसको हमेशा हम लोग दिमाग में लगना चाहिए क्योंकि we tend to forget these things. So this is a small example. There are a lot of examples. ऐसे तो pictures आपको बहुत मिलेंगे. But this is for a person who can able to sit down. But a lot of us cannot sit down. तो उनके लिए ये नहीं है. Use a machine, lifting machines. There are a lot of machines आए हैं, trolleys आए हैं. Use them nicely. Don't have to, spoil the body. Using a buddy in lifting is also very, very important. ये हम लोग नहीं करते हैं. We also try to lift sometimes big suitcase. When you travel abroad, it will be 25 kilos, 24 kilos. Ideally, you should not be lifting. You should be very, very careful. Take help. So 2 people lifting. उधर भी देखो हमने देखा एशियन पेंट्स में भी एक ही आदमी उठा के फेंक रहा था. Tremendous amount of rotational strain over the lower back because there is no treatment for these occupational injuries. All has to be prevented. Bending and reaching. Most नज़दीक जाने से क्या उधर जाके ले सकता था ना? No, but people tend to do इधर से एक monkey pose में जाके he wants to bring. So ideally इसका education अपने supervisors अपने workers को बोलते रहना चाहिए. अरे झुकने के टाइम ऐसे करना चाहिए. Don't bend, reach. Of course, you have a lot of machinery available using the staircases wherever possible, lifts. Domestic ergonomics also plays. See, employees blame only the factory. We should agree that. वो घर में वो आड़ा तेड़ा बैठ के टीवी 10 घंटा देखता है, क्रिकेट मैच, बिरयानी खा के, बीयर पी के, क्रिकेट मैच देख के, कमर पकड़ते हैं, सामने आके साहब को बोलेगा सर आपका मशीन ठीक नहीं है, प्लीज buy me a chair. So ideally, instead of blaming them, we should educate domestic ergonomics also. It should be, now in Hyderabad, in our financial city, multiple floors buildings are constructed. एक फ्लैट है 20 करोड़ तक है, लेकिन उसमें एक बच्चा है 2 फीट का, हस्बैंड 6 फीट का, बीबी 5 फीट की, लेकिन उसका मिरर, वॉश बेसिन, टॉयलेट आर ऑफ सेम साइज. इमेजिन टेक्नोलॉजिकल ब्लंडर है बिल्कुल. हाउ यू हैव टू कस्टमाइज योर कस्टमर्स आर लिविंग इन द हाउस. 10 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ लगाओ, people should be able to use the utilities in the house. So some of the examples I show you. Phone using, of course, I don't have to tell you, this is the worst thing one can do. बॉटल से एक बार थोड़ी पी सकते पूरा बॉटल, पूरा दिन पीते रहते आजकल. लेडीज़ को भी बहुत अच्छा हो गया क्योंकि एक बॉटल खरीदना तो ग्लास धोने की ज़रूरत नहीं है. So put in the fridge, take it out, but it will cause tremendous extension injuries. But drink with a glass of water or use a small bottle like this, it won't cause stress. But this is the most common and it can have a cumulative trauma disorder on the neck. Phone, this is very, अब ये तो सिर्फ खड़ी है, आजकल तो मोटरसाइकिल भी है, पूरी दुनिया टेढ़ी है फिर भी ऐसे ही चलाएगा वो. ये महारानी pose of watching television and Maharaja follow Maharanis. So we also do the same thing. This will cause opposite of the drinking water. Flexion injury to the neck. हमने ये neck का एक सब देख के एक पेपर पब्लिश किया, urban neck syndrome. कौन थे उसमें participants? All of them either drinking bottled water or watching TV from bed. They have caused extension flexion injury to the neck. So imagine these are all avoidable, preventable domestic activities. Customization should be with the size of your body, tall person. So ideally, instead of knowing these numbers, आप याद रखना चाहिए वो टेबल होना चाहिए आपके एल्बो के नीचे, टांग जमीन पे लगना चाहिए, पीठ लगी होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए at the level of eyebrow. If you follow this, automatically you yourself will adjust your ergonomic arrangements of your body. Same thing, standing also same duties. If he's standing here, his work surface should be below his elbow, not exactly 90 degrees, still bigger degrees, around 100 degrees hona chahiye. So keep shifting the leg, which I already told you. Toilet, how many people design toilet? We have only one commode. अब लंबा आदमी को बहुत तकलीफ होती है, बैठना तो इमरजेंसी में बैठते हैं, उठने के टाइम में आराम है ना, बहुत मुश्किल होता है.
So remember, old people, geriatric population, retired population, children, they all suffer even insults on the pot. This need to be, there are a lot of measurements, but measurements I don't agree because we are of different measurements. ये कॉमन रूल याद रख लीजिए, आपका कमोड का लेवल होना चाहिए नी जॉइंट लेवल. दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट रूल, सो दैट कैन सेव यू फ्रॉम. सो देर आर लॉट ऑफ सीट रेजर्स अवेलेबल. हम लोग सब हमारी हाइट के हिसाब से एटलीस्ट एक टॉयलेट में छोटा रखना चाहिए, एक टॉयलेट में ज़रूर ऊंचा करना चाहिए थोड़ा, बिकॉज with the age group especially, we are all 64 plus, we all have little bit kirkiri in the knee joint. All special population needs special ergonomics. Wheelchairs हम तो खरीद के दे दिए, but does he really get a proper his plate eating के लिए सही level में मिल रहा है उसको? If you want to use a computer and machine, are we really encouraging to use correct ergonomics in his place? No. ये पूरा छापे मार के हम लोग machines बनाते हैं. So your industrial people should do some research. Special population need lot of changes in arrangements in the industry. This is a very good design. I like this. See, a small step ladder pattern can help this elderly lady nicely. She can climb up. They can even carry loads, smaller loads, personal items to the top. Like this, we can develop a lot of things. You can see here 3 different levels of commodes. I mean, sinks, water sink, washing areas, a छोटे बच्चों के लिए, a middle height. At least in airports we saw at least one urinal, one is lower, but you need to really do much more beyond this. School children and school children, domestic ergonomics, वहाँ से सिखाना चाहिए, because हम लोग अब नहीं सीख सकते. It is a lot of difficulty. Children should be taught. Make sure children are sitting like this. Many schools, their feet are hanging, and they will think that is the right way to sit. That is a problem. So ideally, जो हमने रूल बताया, ये सब कुछ बच्चों को भी घर में हम लोग थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए. So all this will lead to neck pain, back pain, sciatica. हम लोग ने डॉक्टर ने 10-15 नाम रखे, वो आपसे पैसे खींच रहे. But we are not empowered to empower you with a correct ergonomic arrangement, ergonomic knowledge, because doctors themselves are not trained in this field. So, commonest thing how to see a phone. ये बहुत ही comfortable है. You see your phone, you can watch your video, nothing will happen. If you want to talk, just, you don't have to bring your neck movement just to do this. Watch. So, watch. If you want to browse, put your elbows on your body, browse. But ये मत करो. ये मत करो. Okay मत करो. Because you are using for many years. हम लोग तो फिर भी 35 में शुरू किया फोन, बच्चों को तो अभी 7 साल से शुरू है. Imagine in 30-40 years what will happen to their spine. It will be of no use. Workstations already we discussed. How to sleep. अभी भी रोज पूछते हैं कि पिल्लो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. वो पिल्लो तो ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट डिस्कवरी था. Who are we to say not for pillow? But ideally a correct arrangement. Human beings, if you see the surveys of all over the world, 90% of the time we sleep sideways. हम ऐसा तन के सोचते हैं, लेकिन कोई भी तन के नहीं सोचता. Ultimately, our crumpled baby position only हम सोते हैं. Now the amount of shoulder I have, this is amount of pillow I need. That means your spine and your bed should be parallel to each other. Here you see the lakir, and this is how the mattress automatically gets a shape, and that's why you should keep changing the mattress. Pair ka head ke side, head se pair, bed to bed, room to room. You should keep on changing your mattress so that mattress and spine remains perfect. ये थोड़े यूज करते हैं, but these are all temporary means. You don't expect your employee to wear this belt and come for a job. That means he's not yet recovered. So he's coming with the collar, working for job. He's not recovered. He is going to commit mistakes. You will have a more compensation paying him because he will, somewhere he'll put his hand. So this is very, very important. Ergonomic, we need education, school level, lower KG level. We should teach them how to sit on the floor, how to get up, how to stand, how to lift, how to use a gadget. They are going to use gadgets. Don't say don't use phone. Teach them how to use phone. Don't say laptop use mat karo.
बट लैपटॉप का एर्गोनॉमिक्स, लैपटॉप भी इतना ही ऊंचा आना चाहिए. You need external keyboard, external mouse, so that you don't bend again, develop a forward head posture. So, taking care is your own responsibility. You have only one spine, it lasts for 100 years, and you can tamper it at 20 years or 30 years, you can really damage. So, my appeal is to, there are a lot of information available on ergonomics, even a common man can understand, and if still more doubt, call me, I'll come to your place and lecture your people. Thank you. Namaskar. Sorry I took your time. Abhi इतना दूर से हैदराबाद से I cannot talk in 20 minutes. Hello. Thank you so much, sir. I would request you to please be on stage and yes, to felicitate our speaker of the session, I would be requesting Shri Aminash Gunjal sir to please join us. I would request you, sir, to please present the memento. Once again, it is our extreme pleasure to have you here today. Thank you so much, sir. Can we have a huge round of applause? Definitely the session was so interesting. Moving ahead, ladies and gentlemen, up next we are all set for our next session. I would be requesting Dr. Ravi Gurbani sir to please join us on stage for the next session, and the topic is first aid and industrial safety measures. Let's welcome Dr. Ravi Gurbani sir. Also, I would request all of our speakers to please, I know 20 minutes is a very short span of time, but because we are already very late from our schedule, so we are just trying to catch up, and we want to listen all of our speakers definitely. So please, I would request Dr. Ravi Gurbani sir to please join us. ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
Hello. Thank you. Thank you very much, Osho Foundation and Raju sir, Sham sir, for inviting me for this elite presentations. I have been witness for many CPR activities and first aid activities, but this is the first time I am attending such a beautiful audience, such an interactive audience, and such an intellectual audience. That to be audience को bore नहीं हो रहा है. After every session, they have entertainment parts also. So this is I would like to say सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ी का. So morning से इंडस्ट्रियल सेफ्टी हज़ार्ड्स पे काफ़ी बात हो रही है और कैसे माल फंक्शंस होते हैं, लेकिन सेफ्टी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई मिसहैप होता है, तो उसके बाद का जो रोल है वो हम लोग करते हैं और हम लोग आपको ट्रेन भी करते हैं. सो आइडियली हर एक कंपनीज़ में, हर एक फैक्ट्रीज़ में, हर एक लार्ज स्केल्स इंडस्ट्री में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एसेंशियल है, ज़रूरी है. And I, Dr. Ravi Gurbani from the Maya Hospital, Nagpur, going to present this first aid talk. And after me, Manohar sir, he will be presenting the CPR activity over here. So ideally, सबको CPR and first aid आना चाहिए, because आपके फर्स्ट एड देने के बाद ही जब वो डॉक्टर्स तक आते हैं, जब हॉस्पिटल में आते हैं, वो जो टाइम ड्यूरेशन है, इट विल बी 20-25 मिनट्स. उस पीरियड में अगर आपने इफेक्टिव फर्स्ट एड दिया तो मैनी इन्फेक्शंस, मैनी मॉर्बिडिटीज़, कोमॉर्बिडिटीज़, मैनी मिसहैप्स, फर्टिलिटी कम हो जाती है. एक फर्स्ट एड का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा. अगर आपने गोल्डन आवर्स में अगर डॉक्टर्स या हॉस्पिटल, रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल तक ला लिया, तो आई विल टेल यू, पेशेंट सकम्ड ही नहीं होता है, पेशेंट की डेथ ही नहीं होती है, इफ़ यू गिव प्रॉपर एंड इफेक्टिव CPR. Which Manohar sir will be telling you after this session. So we'll start with the first aid. See, जैसे कि सुबह नारायण सर ने बताया कि छोटी छोटी इंजरीज होती है, उसमें इफेक्टिव कंप्रेशन बैंडेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. वंस कोई इंजरी होती है तो यू हैव टू क्लीन दोस इंजरी विथ योर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, वॉट एवर अवेलेबल विथ यू. आपके नज़दीक पास में जो भी है, अगर सपोज कोई डेटॉल, एंटीसेप्टिक कोई चीज़ नहीं है, यू हैव टू क्लीन इट विद द क्लीन वाटर. Once you will clean this with the clean water and effective bandaging is applied is very very important. How you will apply the either, see here is the injury and you will start from downwards or start from upwards, so that the bandage will be compressive, give compression and आपकी bleeding stop होती है. So right from आधे सेंटीमीटर तक ऊपर लेके जाना है और आधे सेंटीमीटर तक नीचे लेके आना है. This is called effective compression bandaging, which is must in first aid. आपके यहाँ, आपके इंडस्ट्रीज़ में, आपके हॉस्पिटल्स में, आपके स्मॉल के इंडस्ट्रीज़ में ये बैंडेजिंग अवेलेबल है, बट ओनली थिंग यू हैव टू अप्लाई इट वेरी जेंटली एंड इफेक्टिवली. देन वंस ब्लीडिंग आती है, सपोज आपका कोई अपर आर्म इंजर्ड हो गया है, कोई लोअर आर्म इंजर्ड हो गया है, वहाँ से टॉरेंशियल ब्लीडिंग हो रही है. सो अपार्ट फ्रॉम इफेक्टिव कंप्रेशन बैंडेजिंग, व्हाट आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर? अपार्ट फ्रॉम इफेक्टिव कंप्रेशन बैंडेजिंग, यू हैव टू एलिवेट योर पर्टिकुलर एरिया. सपोज हाथ से होती है जो, तो एलिवेट योर हैंड. लेग से होती है तो यू हैव टू गिव अ लिटिल ट्रैक्शन, लिटिल एलिवेशन टू द लेग, सो दैट कि आपके हार्ट की लेवल से वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो विद ग्रेविटी ऑटोमेटिकली ब्लड विल स्टॉप. और सपोज नहीं होता है, इफ इट इज आर्टेरियल ब्लीडिंग, अगर स्टॉप नहीं होता है तो कम तो भी जरूर होगा. एंड द रेस्ट यू विल टेक केयर बाय दिस इफेक्टिव बैंडेजिंग. इंटेंस हीट में काम कर रहे हैं, 8 आवर्स नॉन स्टॉप ड्यूटी. फैक्ट्री में कोई वर्कर नहीं आया तो वो वर्कर का ओवरलैप ड्यूटी कर रहे हैं. इंटेंस हीट में काम कर रहे हैं. नागपुर, आई विल टेल यू, द टेम्परेचर इज 46, 47 समटाइम्स, एंड नॉन स्टॉप वर्कर्स वहाँ काम करते हैं. इंटेंस हीट में काम कर रहे हैं. यू विल कम अक्रॉस द केस ऑफ अ डिहाइड्रेशन. तो हाउ विल यू डायग्नोज? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, डिहाइड्रेट होकर गिर पड़ते हैं, तो हाउ विल यू डायग्नोज? उस समय आप ही लोग वहाँ पर नज़दीक रहते हैं, तो यू हैव टू डायग्नोज बाय शोइंग, आस्किंग द पेशेंट टू शो योर टंग. सी, इन डिहाइड्रेशन टंग विल बी मॉइस्ट, tongue will be dry, whereas normal cases में टंग मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है. सपोज
डिहाइड्रेटेड पेशेंट कोलैप्स होकर गिर गया तो हाउ ही विल शो हिज टंग, इट इज इम्पॉसिबल. तो इन दैट केस आपको वो पर्टिकुलर पेशेंट की स्किन लिफ्ट करना है. हाउ यू लिफ्ट द स्किन ऑफ द पेशेंट? डिहाइड्रेशन में वो स्किन जो लिफ्ट रहेंगी वो लिफ्ट ही रहेंगी, वो अंदर नीचे जाएगी ही नहीं. वेयर एज नॉर्मल पेशेंट में इट विल गो बैक. दिस इज कॉल्ड अ टर्जर साइन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वंस डिहाइड्रेशन होता है, आपने डायग्नोज किया दिस इज डिहाइड्रेशन, इमीडिएटली गिव हिम वाटर, इमीडिएटली गिव हिम वॉट एवर द अवेलेबल थिंग्स विथ यू, आइदर ग्लूकोज वाटर और नमक और पानी का जो भी वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल है, गिव इट. वंस द पेशेंट विल कम टू हॉस्पिटल, मैनी टाइम्स हम उनको 2-2 दिन IV लगाते हैं. द रीजन बीइंग पेशेंट विल कम अक्रॉस द हीट स्ट्रोक, एक्यूट किडनी डिजीज, पेशेंट के ब्लड किडनी लेवल्स रेज हो जाते हैं. किडनी फंक्शन टेस्ट अगर हम उनके टेस्ट करते हैं तो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन अलार्मिंग लेवल में रेज हो जाते हैं. सो दोज पेशेंट हैज टू बी गिवन टाइट्रेटेड डोज ऑफ IV फ्लूइड्स वंस दे विल कम टू आवर हॉस्पिटल. बट इमीडिएटली अगर आप उनको रेस्क्यू करते हैं, इमीडिएटली आप उनको फर्स्ट एड देते हैं तो वो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है. अदरवाइज द चांसेस ऑफ द किडनी डैमेजेस आर देयर. फर्स्ट एड इन दिस sprain and twist. Suppose leg twist हो जाता है, immediately patient is unable to stand, back stretch हो जाती है, patient is unable to stand. The first aid you have to give is give rest. Ask particular person to take rest. Ask particular person to get rid of that work what he was doing. Then apply ice. Any ligament injury, ice has to be applied. Any muscular injury, alternate ice and hot fomentation has to be required. Back pain है तो muscle involved है. This means you have to give alternative ice and hot fomentation. Whereas अगर सिर्फ ligament injury है, you have to give ice fomentation, not for a 1 minute, 2 minute, continuous for a 20 minutes. This will decrease his inflammation. First aid इन कोई ऊपर से फैक्ट्री से ऊपर से काम करते करते गिर गया, his leg is broken, his hand is broken, what is the thing? उस समय आप क्या करेंगे? The first aid उस समय आप ये करेंगे, shift the patient peacefully, shift the patient pain free, shift the patient by doing immobilization of particular fracture joint, fracture bone. अब ये केस में कैसे आप immobilize करेंगे? पैर का फ्रैक्चर हुआ है, you have to shift the patient from a particular place to the hospital. Then you have to apply the sling. You have to apply the some sling और एक छोटी सी rod, whatever the thing is available with you. Then strap it. Then उसको अच्छी तरह से bandaging करके so that जो दो fragment part है वो हिले नहीं, उसमें pain बढ़े नहीं. Primarily आपको यही करना है कि उसको immediately shift करना है, pain free shift करना है. If the paracetamol, if any painkillers are available with you उस समय पे, then give it to the patient and try to shift him pain free. See, arm injury है, the arm को कैसे stabilize किया है? You have to apply some sling over there and then wrap it with the other part of the chest and shift the patient to particular respect to nearby hospital. See, these are some methods. Slings are applied over there. First aid in burns. हाई इंटेंस हीट में काम करते हैं, फर्नेसेस के सामने काम करते हैं, वेल्डिंग करते हैं और अचानक आपका कुछ बर्न्स का एलिमेंट वगैरह आपके ऊपर आ जाता है. तो there are 3 types of burns. First degree burn, second degree burn, third degree burn. First degree burn, हाथ ऐसे थोड़ा सा झुलस जाता है, रेडिश होता है. Second degree burn, apart from redishness, there are blebs. Blebs आ जाते हैं, एक छोटे छोटे फफोले आ जाते हैं. That is second degree burn. अच्छा, okay. ये इसको थोड़ा उधर कर दीजिए. See, this is first degree burn, second degree burn and third degree burn. Second degree burn में जैसे कि मैंने कहा थोड़े से blebs आ जाएंगे. Third degree burn, apart from redishness, blebs, there will be the muscle injury. The deep muscle injury will be there. So
the treatment of first, second, third degree burn आपके सामने होते हैं. You have to shift this patient to respective nearest hospital. First and foremost thing, you have to bring all these 3 cases in front of a running clean tap water. Apply clean tap water over all these 3 burns, right? Then in second case, जहाँ पर थोड़े से ब्लेप्स और जहाँ फफोले आ गए हैं, don't try to break these blebs, because you are breaking these blebs, automatically you are giving infection to the particular thing. Then these are the figure of thermal burns. These are the chemical burns with the some chemicals and some factories and all that. This is electrical burns. See, this is a type of electrical burns. So what are the do's and what are the don'ts? Do's, जैसे कि मैंने कहा, आपको रनिंग टैप वाटर के नीचे करना है, प्रॉपर एंड इफेक्टिव बैंडेजिंग करना है विथ नीट एंड क्लीन वाटर, अप्लाई एलोवेरा इफ इट इज अवेलेबल विथ यू, देन टेक पेन किलर, बिकॉज आप पेन किलर लेते हैं, एनी बर्न्स जो साइकिल रहती है, रूबर, पैलर, डोलर, पेन आप सबसाइड करते हैं तो वो पूरी साइकिल ब्रेक हो जाती है. देन इन्फेक्शन विल ऑल्सो सबसाइड, देन रेडनेस विल ऑल्सो सबसाइड, एंड ऑटोमेटिकली पेन किलर आप दे ही रहे हैं. व्हाट आर द थिंग्स यू डोंट डू? डोंट अप्लाई ऑयल, बिकॉज ऑयल अगेन इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. आप होम रेमेडीज देखिए, सब जगह ऑयल अप्लाई करेंगे, रॉन्ग. ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, यू आर गिविंग इन्फेक्शन टू द पर्टिकुलर पेशेंट. डोंट यूज एग्स. एग्स भी लगाते हैं, एग्स में अगेन प्रोटीन रहते हैं, अगेन इट विल गिविंग इन्फेक्शन टू द पेशेंट. एज आई सेड, डोंट पॉप अप द ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर तोड़ना नहीं चाहिए. डोंट अप्लाई आइस. आइस कितनी पुरानी है, you don't know. Don't apply ice. Ice is also act as an infection. So what are the things you have to do? These 4 things. What are the things you don't have to do? These 4 things, right? So this is the common problem which every factory worker will face. So immediately effective bandaging and rush the patient to the nearest hospital. I'll tell you, apart from this, जब patient हमारे पास आता है तो हम count करते हैं what is the percentage of burns, right? एक हाथ का 9%, दूसरे हाथ का 9%, एक leg का another 9%, दूसरे leg का another 9%, front body 25%, back body 25%, neck 15%. So 100% में से अगर 50% burns होते हैं तो we'll tell patient it is very difficult to survive, because eventually those patient will go into the septicemia and 8th, 9th day. Counts उनके raised हो जाते हैं. So those patient meticulously required a dressing every day. Dressing, higher antibiotics, IV fluids, because ये patient में BP कम हो जाता है and infection बढ़ जाता है. So any person who's having more than 50% burns has to be admitted in a hospital with a decent antibiotics, decent IV fluids, and a proper daily dressing. First aid in snake bite. I was asking my friend Sham, he was there. मैं बोला श्याम, मैं snake bite पे तो ले रहा हूँ, but snake bite आते हैं क्या इंडस्ट्री में? सर बहुत सारे आते हैं. He said बहुत सारे आते हैं. So how will you diagnose कि this is a poisonous snake or non-poisonous snake? First of all, right? Poisonous snake will always have a 2 bite marks. 2 दांत के निशान रहेंगे poisonous snakes में. Whereas non-poisonous में एक ही दांत का निशान रहेगा, एक bite mark रहेगा. First diagnostic tools जो आप वहाँ पर first aid पे करेंगे. See, हमारे पास हॉस्पिटल में आ गया तो hospital will take care, hospital will diagnose whether this is a poisonous or non-poisonous depending upon the other clinical manifestations. Second, अगर किसी ने snake देखा है तो poisonous snake will always have a triangular head, whereas non-poisonous snake will have a rounded head. अब हम पूछते हैं कि अरे स्नेक कैसा था, तो मेनी टाइम हमको हमारे पास आंसर आता है, सर हम क्या स्नेक को देखते बैठेंगे क्या? करेक्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कब स्नेक काटा, क्या काटा. सेकंड, मैंने बताया कि 2 फिन्स रहते हैं, इसमें एक ही बाइट मार्क रहता है. नॉन पॉइजनस में या तो मेनी टाइम्स नहीं रहता है. थर्ड, अगर स्नेक दिखता है तो पॉइजनस स्नेक में टेल में यू विल फाइंड ओनली 1 रिंग ओवर हियर, whereas non-poisonous में there are 2 rings, right? Within 5 years अगर आप पेशेंट शिफ्ट करते हैं, हॉस्पिटल में आता है
हम एंटी स्नेक वेनम देते हैं, पेशेंट विल सर्वाइव। 6 घंटे के बाद अगर आप लाते हैं तो उन केस में एंटी स्नेक वेनम देने के बाद भी मैनी टाइम्स पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। सो ट्राई टू शिफ्ट दिस पेशेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी हो सके वो पेशेंट को शिफ्ट कीजिए। वंस पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे पास हम डाउट में है कि इसको पॉइजनस स्नेक ने काटा है कि नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है, तो उसका हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में पेशेंट क्या करता है, पेशेंट की जो अपर आईलिड्स है दोनों ड्रॉप हो जाती है, दैट वी विल फाइंड इन पॉइजनस स्नेक्स ओनली। सेकेंड, उसके जो मसल्स है फ्लैक्सिड हो जाते हैं, मीन्स पेशेंट एज अ फ्लैक्सिड टाइप हो जाता है। दिस इज द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन अकर्स इन पॉइजनस स्नेक्स। ये हमारे पास, हमको ये 2 साइंस मिल गए, हम स्टार्ट कर लेते हैं एंटी स्नेक वेनम। दूसरा आता है ब्लड के कॉम्प्लिकेशंस। ब्लड के कॉम्प्लिकेशंस में हमको डाउट है कि पॉइजनस स्नेक ने काटा है कि नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। पेशेंट का 10 ml ब्लड निकालते हैं, एक इसमें कंटेनर में डालते हैं 10 ml ब्लड, वो 15 उसको शेक करते हैं, 15 मिनट के बाद भी वो क्लॉट नहीं होता है, दिस मीन्स दिस इज अ पॉइजनस स्नेक। 15 मिनट के पहले क्लॉट हो गया तो दिस मीन्स दिस इज नॉन पॉइजनस। तो दिस मीन्स कि हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिव है। पॉइजनस स्नेक काटने से वो मैकेनिज्म खराब हो जाता है। तो विल स्टार्ट ट्रीटमेंट, विल स्टार्ट एंटी स्नेक वेनम टू दोस पेशेंट। एक दूसरी बात, वंस आपको पता चल गया कि ये पॉइजनस स्नेक ने काटा है, आप शिफ्ट करते समय यू हैव टू अश्योर पेशेंट कि डोंट वरी कुछ नहीं होता है, डोंट वरी कुछ नहीं होता है। ना उसको अश्योर करके आना है, ना कि अरे तेरे को तो पॉइजनस स्नेक ने काटा, तू तो अभी कुछ ही घंटों का मेहमान है। नो, पैनिकी में पेशेंट चले जाते हैं। एंड डोंट अप्लाई टॉर्निकेट। अभी रिसेंटली आई हैव विटनेस वन पेशेंट जो पॉइजनस स्नेक ने काटा, तो उसके रिलेटिव्स ने वो ब्लेड से वो एरिया ऐसे क्रिस क्रॉस कर दी। द रीजन बीइंग कि वहाँ से जो ब्लड है वो निकल जाएगा एंड द पेशेंट विल सर्वाइव। आई विल टेल यू, टॉर्निकेट बांधना, काटना, वो वहाँ का बाइट जहाँ पर किया है वहाँ सक करना, चूसना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज 0.8 सेकेंड में कार्डियक, देयर इज अ कार्डियक साइकिल, हमारा जो हार्ट पंप करता है कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकेंड में आपका पूरे बॉडी का ब्लड नाखून से लेके पैर तक आ जाता है। तो आप उसको कब टॉर्निकेट बांधेंगे, आप उसको कब चूसेंगे, आप उसको कब बाइट मार देंगे? 0.8 सेकेंड में पूरा सर्कुलेट हो जाता है। सो डोंट डू दीज मिथ्स। फर्स्ट एड इन आई इंजुरी। कुछ फॉरेन बॉडी चली गई आंख में, फर्स्ट एड इन आई इंजुरी, यू हैव टू क्लीन दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स विद द क्लीन वाटर। सेकेंड, डोंट रब इट। मूवमेंट, कुछ फॉरेन बॉडी चली जाती है, हमारा पहला रिएक्शन रहता है हम उसको आंख को मसलते रहते हैं, रब करते हैं। आप फॉरेन बॉडी तो निकलनी नहीं है आपसे, तो आप क्या उसको रब करते हैं? रब करते हैं तो इनडायरेक्टली आप जो फॉरेन बॉडी है पूरी कंजक्टिवा में रोल कराते हैं और उसको एब्रेजन करके उसको और रेडिश करते हैं। क्लीन इट विद द मिनिमम 20 मिनट्स एंड रश टू इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल। सेम, this is a picture we'll get in chemical injury, eye chemical injury. Again 20 मिनट्स उसको क्लीन वाटर से ये कीजिए, फ्लश कीजिए, then shift the patient to the respective hospital. This is a blunt injury over the eyelid, upper eyelid में कुछ trauma हुआ, blunt injury आई. Again, don't press it, simply apply cold application to this particular case, but don't rub, don't. And this is the way you have to apply the bandaging. Suppose right eye में है तो आप वो right eye में ही bandage कीजिए, otherwise पूरा दोनों आंखें you don't have to bandage. First aid in electrocution. काम करते करते electric shock लगा, which is very common in factories. First aid, this is a wire which patient is holding. So you don't have to be like this.
आप इमीडिएटली जाएंगे, नियर बाय स्विच ऑफ करेंगे, लकड़ी है तो लकड़ी से उसको रिमूव करेंगे. सी आई विल टेल यू, इलेक्ट्रिक शॉक में देयर इज ऑलवेज पॉइंट ऑफ एंट्री. यहाँ से करंट, हाथ से करंट गया है, ऑलवेज पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑल्सो. आप इन्वेरेबल ये पेशेंट को ध्यान से देखेंगे तो पैर से या बटक से कहाँ से एक और आपको छेद दिखेगा. हाई वोल्टेज करंट, देयर इज ऑलवेज पॉइंट ऑफ एग्जिट. यू हैव टू नोटिस दिस कि यहाँ पर एग्जिट है कि नहीं. इफ नॉट, देन टेल द रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स. This means in those patients we have to admit for 2 days in hospital. Why? Because जो current है, electric shock है, वो आपके heart के through क्रॉस हुआ है, वो आपकी किडनी के थ्रू क्रॉस हुआ है. इवेंचुअली 2 दिन हम रोज ऐसे पेशेंट का ईसीजी करते हैं. ईसीजी में कोई एरिथमियास नहीं है, कोई रिदम डिस्टर्बेंस नहीं है, और किडनी फंक्शन टेस्ट में कोई ब्लड किडनी के पैरामीटर्स रेज नहीं है, तो हम ऐसे पेशेंट को बाद में 2 दिन के बाद डिस्चार्ज करते हैं. अदरवाइज 2 दिन तक पेशेंट को हम अगर डिस्चार्ज किए तो घर में कभी भी कोलैप्स हो सकता है ये पेशेंट. हाँ सर, आ रहा है CPR, 1 मिनट. फर्स्ट एड इन हार्ट अटैक. दिस इज नॉट अ फैक्ट्री केस. दिस इज अकर इन एनीबडी, एनीवेयर, आइदर इन होम और इन योर फैक्ट्री. सी 50+, आजकल तो 45, 50+, किसी को भी मैसिव हार्ट अटैक्स वगैरह आता है. So first diagnose कैसे करेंगे? This is heart attack. Heart attack pain will always travel through a right shoulder, through a left shoulder and left arm. Always associated with sweating. Always associated, may or may not be associated with vomiting and loose motion. Heart attack pain है. Gastric pain सिर्फ gastric pain होगा. कहीं स्पाइसी फूड खा लिया रात को, वो भी हार्ट अटैक पेन से रिजेंबल करेगा. बट हार्ट अटैक में ये 3 चीजें होती है. The pain travels to your left shoulder में पेन जाएगा, लेफ्ट हाथ में पेन जाएगा. Sometimes it goes to the back and sometimes it associated with vomiting and loose motion. Heart attack nearby आपके किसी को भी आया तो you have to have these golden medicines. ये आपके घर में, ये आपके फैक्ट्री में रहना ही चाहिए. What are these medicines? Tablet aspirin 300, टैबलेट क्लोप्रोग्रिल 300 मिलीग्राम, टर्वास्टेट मिलीग्राम, स्टैट ओरल पानी से दे दो, जहां पर भी है स्टैट पानी 1 ग्लास लो, पानी से दे दो. देन टैबलेट सॉर्बिट्रेट सबलिंगुअल, जबान के नीचे एक टैबलेट दे दो. ये 4 टैबलेट आफ्टर 50 ईयर्स आपके घर में कोई है, ये रहना ही चाहिए टैबलेट. एनीवेयर, आइदर इन द फैक्ट्री ऑल्सो. करेक्ट. देन इवेंचुअली ये पेशेंट फिर हॉस्पिटल में आते हैं तो वील डू पीरियोडिकली ECG, इकोकार्डियोग्राफी एंड एंजियोग्राफी SOS एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. फर्स्ट एड इन चोकिंग. कुछ खाते खाते हम खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गया. फर्स्ट अचानक ब्रेथलेस हो गए, सांस लेने में तकलीफ, फ्लशिंग, लाल हो गया पेशेंट. उस समय क्या करेंगे फर्स्ट एड में? दिस इज फर्स्ट एड इन चोकिंग. सर आइए ना 2 मिनट इधर. तो फर्स्ट एड इन में चोकिंग, जैसे हम पीठ थपथपा के कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ अटक गया. देयर इज वन सेलिक्स मैन्योर, मैं आपको बताता हूँ. सेलिक्स मैन्योर में व्हाट वील डू, मैं आपको होल्ड कर. सेलिक्स मैन्योर में व्हाट वील डू, वील होल्ड द पेशेंट लाइक दैट. So that जैसे ही मैंने थ्रस्ट दिया, इंट्राथोरेसिक प्रेशर विल इंक्रीज एंड जो जहां से फॉरेन बॉडी गई है इट विल कम आउट. सो दीज आर द स्मॉल ट्रिक यू. सो हेलो, फर्स्ट एड इन एपिलेप्सी. फैक्ट्री में काम करते करते किसी को कन्वल्शंस आ गए, मिर्गी के अटैक्स आ गए, आप क्या करेंगे? And first things you have to do is allow the particular patient to left lateral position or right lateral position so that कि उसका जो टंग है, टंग 2 दांतों के बीच में बाइट नहीं होना चाहिए. एक ये कर सकते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन. सेकंड, आपके पास कुछ भी हैंडकरचीफ है, कुछ सॉलिड चीज है, 2 दांत के बीच में लगा दीजिए. रीजन बीइंग, वो क्यों लगाना चाहिए? बिकॉज अगर आपकी टंग बाइट हो गई तो टंग को रहता है जबरदस्त ब्लड सप्लाई.
टंग टॉरेंशियल ब्लीडिंग चालू हो जाएंगी। ब्लीडिंग, पेशेंट को कन्वल्शन आ रहा है, झटके आ रहा है और उसको ब्लीडिंग चालू हो गई तो वो ब्लीडिंग एस्पिरेट करता है, लंग्स में जाती है ब्लीडिंग, एंड दैट इज हैवॉक। केमिकल निमोनाइटिस होता है, दैट इज हैवॉक। वो कितना भी फिर हायर एंटीबायोटिक दो वो सुधरता है। तो फर्स्ट एड इन एपिलेप्सी, इंस्टेड ऑफ उसको मेनी टाइम्स आई सॉ कि उसको जूता सुंघाते हैं, उसको चप्पल सुंघाते हैं, नो, ये सब चीजें पुरानी हो गई। उसको प्याज सुंघाते हैं। दीज आर द आंसर आई एम गेटिंग इन फर्स्ट एड। आपको क्या करना है समझदारी से, आपको दोनों दांतों के बीच में कुछ ऐसे फॉरेन बॉडी डालनी है सो दैट उसकी टंग बाइट ना हो। स्विमिंग करते करते कोई डूब गया, कुछ इमीडिएटली आपको पता चला कि अभी जस्ट फ्रेश ड्राउन हुआ है, क्विकली उसको अगर निकल आता है तो उसको प्रोन पोजीशन में करो, जितना पानी निकल सकता है निकालो विद इन अ सेकेंड, एंड अगर उसकी पल्स नहीं है, उसका हार्ट नहीं है, स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर अभी नेक्स्ट सेशन अपना कामड़े सर कवर करने वाले हैं। स्टार्ट सीपीआर। थैंक यू। इसमें सर एक इसमें अपार्ट फ्रॉम जो सेफ्टी मेजर्स में मैं और एक बताना चाहूँगा कि ये इमरजेंसी आई इंजरी होती है तो इंस्टॉल आई वॉश एरियाज जहाँ पर केमिकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं या डेब्रिस जहाँ निकलते हैं, आई इंजरी जहाँ होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ आई स्टेशन इंस्टॉल कीजिए। फैक्ट्री में 3-4 जगह आई स्टेशन इंस्टॉल कीजिए। इंश्योर हाउसकीपिंग से ये इंश्योर कीजिए कि योर फ्लोर शुड बी ड्राई एंड वेट, एंड कहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो, ना तो वो वहाँ पर कोई जाके गिर गया या वेट रहेंगे तो वहाँ चांसेस ज़्यादा रहेंगे स्लिप होने के, अगेन इंजरी के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। देन वार्निंग साइंस लगाइए, जहाँ पर आपका फ्लोर वेट है, जहाँ पे केमिकल्स है, अप्लाई वार्निंग साइंस ओवर देयर। देन प्रोवाइड कट रेजिस्टेंट ग्लव्स। हेलो, में आपके सामने शेयर करूंगा। ऑन एन एवरेज 3 वर्कर्स डाई एवरी डे इन इंडिया in Indian factories due to lack of basic measures. In 2020, Labour Ministry reported that at least 6,500 employees died in factory, mines, construction sites over the period of last 5 years. In 2021, at least 429 accidents occurred in Indian manufacturing industries, resulting in more than 352 deaths and 700 injuries. Campaigners said that the most of these factory accidents occurred because inadequate or missing safety equipments, inadequate or inconsistent training to the workers, and compromised safety hazards. And the actual fatality count could be higher than when the worker is informal and contractual basis पे जो कि unreported रहते हैं. That's it. Thank you. Now the Kamade sir will cover the CPR session. How to manage frostbite. Yes. Yeah, that I have missed. Basically, frostbite, again, the patient is into the cold and chemi and hypothermic state. So, whatever the things, first aid, आपको जो वहाँ पर first aid कर सकते हैं, first of all, remove that particular person from that area. Then, if you have a blankets over there, have some musculocutaneous as stimulations. If you have a warm blankets over there, apply over it. And eventually his temperature from 19, 18, 17 degree will come down to 36 degree. But it will take time. I have seen a patient, मैं छोटे 2-2 दिन के 2-4 घंटों के बच्चों का मैं सर्जरी करवाता हूँ. I am anesthesiologist basically. आप 3 घंटे की सर्जरी के बाद बच्चे कोल्ड हो जाते हैं.
कोल्ड हो जाते हैं तो उठते नहीं है यानी अनेस्थेशिया से आउट नहीं आते हैं, तो उनका हम टेम्परेचर जब चेक करते हैं तो टेम्परेचर 24 23, तो उनको वार्म करते हैं, तो वो 23 से 36 टेम्परेचर आने में वो बच्चू 6 या 7 घंटे लेता है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग प्रोसेस। फर्स्ट बाइट के केसेस थोड़ा सा लंबे लेते हैं। सो पहले तो आप चेक कीजिए कि अगर वो फर्स्ट बाइट एरिया में, कहाँ कोल्ड एरिया में, कोई आइस एरिया फैक्ट्रीज में कोई काम करते हैं, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर वियरिंग टू पर्टिकुलर पर्सन। थैंक यू। Thank you. Good afternoon. Myself, Dr. Manohar. Actually, Dr. Ravi Gurbani sir and myself both Sir? are anesthesiologists. And 1 second. Extension to his this thing. Wait, please. First thing is, as sir asked, because in army we saw a lot of frostbite and these most common thing. फ्रॉस्टबाइट हैपन, द स्किन इज रेडी टू लूज, नोज ऐसे निकल के नीचे गिर जाता है, कान निकल के, फर्स्ट थिंग आई विल टेल हिम नॉट टू रब, एंड एज यू सेड ग्रेजुअल वार्मिंग अप टू बॉडी टेम्परेचर फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी वीक्स, एंड यू कैन क्रिएट another mistake people do is create a fireplace and put it in, because there is heat sensors are less in the skin than cold sensor, that's why we get cold injury. तो वो लोग का हाथ जल जाता है, मुंह जलता है, पैर जलता है, कभी भी फायर प्लेस के पास कोल्ड इंजरी के बाद उनको एक्सपोज नहीं करना, वार्मिंग अप एज मच एज दिस. Another thing I want to put is extension. When you have a blunt injury, we are always thinking of cut injuries, but in industries में कई बार blunt injury होता है. You hit a wall, something falls on you, but nothing looks. So when you apply a cold pack, first mistakes commonly is people apply ice directly on the skin. That can cause again frostbite. So it has to be wrapped in the cloth or plastic. And how much time to apply cold? Only up to 10 minutes. 1 minute to 10 minutes. 10 minutes के बाद क्या होगा? आपका lymphatic circulation पूरा बंद हो जाएगा, and instead of helping him, you will be causing damage. And how often you should give? Every 1 hour. For sports people, we give for 3 days. 7 to 2 hours is only cold and cold and cold. 90% of ligament, blunt injuries, musculoskeletal injuries, all will recover without much thing. When you come to the contrast bath, warm and cold, उसको भी एक gradual term use करना चाहिए. मतलब initially you use 1:1, 2:1. So by the time you increase warm finally, 3 minutes and 1 minute, alternatively 6-7 seconds, this is over 2-3 weeks. Many of the closed injuries can be handled by physical therapy of contrast bath and also the cold thing. Correct. Sorry. No, it's okay. I would like to add one more thing. Nowadays, we have a warmers. Suppose we are working in an OT and any cold atmosphere, OT जहाँ temperature है 27-26 degrees, because we want our body, in especially neuro cases, we want the temperature. In use warmers. Warmers, there is automatic temperature 36, 30, वहाँ से एक blow निकलता है around it and वो temperature maintain करता है. Similarly, the same type of warmers we can use in industries also, where the workers are used in a delicate area, workers are used in a susceptible area, जहाँ we are anticipating some force bites are there. So वहाँ पर भी warmers हम anticipated में provide कर सकते हैं. So that will also helpful. Very good. And snake also, one more, because I have rescued more than 10,000 snakes. So a big round of applause. He has rescued more than 10,000. A big round of applause for him. He is actually, if you stand quiet, no snake will bite except viper very rarely. So all Indian 4 snakes really do not bite you unless you move, because snakes को आँख नहीं है, कान नहीं है. आप हिलने से सोचता है चूहा है, तो आपको काटेगा. So in case employees should be told, many factories have a lot of snakes. When you encounter a snake, so you better don't move, it will go away. Secondly, most common thing is भागते हैं snake काटने के बाद, and that is a counterproductive, because most of the toxins will go up and he will die very very fast. तो उनको सुला के रहना चाहिए, बांध सकते locally without pressure, and don't put any cold pack, massage, or movement is the most dangerous thing. It should be taken within half an hour to the closest hospital. Many times poisonous snakes also will have dry bite. तो आदमी अच्छा ही रहता है, he must have bitten by cobra, because cobra doesn't like to waste his poison every time.
because he cannot eat a human being. Sir, He'll try to preserve. Sir, but I'll So tell thank you, but I'll tell you, one snake is in front of you, it is very difficult to stand still, you know. आप भागेंगे, unless and until किसी ने हमारा lecture attend किया और नहीं भागेंगे, it is highly impossible. थैंक यू। एक्चुअली मैं और गुरबानी सर बहुत एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और बहुत बार ये बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है वो हम लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं। यूजुअली ये ट्रेनिंग मिनिमम 1 days to 3 days चलता है, लेकिन 20 minutes में ये सब करने के लिए सर ने हमको बताया है, तो आई विल जस्ट रन थ्रू। अभी सर ने जो बताया था कि ये सब हमारे गोल है, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर जो है वो एक कड़ी से बंधे वाले हैं। जैसे सर ने बताया कि एर्गोनॉमिक्स हमको बचपन से आना चाहिए, वैसे सीपीआर जो है इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो बोलते हैं ना, लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो है ये अपने को सबको आना चाहिए, whether it is a kid, whether it is non-medical person, paramedical person, worker, तो ये हम लोग encourage करते हैं। आजू बाजू के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स जो है, वहाँ पे जाके हम लोग इसका जो है वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो मैं सभी जो हमारे रज्जू सर है और छत्तीसगढ़ का ये सोसाइटी है, उन्होंने हमको जो आज इधर मौका दिया, तो मैं सबका आभारी हूँ। पर्टिकुलरली हम लोग चाहते हैं कि जो भी कोलैप्स होता है, अपने सामने अगर कोलैप्स होता है तो उसका इवैल्यूएशन अपने को करने आना चाहिए, हाउ विल इवैल्यूएट हिम, और उसको हम लोग एक बेसिक लाइफ सपोर्ट बोले तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जब तक एक्सपर्ट सपोर्ट नहीं आता है या हम लोग एक्सपर्ट की तरफ उसको भेजने की व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक उसकी लाइफ कैसे प्रिजर्व हो जाए, उसके लिए ये जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट रहता है और ये सीपीआर रहता है। तो सर ने जैसे बोला अभी हार्ट अटैक और सडन कोलैप्स, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है ना। एक चीज़ जो है वो कार्डियक अरेस्ट है जिसके कारण सडन कोलैप्स होता है आदमी, और दूसरा जो है वो सर ने हार्ट अटैक बोला है। हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द एक रीज़न हो सकता है जिससे आदमी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। देयर इज़ अ डिफरेंस कार्डियक अरेस्ट और सडन ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या जिसको हार्ट अटैक हम लोग बोलते हैं। हार्ट अटैक क्या है, इवॉल्विंग प्रोसेस है, उसमें अपने जो दिल के जो मसल्स है उसको खून की कमी हो जाती है, उसमें पेन आना शुरू हो जाता है, और सर ने बहुत सारे उसके ये भी बोले। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या हो जाता कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो सडन रहता है और उसमें कार्डियक एक्टिविटी जो है वो सडनली बंद हो जाती है, पल्स जो है वो बंद हो जाती है, और उसमें अपने को ये बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर देना पड़ता है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज द, हम लोग जो बोलते हैं कि चेन ऑफ सर्वाइवल है ना, कि चेन ऑफ सर्वाइवल बोले तो जो अगर जो व्यक्ति अगर वो कोलैप्स होके गिरता है तो उसको एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाने तक जो भी अपने को करना पड़ता है, तो ये चेन ऑफ सर्वाइवल रहता है। वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस में रहता है। हॉस्पिटल में उसको हम लोग कोड ब्लू बोलते हैं, उसके लिए अलग टीम रहती है। लेकिन आउट ऑफ हॉस्पिटल पर्टिकुलरली जो अपने कंपनी में होता है या जो अपने इंडस्ट्रीज़ में होता है या जो रोड पे होता है या जो घर पे होता है, वहाँ पे हम लोगों को एक्सपर्ट जो एडवांस सर्विसेज है वो अवेलेबल नहीं होती है। वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो ये जो उसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसकी जो है डिफरेंट लिंक्स है। ये लिंक्स आपको जो है वो पहली लिंक जो है वो अपने को क्या करना है कि रिकॉग्नाइज करना है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है क्या। दूसरा बोले तो मदद के लिए एक जो
क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है तो हम लोग मदद के लिए कॉल करना है। सेकंड लिंक इज दैट कि हम लोगों को सीपीआर देना है। सीपीआर क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो देना है। तीसरा जो है उसका लिंक जो है वो रैपिड डिफिब्रिलेशन का है। और चौथा जो है वो एडवांस जो है वो हॉस्पिटल में उसको भेजना है। और अभी जो आता है वो आखिरी 2 कड़ियाँ जो है वो आईसीयू और कैथ लैब में होती है, वहाँ तक अपने को पेशेंट को पहुँचाना है। तो वही बेसिक लाइफ सपोर्ट है। जो हम लोगों को क्या करना है कि अर्ली रिकॉग्नाइजेशन करना है, हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट जल्दी से पहचानना है, हाई क्वालिटी सीपीआर देना है और डिफिब्रिलेशन करके उसको ट्रांसफर करना है। तो ये जल्दी क्यों करना है अपने को? अब सब लोगों को क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को ये तुरंत देना पड़ता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ जाता है वैसे वैसे कार्डियक अरेस्ट में परमानेंट डैमेज होने का, मौत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे ना पहले 4 मिनट जो रहते हैं गोल्डन मिनट, उसमें हम लोग अगर उसका ऑक्सीजनेशन अगर चालू रखते हैं तो हम लोग उसको सर्वाइवल चांसेस बढ़ाते हैं। 10 मिनट्स के ऊपर अगर वो ऑक्सीजनेशन नहीं पहुंचता है तो ब्रेन को डैमेज हो जाता है और उसका मृत्यु भी होने का शक्यता रहता है। तो अगर हम लोगों को ये शुरू करना है तो पहले क्या करते हैं कि एक ये एल्गोरिदम है, बट हम लोगों को देखना है कि सिचुएशन क्या है, कि आजू बाजू में कुछ डेंजर है क्या। जैसे कोई कैजुअलिटी होती है, रोड पे होता है या कोई आग लगी है, तो वैसे इसमें हम लोगों का खुद का पहले बचाव और उसके बाद जो है वो जो कैजुअलिटी है उसको भी हम लोगों को सेफ लेके अपने को अपने प्रोसीजर करने हैं। सेकंड जो रहता है उसका जो रहता है रिस्पांस चेक करना पड़ता है कि वेदर इट इज कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। फिर एयरवे और ब्रीदिंग है ना, ये जो है वो हम लोगों को जो कैजुअलिटी के सीन रहते हैं, जैसे सेफ प्लेस है या जिम में कहाँ पे हो गया या ट्रेन एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, तो हम लोगों को उसको सेफली प्लेस करके अपने को ये करना पड़ता है। फिर चेक द रिस्पांस करते हैं हम लोग। फिर हेल्प के लिए करते हैं और 108 इज एम्बुलेंस नंबर, और चेक पल्स, ब्रीथ एंड स्टार्ट कंप्रेशन करते हैं। तो रिस्पांस कैसे देखते हैं? रिस्पांस इज जस्ट टू सी द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो उसके लिए ये जो है उसको आप पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, उसको टैप करते हैं और उसको स्क्वीज करके देखते हैं कि वेदर इट इज रिस्पॉन्सिव और नॉट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे अपने को देखना है कि उसका सर्कुलेशन चालू है क्या नहीं, सर्कुलेशन चालू है या हार्ट चालू है कि नहीं, ये देखने के लिए अपने को पल्स देखना पड़ेगा। और पल्स कहाँ देख सकते हैं? तो एक कैरोटिड पल्स इज वेरी प्रोमिनेंट पल्स। जो पल्स है वो जल्दी अपने को मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? ये जो है इसको जो एडम्स एप्पल बोलते हैं, कंठ जो है वहाँ से हम लोग अगर दाहिनी तरफ या बाजू दूसरे बाजू में अगर चले जाते हैं तो हम लोगों को वो पल्स मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड पल्स। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। तो उसके लिए कैरोटिड पल्स अगर चालू है तो उसका सर्कुलेशन शुरू है, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसका हार्ट में ये बंद है। फिर दूसरा रहता है एयरवे, उसका देखना पड़ता है अपने को। तो ब्रीदिंग बहुत बार अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, ये टंग फॉल हो जाता है। जैसे ना वो ब्रीद हो गया, उसका स्नायु सब शिथिल हो जाते हैं तो टंग का स्नायु भी शिथिल हो जाता है और वो एयरवे ब्लॉक करता है। तो एयरवे शुरू करने के लिए अपने को उसका जो है वो ब्लॉक्ड एयरवे हेड अपने को टिल्ट करके उसका एयरवे ओपन करना पड़ता है ना। उसको हेड टिल्ट बोलते हैं और लिफ्टिंग द चीन बोलते हैं। और CAB पहले सर्कुलेशन देखा, फिर एयरवे देखा और फिर ये रहता है रेस्पिरेशन, उसको देखना है। हम लोगों को उसकी सांस चल रही है क्या नहीं वो देखना पड़ता है। तो लुक, लिसन एंड फील बोले तो
हम क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली 1 सेकंड में देखना है हमको कि उसका सांस चल रहा है क्या। हम उसकी चेस्ट मूवमेंट देख सकते हैं, उसका एयर का जो फ्लो है वो सुन सकते हैं, या फिर उंगली से वो उसका सांस चल रहा है क्या नहीं वो देख सकते हैं। तो सेम ही है ये। तो ये 3 जो कड़ियाँ है वो अपने को देखना है सीपीआर के लिए। फर्स्ट इज कंप्रेशन देना है, एयरवे देखना है और ब्रीदिंग देखना है बस। तो सीपीआर बहुत इजी है, सिर्फ अपने को ये आना चाहिए कि पेशेंट का नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू है या नहीं है। पहली सिचुएशन है उसका ब्रीदिंग चालू है एंड उसका कैरोटिड पल्स भी है, सिर्फ वो अनकॉन्शियस है, तो उसमें रिकवरी पोजीशन में अपने को देना है और उसके बाद में उसको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में भेजना है। एबनॉर्मल या नो ब्रीदिंग है तो उसको ब्रीथ देना है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है। और अगर एबनॉर्मल ब्रीदिंग भी है और उसका हार्ट भी बंद है तो हम लोगों को सीपीआर देना है। सीपीआर देना है बोले तो चेस्ट कंप्रेशन देना है और रेस्क्यू ब्रीथ भी देना है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन अपन देखते हैं कि पेशेंट कोलैप्स हुआ है लेकिन उसका ब्रीदिंग चल रहा है एंड उसका पल्स भी है, सिर्फ उसको जो है वो अनकॉन्शियस है। तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब तक एक्सपर्ट ये सर्विसेज अपने को अवेलेबल नहीं होती है तब तक अपने को वो एक नेचुरल पोजीशन रहती है, उसको हम लैटरल पोजीशन बोलते हैं, वो पोजीशन में अपने को उसको रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको लैटरल पोजीशन में लेते हैं और ये जो है उसका हैंड जो है वो चीन के नीचे रख के उसको एयरवे ओपन करके रखते हैं। सेकंड पोजीशन कि एबनॉर्मल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग अगर बंद होता है या एबनॉर्मल होती है और कैरोटिड पल्स उसकी चालू रहती है, तो ऐसे इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, सिर्फ ब्रीदिंग देना पड़ता है, उसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग। तो ये कैसे देना है, रेस्क्यू ब्रीदिंग देते वक्त अपने को कितना देना है, हम लोगों को 1 सेकंड तक देना है। 1 सेकंड इसके लिए बोलते हैं कि ब्रीथ इन जो है वो आधा सेकंड देते हैं और फिर सांस वापस भी आना चाहिए, इसके लिए आधा सेकंड। तो टेक 1 सेकंड पूरा लेना है, नोज को बंद करना है और रेस्क्यू ब्रीथ देना है। ऐसे 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। हम लोग मास्क जो रहता है पॉकेट मास्क से भी दे सकते हैं या फिर एक अम्बू बैग बोल के हमारे यहाँ पे रहता है, वो फर्स्ट एड किट में हम रख के उसको दे सकते हैं। और थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जो रहता है उसमें हम लोगों के पास अगर एबनॉर्मल ब्रीदिंग भी है और कैरोटिड पल्स भी नहीं लग रहा है तो अपने को चेस्ट कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ भी देना है। तो चेस्ट कंप्रेशन कहाँ देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन अपने को देना है सेंटर ऑफ चेस्ट में देते हैं, है ना। तो चेस्ट कंप्रेशन ऑलवेज अपने को सेंटर ऑफ चेस्ट में देना है। बहुत बार अपने को बताया जाता है कि हार्ट अपना लेफ्ट साइड को है तो लेफ्ट साइड को देना है, तो उसकी पोजीशन जो है वो सेंटर में है। और जो क्वालिटी सीपीआर के लिए अपने को जो है वो उसका रेट जो रखना है 100 to 120 पर मिनट, इतना ज़्यादा। उसके लिए बोलते हैं पुश फास्ट एंड पुश हार्ड। हार्ड पुश हार्ड ये जो है उसकी डेप्थ जो रहती है 5 to 6 सेंटीमीटर रहती है और हर कंप्रेशन के बाद अपने को उसका जो नॉर्मल पोजीशन है तब तक उसको रिकॉइल होने देना है। तो ये जो स्टेप है ये क्वालिटी सीपीआर ये अपने को ध्यान में रखना है और ऐसा अपने को सीपीआर स्टार्ट करना है। CPR will be started, that is compression for 30 compression और 2 rescue breath अपने को देना है। सेंटर ऑफ चेस्ट तो है ही, लेकिन सामने अपने यहाँ पे जो बोन रहता है, बोन जो स्टर्नम जो बोलते हैं, उसके लोअर एंड पे अपना हाथ रखते हैं और वो हाथ कैसा, ये सेंटर का जो बोन है उसका लोअर एंड से दो फिंगर जो है वो ऊपर, ये हैंड का पोजीशन है,
वहाँ पे रख के अपने को कंप्रेशंस देना है। और हैंड की पोजीशन जो है वो इंटरलॉकिंग रहेगी। इंटरलॉकिंग इसके लिए, अगर हम लोग इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं तो हाथ फिसलने का संभावना रहता है। अपने को 100 to 120 बीट्स पर मिनट से उसको कंप्रेस करना है, तो उसके लिए ये अपने को इंटरलॉकिंग पोजीशन से देना है। एंड ये रहेगी चेस्ट कंप्रेशन की पोजीशन। हम लोगों को जो है वो पेशेंट के साइड को रहना है, और अपना जो है नी में बेंड होके पूरा जो अपना अपर बॉडी का वेट जो है वो रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हैंड जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, सो दैट जो अपर बॉडी जो है वो अपने को अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक में मदद करेगा। तो हाई क्वालिटी सपोर्ट, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। पुश फास्ट इज 100 या 120 पर मिनट की स्पीड से देना है। एंड कंप्रेशन का डेप्थ जो है वो 5 to 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, दैट इज पुश हार्ड। और मिनिमम उसमें इंटरप्शन होने चाहिए। तो दिस इज हाउ वी नीड टू परफॉर्म द CPR। मैं थोड़ा सा फास्ट किया हूँ। सिर्फ मैं सर गुरबानी सर से एक बार विनंती करता हूँ कि वो सिर्फ जस्ट हमको डेमोन्स्ट्रेट कर दे। सी फर्स्ट ABC याद रखना है आपको। A एयरवे, B ब्रीदिंग, C कंप्रेशन। A एयरवे आपको ओपन करना है। A एयरवे ओपन कैसे करेंगे? जस्ट लिफ्ट द चिन, राइट? लिफ्ट चिन किए आपने, जैसे लिफ्ट चिन किया आपकी टंग साइड हो गई। अब आपको A हो गया, B देना है। एयरवे यानी मुंह से लेके लंग्स के एंट्री तक की जगह को एयरवे बोलते हैं। दैट हैज टू बी क्लियर। आपने ये चिन लिफ्ट करके एयरवे ओपन किए। नाउ B ब्रीदिंग, नोज क्लिंच करेंगे, गिव टू ब्रीथ, 1 2। ब्रीथ देते समय यू हैव टू सी द चेस्ट इज एक्सपैंडिंग। 400 से 500 ml का ब्रीथ देना है, सो दैट चेस्ट आपकी ऊपर आ रही है। B आपका सक्सेसफुल हो गया। देन C कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन। 30 कंप्रेशन इन प्रॉपर 4 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी नीचे प्रेस होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर चेस्ट नीचे नहीं प्रेस हुई तो आपका हार्ट हिट ही नहीं होगा। दैट इज इफेक्टिव कंप्रेशन। ABC आपका पेशेंट रिवाइव होता। आई विल टेल यू, अगर फ्रेश डेथ होती है तो आपका पेशेंट रिवाइव होता है। बाय द टाइम 30-40 मिनट्स आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, देन द हॉस्पिटल में पेशेंट डॉक्टर्स विल टेक केयर, उनको इंजेक्शंस वेंटी पे डाल के वो सर्वाइव करवा लेते हैं। लेकिन आपने इफेक्टिव CPR नहीं दिया तो पेशेंट आपका आता ही नहीं। एयरवे ओपन नहीं की, प्रॉपर 2 ब्रीथ, ऐसे ब्रीथ देते समय आपने चेस्ट देखी ऊपर नहीं उठ रही है, तो that is not effective breathing. Then C compression. Compression, you never ever give compression like this. You have to come exactly on the top of the patient, like this. Just आप top of patient के ऊपर आएंगे तो आपको ज़्यादा efforts भी नहीं लगेंगे. Just you have to do this. और अगर आप ऐसे देंगे तो you have to struggle करना पड़ेगा। ये 3 अगर आपने प्रॉपर दिए, पेशेंट आपका उठता है। एंड ये कंडीशन में आपको भले पल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन पेशेंट का BP 50-60 होते रहता है। एंड 50-60 BP इज सफिशिएंट इनफ टू सप्लाई द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक किडनी, लाइक स्प्लीन, लाइक पेरिफेरल लेग्स, ब्रेन। उसमें रिवाइव होता है, इसमें इरिवर्सिबल डैमेज होता है, तो वो सफिशिएंट है। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव CPR। एक बार इफेक्टिव CPR दिए, लाइक दिस लेडी इज डूइंग, देन पेशेंट शिफ्ट किए, बचता है पेशेंट आपका फ्रेश। बच्चे तो इतने ससेप्टेबल रहते हैं, बच्चे को एक ब्रेथ दो, 60% सेचुरेशन से 99 आ जाता है। बच्चे के लंग इतने कंप्लायंस रहते हैं, लंग इतने ससेप्टेबल रहते हैं, 1 या 2 ब्रेथ दो, पेशेंट का सेचुरेशन ऑक्सीजन की मात्रा 99 आ जाती है। सो सर ने जैसे कहा कि इफेक्टिव CPR इज मस्ट एंड कंपलसरी। एक बार आपने वो दिए, देन वंस द पेशेंट विल रीच टू द हॉस्पिटल, विल पुट हिम ऑन द वेंटिलेटर, विल पुट हिम ऑन द आइनोट्रॉप्स, ब्लड इंक्रीज करने की हम दवाइयाँ देते हैं। इवेंचुअली पेशेंट आ जाता है, तब तक आ जाता है जब तक उसका ब्रेन डैमेज ना हो। हाउ विल यू जज ब्रेन डैमेज हो गया है? पेशेंट की जो आंखें रहती है, आंखों के अंदर एक छोटा सा राउंड रहता है, पिपल बोलते हैं। पिपल विल बिकम फिक्स एंड डायलेटेड।
प्यूपिल अगर फिक्स एंड डायलेट हो गई तो आप समझ लो पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो गया, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिससिटेशन। ये एक द मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है कार्डियक अरेस्ट का, कोलैप्स होने का जो रहता है उसको फिब्रिलेशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स, जो मोस्ट कॉमन कॉज इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड सम टैकीकार्डियास। हम लोगों ने कितना भी चेस्ट कंप्रेशन दिया, सीपीआर दिया, तो भी उसमें रिवाइव होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उसको रिवाइव करने के लिए एक शॉक देना पड़ता है। उसको शॉकेबल रिदम हम लोग बोलते हैं। तो वो शॉक देने के लिए एक मशीन रहता है जो ऑटोमेटिकली जो रिदम जो है वो एनालाइज करता है, और वो एनालाइज करके अगर वो शॉक देने की ज़रूरत है तो वो प्रॉम्प्ट करता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ना। हॉस्पिटल में रहा तो जो रहता है वो मैनुअल डिफिब्रिलेटर रहता है। हम लोग ईसीजी या मॉनिटर को देख के उसको शॉक देना है या नहीं ये डिसाइड करते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटेड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर जगह पे होना चाहिए। आजकल हम इंडस्ट्रीज़ में रखते हैं, बहुत बार एयरपोर्ट्स पे है, बस डिपोज पे है, स्कूल में रखना ज़रूरी है, या बड़े बड़े मॉल्स में रखा जा रहा है। तो एईडी इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये जो है वो एनालाइज करता है रिदम शॉकेबल है या नहीं। तो इसको अगर किसी को शॉक देने की ज़रूरत है तो वो प्रॉम्प्ट करता है, अकॉर्डिंगली हम लोगों को सिर्फ एक बटन प्रेस करके शॉक डिलीवर करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीआर। तो एडी जो रहता है वो जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो वो अपने को प्रॉम्प्ट करता है, इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाने के वो भी उसके पिक्चर्स दिखाए वाले हैं। उस तरह से अपने को वो एडी कनेक्ट करना है और उसका जो सीक्वेंस है वो अपने को फॉलो करना है। एईडी ऑन करने के लिए बोलते हैं। फिर सिर्फ अपने को यही है कि अगर वो जब मशीन एनालाइज करती है तब अपने को विक्टिम से दूर जाना है, और जब वो शॉक देने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं तो हम लोगों को स्टैंड क्लियर ऑफ पेशेंट एंड उसको डिलीवर करना है। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा। एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हम तब यूज़ करते हैं जब आपने सीपीआर दिया, सीपीआर देते देते आपकी पल्स आ गई। नॉर्मली 60 to 120 लेके चलो नॉर्मल पल्स है, बट आपकी पल्स आ गई 200 300 पल्स। आप सीपीआर दे रहे हैं, सीपीआर देते तो 200 पल्स आ गई। 200 पल्स में भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है बॉडी में, करेक्ट? बिकॉज हार्ट में ब्लड भरने के पहले ही हार्ट पंप करता है, तो ब्लड पहुंचेगा कैसा पेरिफेरल बॉडी में? वो कंडीशन में हम डिफिब्रिलेशन कर दें, सो दैट heart rate will come down to 80 to 90, 80 to 100. Yes. Correct. हाँ. एक आदमी इंडिविजुअल जब ये आता है, देखो अगर पहले तो आप सपोर्ट के लिए कॉल करो, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इंडिविजुअल आदमी भी कर सकता है। हाँ, इंडिविजुअल आदमी मेरे सामने, सपोज माय क्लोज रिलेटिव इज डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? मैं हेल्प कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं, उस समय मुझे ABC याद रखना है। ए मेरे को वो हुस ओवर में भी माय अंकल, माय वॉट एवर, विक्टिम जिसको हार्ट अटैक आया, जिसको जो कोलैप्स हुआ है, वो अकेला है। उस समय पे क्या पोजीशन रहेगा, उसके लिए कुछ सलाह है तो दे सकते हैं। नो नो नो, ही इज सेइंग विक्टिम इज अलोन। सर ये मूवी में ही होता है सर, विक्टिम अलोंग, विक्टिम अलोन ओनली। हाँ, उस केस में क्या सर्वाइवल का कोई उपाय है, कुछ गुप्तगू हो? नहीं सर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग चीज़ है।
हम लोग जो सीपीआर देते हैं वो कोलैप्स पेशेंट को देते हैं या कोलैप्स व्यक्ति को देते हैं जो यूजुअली अनकॉन्शियस रहता है, सेमी कॉन्शियस रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो खुद कुछ कर सके। आप जो बोल रहे हैं अगर हार्ट अटैक आता है जिसमें दिल को खून की कमी होती है तो उसमें चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे इसमें जो है वो सर ने 3-4 गोलियां बताई है, तो वो गोलियां लेना ही सबसे बेस्ट फर्स्ट एड है। दूसरा जो है उसमें पैनिक नहीं होना है। तीसरा जो है वो आप लाई डाउन करके रह सकते हैं, क्योंकि सॉर्बिट्रेट नाम की जो गोली जो रहती है उससे हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो आप लाई डाउन करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इसका मतलब है अपने को एक मैंने टैबलेट रखना पड़ेगा। या टैबलेट आइडियली रखना ही चाहिए। आफ्टर 50 एवरीबडी सी दिस इज अ कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नाउअडेज। एवरीबडी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। सैटरडे संडे लोग रोज बाहर जाते हैं, दे विल हैविंग मल्टीपल हैबिट्स। सो इन दैट केस आफ्टर 30 ऑनवर्ड्स सो आपको ये लाइफस्टाइल के लिए रेडी रहना ही है इवेंचुअली, और ये चीज़ें आपको घर पे रखना ही है। नॉट ओनली इन होम बट बिगर स्केल, जहाँ पर मास स्केल पे काम होता है वहाँ पर भी रखेंगे तो अच्छी चीज़ है। थैंक यू फॉर यू। थैंक यू। So, ladies and gentlemen, moving ahead, first of all, we have two special guests among us. We welcome Dr. Monica Sethi Sharma, Vice Chancellor of KK Modi University of. Hey, check. Okay. Moving ahead, we also welcome Shri Anil Nachurani, sir. A very warm welcome to you, sir. साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मोनिका मैम एंड अनिल सर प्लीज़ हमें ऑन स्टेज ज्वाइन करेंगे टू फेलिसिटेट स्पीकर्स। मैं चाहूँगी आप सभी थोड़ी सी तालियों के साथ हमारे गेस्ट का स्वागत करें।
Also, once again, we welcome our guest. हम हमारे गेस्ट का स्वागत Thank you so much. I would request you all to be seated. Without any further delay, we are all set for the next session. I would request you, sir, to please conclude this session, if possible, in the next 15 to 20 minutes. And the topic is occupational and lifestyle disease in industry and its management. So let's welcome him. Let's welcome Dr. S.K. Haldar, sir, with a round of applause, everyone. आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत. Raju sir, for inviting me here to deliver a talk, and that is on industrial health and its hazards. चलो चलो आया नहीं था. Field, I am about 35 years. I work slide change नहीं हो रहा है क्या? So this film was taken from on Foundry during a silicosis study. Two biggest study organized in our DG Firstly organizations in their total life stay, and one is the silicosis study as per the Supreme Court's order, and second one is the study on asbestosis. And both the cases I was the chairperson. And in these particular organizations, in any organizations in industry, the organizational development, there is a particular term that is TQM, Total Quality Management. We are dealing with three quality. Quality, we are looking after three quality. First is the quality, second one is the machine quality, and third one is the human quality.
I am 35 years in this particular field with human quality. To maintain the human quality, and industry three parts are very, very important. One is the occupational health, occupational environment, and occupational disease. All are interrelated. There is a time constraint, that is why I am not giving in details. And this is the definition of occupational health. And you can say whatever the health we are maintaining during our occupation is the occupational health. So these are the two definitions of occupational health. First one is very, very important, it is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of the workers in all occupations. Second one is the occupational environment. What is occupational environment? It is the external condition and influences prevail at the place of work and which has a direct and or indirect effect on the health of our working population. Means wherever we are working, that is the occupational environment. And what is occupational disease? The disease which arises out or in course of occupation is the occupational disease. So these three things are very, very important and interrelated. So these are definition of occupational disease. Now, in occupational setup, this is the study of WHO and ILO. What are the mostly occurring disease in industries? Skin disease is the mostly occurring disease in industries. List is occupational. This in between musculoskeletal disease, nervous system disease, respiratory. These are the broad heading of the occupational diseases in industries. Occupational diseases are very, very important, and it is not just like the public health disorder. Public health disorder is very, very easy to diagnose, but occupational disease is very difficult. Because first thing is that the trained doctor on building should be there, faculty assistants should be there, their areas should be there, and the hostel facilities. These are the requirements. It is available in the website. Now it is very difficult to diagnose occupational disease, not just like the public health related disease. You see, when the disease of occupational health, it is happening at the beginning of the disease, even the victim, he cannot understand that he is suffering from the disease. Like here, danger, the early stage, danger they cannot recognize, but when it is advanced stage, they will say something is happening. That is very, very difficult to treat. And what will happen ultimately, it is the burden of the person concerned, burden of the family, burden of the industries, burden of the nations, because treatment is possible but very difficult. Why it is very, very difficult to diagnose? You see, silicosis and tuberculosis, the practitioners, those who have no idea about the occupational disease, like the silicosis, they will say it is the tuberculosis. This is an example. Now the main aspect is how the occupational disease will develop. If there are some hazards in the industry and the victims, the workers are there, if there is some interaction between the hazards and the victim, then there will be the
disease. First interaction is the workout versus physical, chemical, and biological agents. Second is the workout versus machines, tools, housekeeping. Third is the workout versus workers. And it is happening, then there will be hazards according to that physical, chemical, biological, mechanical, and psychosocial. These particular hazards, if it is a physical hazard, heat is the most important hazards under the physical hazards. So there may be these are molten metal industries. Whatever the film I showed, that is the molten metal industry. Actually, it is the foundry. But that was the copper melting was happening. And it is also the metal, molten metal industries. So heat effects may be so many. The main effects is the burn, heat exhaustion, heat cramp, heat syncope, heat hyperpyrexia, heat stroke. These are the things we are facing day to day in the industries. So this is the heat cramps, mainly the calf muscles, particularly it is happening due to the loss of salt. Salt loss through the sweating. This muscle cramp is there. There may be prickly head. There may be, I am just little bit hurry. So this is a very atypical development. The persons working in front of the boiler may develop the permanent depigmentations known as the erythema ab igni. Heat stroke. Then cold injury. Some question came in the previous speakers' sessions. What should be the treatment of the frostbite? So frostbite, if there may be the cold exposure may be of two types. One is the local effect, and is the generalized effect. If it's the local effect is there may be, if it's the freezing temperature, means it is the, it can produce the ice that can produce the frost nip, frostbite, or frostbite may be of two types, superficial and deep. But most dangerous frostbite is the freeze-thaw refreeze injury. Thawing means if you enter your hand in the deep freeze, the fluid will be solidified, make it out, it will be liquefied again. That is the thawing. And it is happening repeatedly, so it is very dangerous, and the treatment of choice is the amputation. This is the frostbite. Then is the vibration, drilling, pneumatic tools. These are the drilling. It may be of the hand-arm vibrations. When it is coming through the hand, it is the hand-arm vibrations. When it is going throughout the body, then it is the bus driver, that the whole body vibrations. So if it is the drilling, that can produce the white finger, very, very peculiar. Then is coming the noise is very important aspects in the industries. So noise is can produce the noise-induced hearing loss, NIHL. So these are the audiometric graph we can get in the audiometric test. And audiometric test, before that you will have to do the environmental noise measurement that is possible by this noise level meter. And regular audiometric, within the audiometric booth we will have to do the audiometric test. These are the PP in noise area, ear muff or ear plug we will have to use to reduce the effect. Then coming to the non-ionizing radiations, that is your UV rays, visible rays, infrared, microwave, and radio frequency. These are the sun rays or the UV rays. It is coming and can develop. This is the sunburn. So these are the development of your non-ionizing radiations. The welding is very, very important. Welding in confined space is very, very important. Can give rise to disease known as the archi, can give rise to disease known as the metal fumes fever. Then coming to the ionizing radiations, alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic rays can give rise to somatic effect, means systemic effects, or it can give rise to genetic effects. Gene will be affected. So if it is so, one example I am giving, you see this is the ionizing burn to be treated as the 3rd degree burn. Then coming to the barometric pressures, high atmospheric pressure or low atmospheric pressure. In the
in the a diver going to the bottom of the sea, they may develop some disease, very peculiar disease. Previously, this particular disease and the aviation industries, they are also low barometric pressures. Both are very, very dangerous. They may suffer lung collapse in the high altitude. These are low barometric pressures can produce this type of disorders. This is very peculiar. Pressure and friction in industry can give rise to the callositis and unsuitable safety shoe. The workers refuse to wear the safety shoe because of their unsuitability, can produce the corn. This side is the corn. This is your physical hazards. Chemical is a big chapter. Chemical may be of dust, it may be due to the metals, it may be due to the gas, it may be solvent, or it may be the chemicals. These are the divisions of the chemical agents. The person is doing the almirah painting by the isocyanate, and in the beginning the room is ill ventilated, but after some hours they see the mist of the isocyanate and ultimately will suffer from the disease known as occupational asthma. Occupational lung disease is usually it is some industry, the workers they are suffering and showing some occupational lung disease. This is the asbestos. The primitive method, the persons that are handling the asbestos fiber, ultimately you will develop the asbestosis. Right side is the asbestosis. This is the asbestos fiber can give rise to lung cancer. Left side it is the lung cancer, and right side it is the more than the lung cancer. It is more dangerous than the lung cancer. When its longevity is less than the lung cancer, that is your mesothelioma. Mesothelioma is a very, very dangerous disorder or disease due to asbestos dust in fiber inhalations. Silicosis is the stone breaking units. This is the silicosis. My study in a particular state, this is the silicosis study. You see the result, 83 workers, 12 suffering from the silicosis. And your prevalence rate is 14.45. So this is the silicosis of that particular state. Coal workers pneumoconiosis can give rise to, this coal workers, inhalation of coal dust can give rise to coal workers pneumoconiosis. This is the lead battery industry, organic or organic. Lead may be two types, organic or inorganic. Inorganic lead can give rise to this wrist drop. The person cannot raise the drip after some years. Similarly, food drop due to the inorganic lead. Lead oxide is the most toxic. Lead chromate is the least toxic. This is the chrome hole. Means it can give rise to gypsy just like a hole. This is the nickel. Nickel, some ornaments can be coated with the nickel. Ultimately, there will be a rash, itching. That is the nickel rash or nickel itch. This is the fire hazards. Is very, very important. It is common in industries. You should have to remember, I am giving it here because of only one thing. Fire hazards, there may be of 400 type of toxic agents can generate in a particular modern room. If in this room there is a fire hazard, 400 type of toxic agents can be generated besides heat. Within these three are very, very important. Two is known, that is carbon monoxide and cyanide. And third one is not usually it is the dangerous, but in this case it will be dangerous, that is the carbon dioxide. Why it is dangerous, carbon dioxide in these situations? Because when we are inhaling carbon dioxide along with cyanide and carbon monoxide, carbon dioxide will go to the brain and our respiration rate will be increased. Normally it is 16 about, and it will be more or less double, 35, 36. So in a unit time, the total inhalation of CO and HCN will be double. So it is indirectly helping the toxicity of CO and HCN. And that you should remember, though we are using this fire extinguisher, the CO2 is using as a fire extinguishers. But this thing you should remember, carbon dioxide also dangerous in these particular situations. Then biological hazards, the snake bite in industry, it is the biological hazards.
And this is the biological hazards. This is the anthrax. It is in the carpet industry. It is happening from the wool of the sheep. Then mechanical hazards. Any accident or injury is the mechanical hazards, can give rise to two type of factors responsible. One is the environmental factors, if heat is more, accident more. If the machine guard is not there, accident is more. Like the similar way, human factor is also very, very responsible. And human factor, physical, physiological, and psychological. Physical means the person is color blind. He cannot see the green signal or red signal. If it is so, he is unable, he is not be a bus driver or truck driver or crane operator. So that then the accident will be more. This is the physical inability. Other mechanical hazards, the eye injury in industries. These are the study of DG firstly. They have given, these are the flying object, mainly 80% eye hazards. And that is why in industry, some chemical industry, they need, or as per the statute, they should have the fountain. And for chemical burns, they should have the safety shower. So safety shower and fountain is the must in chemical industries. So this is the some ergonomical already given if we are standing postures, the gravity is passing through the body, there will be no hazards. When we are in the tilting mode and carrying the load, and the point of gravity, point of strain will go to the back, so back pain is the outcome. So that is why this ergonomical posture should be correct. Fatigue is very, very important in industries. So fatigue should be controlled, and this fatigue may be of the physiological, it may be of behavioral, it may be of psychological. So these are the things in case of fatigue. Weightlifting. So weightlifting, there is a international regulations of weightlifting. What is the international weightlifting regulations? They have given that a person in the industry is carrying the load, unlimited load. So we have a allowable weight load. That allowable weight load and your load, whatever your unlimited load you are carrying. So that difference should not be more than 1. And that is the lifting index. That is given by ACGIH. Oh, that is the 1%, 1%, it should not be more than 1%. Means the allowable weight load they have given it is your 23 kg or 51 pound. In airport, it is like this. In 23 kg, they are usually taking, and in the America or Western country, they have taken this particular weight load carrying capacity as per statute. And persons who are not fit cannot be given the job which requires fitness, and we are usually testing the worker is fit for the particular job by the Harvard step test. This is the Harvard step test. There is a score. If this score is suitable for the particular persons, then we are allowing the person to that particular job. Nowadays, in the football play also, players are facing this particular test. That is the Harvard step test. Now, psychosocial hazards, that is very, very important in nowadays. Now, that is maybe of the two types, and the psychological and the psychosomatic. What is psychological? The person's industrial neurosis or alcoholism, drug abuse, that is when the behavioral change will be changed. Person's behavior will be changed, that is the psychological. Psychosomatic, when the systemic change is there. The person has been given a letter by a boss and asked to open it at home. At home, he opened the letter and it is the transfer order. And transfer order given to the remote area. That night, there is a sleeplessness night, high blood pressure, peptic ulcer. This is the psychosomatic effect. 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 This is the psychosomatic effect.
Two term is very, very important in industries. It is uncommon. One is the absenteeism, another is the presentism. What is absenteeism? Absenteeism means person is not coming to the duty. What is presentism? Presentism means person is coming to the duty but without doing any work. That is the presentism. That is the night work. Night shift duty is some hazards are there in the night shift duty. Loss of sleep, poor quality of the sleep like this, low physical working capacity, low productivity. So many things are there in the shift duty. So these are the things, and these are the preventive measures. These are the four preventive measures are there. And these are the, you will have to take history, you will have to do medical examinations, you will have to, it is very, very important. I got it from one industry. The record keeping, file, one by one file, just like a picture. If one file is missing, picture will be disrupted. So that something is missing. So then that is the occupational health service center should be there. Occupational health audit, it is very, very new. Western country, it came in the 19th century, 1991, 92. In India, it came 2002 or 3 like this. Then this is the work environment monitoring. This is the ergonomical intervention. Person is doing the work by tilting position. If we are giving a toe space, the same work the persons can do by erect posture. So this, it is the mechanized cement industry, is the manual. This is the sandblasting, and this is the modified sandblasting. No dust is there. This is the wet method. This is the local exhaust ventilation. This is the vacuum cleaning. This is the use of PP in welding. Lifestyle disease. I am just finishing lifestyle disease. There may be hypertension or high cholesterol, fitness reduction, smoking or other substance abuse, stress, obesity, sexually transmitted diseases. That should be the health promotion program. Hypertensions, you should have to take some steps. Like hypertension, you will have to do some stress reduction. You should have to do weight reductions, fitness. Then cholesterol will be automatically reduced. Then your increased fitness, you will have to do stress and depression reduction, some exercise. Like then exercise program can produce the fitness, and fitness will ultimately give in 3 ways the productivity. Fitness will give you the productivity in 3 ways. And this is the fitness program in industries. These are the smoking cessation program. These are the 23 your ingredients in the smoking, cigarette smoking. There are 23 ingredients. So that can give rise to harm. So this is the things. This is the passive smoking. Very, very important, just like the active smoking. This is the smoking can produce some carcinogen. This is the smoking control program in industry should be there. This is the electronic or cigarette electronic or e-cigarette, also very, very important. This is the e-cigarette nowadays. And this is the other substance. Alcohol is very, very important. And alcohol, mainly the alcohol testing on questionnaires is there. That is very, very important. You can early stage you can detect. This is the alcohol. WHO has produced this one. The fast alcohol screening test. Some questionnaires are there. You can detect the person is alcoholic or not. And this is the occupational stress reductions. So occupational well accepted technique. These are the stress reduction technique. This is the yoga or the exercise. These are the program we are doing. This is the nutrition program. This is the nutrition you should have not to take at a time, means lunch, 100% food I am taking, that should not be there. It should be lunch, how much, then dinner, how much, breakfast, how much, then what should be the protein, what should be the fat, what should be like this. Obesity should be controlled like this manner. And this obesity should be controlled. Otherwise, if you are taking unlimited food, it will be converted into fat in the body. And these are the obesity can produce. These are the disorders obesity can produce, starting from hypertension to the flat feet also. Then varicose vein. This is the measurement whether you are obese or normal. This is the thing you will have to do, BMI measurement.
that you should have to do. And this is your ILO has given instruction in industry how to control AIDS. If the person is suffering from the AIDS, how they should be tackled. Everything given by ILO. And these are the 3 books I published in my life. And first book, it is Occupational Health and Hygiene in Industry. It is the first edition. Second book is the Industrial and Occupational Health. It is the second edition. First edition came in 2017. Edition it came in the 24 this year. And third one is MCQ, second edition. Previous 21, second edition is 23. It is 5,500 multiple choice question with answer. Thank you. If you have any question, you can ask me the question if time permits. Hello. Thank you so much, sir. So right after this very wonderful presentation on occupational and lifestyle disease in industry and its management, up next I would like to invite, मैं request करना चाहूँगी from Sanjay sir to please join and to please felicitate Dr. S.K. Haldar sir. Once again, thank you so much, sir, for a very wonderful presentation. So can we have a round of applause, everyone? Also, we would like to welcome Professor Dr. R. Sridhar, sir. He's the Vice Chancellor from Kalinga University. Would also please join us. So we welcome our guest of the day. We welcome Dr. R. Sridhar, sir. He's the Vice Chancellor from Kalinga University. A very warm check. I would also be requesting Sanjay sir and Raju sir. Hey, check. So I would also request both of you to please welcome Sridhar sir. So moving ahead, hello. Yes, once again we welcome our guest of the day. Moving ahead, our next presentation is on Hey. For this presentation, I would like to call upon Shri Dilip Mohanty sir, HR Corporate Head from NICO, and the topic is once again is not about HR. So we नमस्कार, जयस्वाल निको परिवार के तरफ से आज इस संगोष्ठी में आए हुए सब अतिथि बाहर से आए सज्जनों को मैं छत्तीसगढ़ के तरफ से, मेरे कंपनी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आदेश मिला है कि पीपल आर वेरी डेस्परेट दैट प्रोग्राम शुड गेट फिनिश्ड अर्ली। आई हैड प्रेजेंटेशंस ऑन द टॉपिक HR इज नॉट अबाउट HR, बट ये सब्जेक्ट में आई थिंक इट कैन क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। लोगों में मालूम होगा कि भाई HR नहीं है तो मैं बोलूँगा क्या, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू सब्जेक्ट टू दिस ऑडियंस बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है इसके बारे में सभी को जानकारी है। हमारे जो पिछले 6 घंटा हुआ
something, everybody feels that he knows about it. So it is just like in a class, हम जो स्कूल में पढ़ते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे टीचर नहीं आते थे, क्लास टीचर सब्जेक्ट मैटर के, तो जब भी कोई क्लास टीचर नहीं आते थे, संस्कृत टीचर को भेजा जाता था कि भाई आप थोड़ा मैनेज कर लो क्लास को. तो ये अंग्रेजी का क्लास था, इंग्लिश का क्लास था, और संस्कृत टीचर को भेज दिया गया. और संस्कृत टीचर ना सेक्स के बारे में बोलेंगे, पोएम के बारे में बोलेंगे, प्रोज के बारे में बताएंगे. तो उन्होंने बोला कि चलो स्पेलिंग टेस्ट कराते हैं. तो उन्होंने लिखा, he asked a very simple question, can you spell the word pillar? Pillar is a very common word. तो सबसे जो दुष्ट लड़का था, जो बेवकूफ माना जाता था, उसने हाथ उठा दिया. अरे अरे ये बुद्ध, मैं सोचता था कुछ नहीं जानता, दूसरा हाथ उठा दिया, बोले स्पेलिंग बताओ. ठीक हो वो भी ठीक है. सिंगल पिलर में खंबे थोड़ा पतला होता है, डबल में लंबे मोटे हो जाते हैं. तो आज यही हुआ कि मैं आपको इसी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो एचआर के बारे में सब कुछ जानते हैं. बट आई विल गिव यू जस्ट अ पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. वी नेवर हैड द वर्ड कॉल्ड एचआर इन द अर्लियर डेज. In fact, HR is a concept, is a coin. The word came in 1930s, 40s. ये मौका दिया है. तो पर्सनल डिपार्टमेंट का था कि लेबर वेलफेयर रिलेटेड, एम्प्लॉयज आए, उनको वेलफेयर देखना चाहिए, उनको तनख्वाह मिलना चाहिए. तो देयर वाज कंसल्ट फॉर वेलफेयर. यू विल सरप्राइज टू नो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज आर pre-independence and just during the independence. Not many of the major labor laws are passed post-independence. Only in India 2 times the government of India tried to make changes in labor laws post-independence, and both the time the minister lost the positions. एक टाइम था मिस्टर AR अंतु, सॉरी क्या था, अंजनी थे जो साउथ इंडिया का चीफ मिनिस्टर थे. आई एम फॉरगेट हिज, आंध्र प्रदेश. ही ट्राइड, ही लॉस्ट हिज जॉब. And next is this Paswan, he also lost his ministry. The only person who succeeded to make a slight change in labor laws, it is Mr. P.S. Sangma, who brought this labor law amendment for the employee pension scheme. After मोदी जी ने पूरा चेंज किया, बट अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. इट्स सच ए डिफिकल्ट एरिया फॉर दैट. सो लेबर वाज ए वेरी वेरी मेजर कॉन्सेप्ट वेयर पीपल वर taking care of the major activities. Then later on people thought it is not just a welfare activities. You have to bring the capacity building of the employees. Those who are working, they have to work for that. You have to create a environment where they can comfortably work for the production productivity of the organizations. You have to take care of their recognitions and other. So the HR came as a peer relationship, leadership development, capacity building. ये सब आया HR में. अभी the new concept is saying no, these are not needed, because HR has got 4 major roles. Major role 1 is alignment with the business. I am there to align myself with the business. What is my business? My business requires production, productivity, profitability. Am I aligning to that? This way is one thing that we are doing. We are getting the right kind of people. Second is my administrative expertise. मैं कुछ स्कीम चलाना चाहता हूँ, पे स्केल चलाना चाहता हूँ, डिसिप्लिन एक्शन करता हूँ. डू आई हैव द एक्सपर्टाइज टू डू? Am I having the welfare activity? Administrative करता हूँ, do you have the expertise? So administrative. And third thing came, is change management. Because whenever the business starts, there will be changes in process. There could be statutory changes, there could be political changes. We had a ministry, government of Chhattisgarh, we had a Congress. Congress said that pellet is one, it is not a it is minor mineral. They put taxes on that. So pellet plant got affected. So this change, whether Congress or BJP or Aam Aadmi Party, there will be a lot of political changes will impact the business, and the
changes has to be made, both internal, external, HR has to manage. But last but not the least, the most important factor for the HR is that are you the champion of the people, because you are the only person. Finance is taking care of the finance. Production is taking care of the production department. Safety is taking care of the safety. But who is taking care of the people? Those who are working for all areas. It is the HR here to be the people champion. So in spite of these roles, now there is a very, very reversal, a very dynamic, a very ultra-modern thinking by Dave Ulrich, who is considered to be the father of the modern HR. Dave Ulrich, जो अभी new आए हुए as a professor of management in some university, in American university, he said HR is not about HR. Why? He said your whatever organizations you are having, let's say this particular event, we have the best of the speaker from various parts, we have the best of the people who will be felicitating for their good contributions. We have got the best cameraman, we have got the best singers over here, but this can't run if the money is not given. He has taken one step, but next time he doesn't get, this activity cannot be taken place. So also the business has to exist. It has to exist for profitability. And the profitability, you may take care of the employees. You may have the best of the environment. You may have the best of the people. You may have the best of the technology. You may have the lowest interest getting from the banks to have your business concerned. But it can't exist if the products are not getting sold. So he says that HR job is aligning with the business interest, that what customer needs. If I got a rejections in my production plant, I must know that my customer is not happy with my product. So am I kind of people, or because somebody cost is lower, or Mr. Baghel has recommended, or Mr. Sao has recommended, I have recruited that guy. These are the things that HR has to take care of that. You have to both outside in, statutory authorities are there, factory inspector, director there, environment part is there. Am I taking care of that? HR is not only, हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, सर मेरा setting हो गया. Setting will not work now. The setting phase is already gone. You have to ensure that what the customer is employees, no doubt about it. But the customer is the stakeholders, the government, the public, the community, the society. The organizations for itself is nothing but is an extension of the human being. If I'm a manager in a company, in fact, I'm a manager of the society. I'm working, the plant runs, the business runs, because the society supports it there. So HR has to think in that line. You'll be surprised to know, during a research finding, that they said that हम लोग जैसे CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर, चीफ पर्सन पीपल ऑफिसर, वो बोलते हैं बोस्टन ने स्टडी किया, if there are 30 qualities or various parameters for each of them, it is only the CEO and CPO at 70% quality match करता है. So all the HR should know that they have to understand that they have got the quality which the CEO, because you not only have to manage the internal factor, you got to also maintain the external factor. That is the basic business for that we are called for. We have to take a specialized interest in that. हम लोग हमारे पास निखिल है, तपन is there, then we have got क्या हमारा क्या हमने अरे सारे मेरा अरे I'm forgetting. लांजीवर is there, we got Mr. Khan is there. हम लोग बोलते हैं साला बेकार का HR आदमी है, साला कुछ इंचार्ज नहीं जानता. And they say that it is better if he doesn't know. Because many of the HR activities that we are doing today can be outsourced. Recruitment can be outsourced, except industrial relations. Many of the activities, your administrative welfare amenity, that can be outsourced. Everything can be outsourced. Industrial relations minus the industrial relation. So what is required? The present HR which is doing many of the job need not be carried on by the HR. It can be outsourced to other agencies. The agencies are available. As automation, digitalization हो गया, things become very easy for us to do it.
So what is required, what we are now trying to teach is that please try to learn those quality which other normal HRs are not doing. Maybe that is where we have to stand here, we have to look into that. This is one aspect, because I've been given a very short time. भोई साहब धीरे से कान में, मोहंती जी बोलना जरूरी है क्या? मैं वाला सर मैं ड्रेस फ्रेस पहन के आया हूँ, कुछ तो बोलूँगा, स्टेज में जाऊँगा, क्योंकि पूरा मेरा मना कर देने वो भी ठीक नहीं, उनको भी बुरा लगा कि मैं नागपुर से आया हूँ, कुछ तो मौका दें. So I'll shorten that to that part. Second part, I will speaking about the digitalizations of that and the new generation, the challenges the HR is facing. HR is facing the challenges because the new generation that is coming. Today we are working with 5 generation. They silent, जो लोग कुछ भी नहीं करते थे, वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी काम दे दिया, और बेबी बूमर्स हम लोग हैं. बेबी बूमर्स में बच्चा पैदा किया, तो उसके बाद X जनरेशन आया, then Y, then Z millennium, there's a millennium age. So 5 generation working together, but हमारा स्टाइल 1942 लव स्टोरी वाला स्टाइल अभी चेंज नहीं हुआ. अभी भी हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी मोहंती साहब बोले, मिस्टर मोहंती बोलता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, साला ये मिस्टर मोहंती छोटा सा लड़का, ये मिस्टर मोहंती बोलता है, मोहंती जी भी नहीं बोलता है. Those thinking, because the traditional way of managing the business cannot continue now. Because you got a new generations that are coming, they got different concept. They got certain positive, they got certain negative aspect. Positive aspects say they are very dynamic, they interconnect each other, they know things better, they can immediately counter check. दूंगा बोस्टन का, ये तो सीनियर है, जूनियर तो फट से चेक कर लाता, साला झूठ बोल रहा है, बोस्टन वाला है और कुछ ऐसे ही फेंक रहा है. Because they can counter check immediately, because it's available on the Googles. They can check each and every statement that you make. Whatever I say, they can copy it, they can legally cannot cheat the people, because they can counter checks with the legal manners, and they can get all the information retrieved from the various sources and to see and understand the authenticity of that. But then they have got a certain problems. There is a patience. They don't have patience. आज के बच्चों का patience नहीं है. We got a loyalty factor. हम join किए, हम सोच हमको नौकरी मिला, हम काम करना है. वो बोलता है मैं क्यों काम करूं, मेरे को क्या पैसा दे रहा है, मेरे कंपैरिजन को उसको दूसरा पैसा मिल रहा है. He wants, because जो Instagram आ गया, Swiggy आ गया, आपका जो बाकी सब एजेंसीज आ गए, instant gratification होता है. He is not able to wait. We remember, I normally cite this story कि हम लोग जो प्यार, हम भी प्यार किए थे, ऐसा नहीं कि हम आज टकलू हो गए, बट हमारा भी चेहरा कुछ था, तो हम बोले थे फूल भेजा था तुझको, खत में फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतमा मेरा डैश 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 था. उसके बाद सेकंड जनरेशन आया, शायद मैं शादी का ख्याल मम्मी को आया, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है. बट अभी का बच्चा है, आती है कि खंडाला, जाती है खंडाला. They want instant everything. So they do not have the patience. But you have to manage. You can't say them no. These are the boys and girls. They will be joining in large numbers. We are getting replaced, and we can't have the same style of managing those boys and girls together. This is just not possible. We have to change our attitude. We have to see their aspirations. We have to see that may be the thing. Because if I come, मैं थोड़ा ड्रेस पहन गया, वो हाफ पैंट पहन के आ जाता, वो कवरा चित्रा वाला शर्ट पहन के आ जाता. Because they are not bothered. They say it is my knowledge, it is my delivery, it is my competency, it is the payment that you make. They want individual satisfaction. Generalization नहीं हो पाएगा. हमारा HR पॉलिसी नहीं बोलता है, सर बॉम्बे से आए भाई वो सेकंड एसी, नहीं भैया मोहंती जी सेकंड एसी में मेरा ट्रबल है, मैं पहुंच नहीं पाता कॉन्फ्रेंस, नहीं आपको नहीं मिलेगा, आप फ्लाइट में आए तो आप जेने दो. Today we are creating individual requirement. There are no standardized processes. In the past, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, मोनिका मैडम देखने में बहुत सुंदर है, उनके लिए थोड़ा एडिशनल दे दिए. मोनिका मैडम प्रोमोटर से रिलेटेड है, वो 12 बजे आएगा तो ठीक है. उसके बाद सेकंड में वो पास था, प्रेजेंट में आ गया, नो यू टेस्ट स्टैंडर्ड 10 o'clock, she has to go. She may be vice chancellor or I may be workman. They come at 10 o'clock, we have to punch 10 o'clock. But now the future that is coming, the tomorrow that is coming, you can't have a standardized. You have a certain core philosophy, core system, core processes, but then you have to give a relaxation. I'm giving my personal example. Here in Nico as head of HR, and today I moved as group HR head for the Nico Industries. I'm already 67 years old. In fact, I told the promoter कि सर मेरे को 60 के ऊपर को निकालना है. बोला क्यों? मैं बोला सर मेरे को मत निकालो, मेरे निकाल दो तो बाकी निकल नहीं पाएंगे. Because if I do not ask people to stay beyond 60, what will happen to youngsters, those who are inspirations to go? They can't rise. As long as I'm there, the vice president and president of the company can't grow because I'm there.
But in that process, I'm telling you an example. We recruited somebody for we are going to arms and ammunition manufacturing. 2 unit हम बना रहे हैं उसमें, and you know arms and ammunition में you don't have many people. People can join only from ordnance factory, government sector. And ordnance factory का आदमी आता है, वो बोलता है उसका आदत है, उसको फ्री गाड़ी होना है, उसको फ्री घर होना है, उसको पियन होना है. He is not bothered with the money. He said this comfort cannot be given. I made, the promoter said, Mohanty, you cannot do. मैं बोला, you should see what is the money that you are giving. Why you are bothered? अरे हमारा policy घर, there is no question of policy. It is not a policy, it is the delivery, it is the expectation that I require from me. If I can manage with, बोले तुम क्या करोगे? मैं बोला कर देता हूँ, मैं उनको क्या करूँगा? कंसल्टेंट में ले लूँगा. बोले क्या फायदा होगा? सर मैं किसी को 60 लाख देता हूँ, 20 लाख इनकम टैक्स में चला जाता है 30%, तो मिलता है 40 लाख, लेकिन मैं 60 लाख देता हूँ, मैं 40 लाख में एडजस्ट कर दूंगा. He was very happy. So you have to customize for each and every individual working. Today expectation of the individuals is different. They have a different expectation that has to be managed. I'm sure the time is going out. I'll take another 2 minutes to finish it up. The last but not the least, the digitalization. Digitalization is nothing that हम लोग बोलते हैं कोरोना आया तो digital. No corona. Digitalization has to be there. It is not go out. Many of the activities are something, and unfortunately digitalization ऐसा चीज़ें है HR को दिमाग में आता नहीं. अच्छा जब digitalization पॉलिसी होता है HR वाला को मैनेजमेंट नहीं बैठाता है. अरे ये क्या, ये गणित वणित नहीं समझा, इसको बाद में करो, implement. But that is the wrong thing. Digitalization and normally it is not very good on data statistics. Data में ये कहानी बनाने, जैसे मैं कहानी बनाने में ठीक है ये लोग हैं, लेकिन गणित में लोग पुअर है. That is a basic concept, but unfortunately you have to carry on that activity in the organization. Become a people movement, and people movement can be possible only when HR is get involved. I'm sure that whatever they think that come digitalization is a lot of most of us we are in the organization, whatever is to which we belong, but then we are going for the digitalizations in the organizations that is bound to come, and the pace is coming. It is not reversible. It can't go back. And I'm sorry she's looking at me. Thank you very much for giving me a patience hearing. I do not know whether I will be able to do justice for that, but thanks a lot for giving a patience hearing. Thanks, Bhoi sir, for at least permitting to come to stage and speak to you. Thank you very much. Bye-bye. Hello. So thank you so much, sir, for the very wonderful words. And moving ahead, I would be requesting Dr. Professor R. Sridhar, sir, to please join us on stage and to please felicitate our speaker of the session, Shri Dalip Mohanty, sir. I would also be requesting Monica ma'am to please join us. So we are just having one more presentation left, and after that there are awards and closing ceremony. So I would request you all to please stay with us. So can we have a round of applause? Come on, everyone. So now, once again, thank you so much, Mohanty sir, for joining us here. And a very small break of 2 minutes musically. I would be requesting Devendra Manikpuriji and his whole team. After this, we would be inviting our next presenters. Thank you so much. I would request you all to be seated. Hello, check. Hey, check. Hello, check.
टूटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। Not be able. So these are the Sustainable Development Goals we call SDGs by the UN. They are called UN Sustainable Development by UN, and the objective of these goals is to see that sustainability is balancing the claims of the present against the claims of the future. So basically, we want to see that whatever we want to do today, because it is going to have repercussions in the next generation, so we need to do it sensibly, so that we are trying to give this particular planet to the next generation, which will be still worth living. So what is the world to make a better place? We need to have a balanced use of natural resources. That is why the concept of recycling or reduce, these concepts are coming. Tackling the climate change and caring for the environment, you will find that a lot of initiatives, different companies, different countries, depending upon the sector-specific issues as communicated through GRIs, that is also being done. What is through the social, because ESG stands for not only environment, but social and governance. So we are looking forward to a society which is going to be the fairer and justifiable. We are looking for better corporate governance, and at the end, ESG is going to be basically, if we follow all the above four, it is going to make sense in investing in the ESG matters. So where does India stand on the SDGs? Because India has been working on these goals. Our government is working through the Niti Aayog, and they do report these numbers, and annual reports are coming. So India has progressed from score of 57 in 2018. In 2019-2020, the score went up to 60. 2020-21, it became 66. And 23-24, our score is 71, aggregate score. And we are, as of now, current year, we stand 109th out of 166 countries. So still a long way to go. We need to still long way to go, because we are a big country, we are different states, and to see that all the state machinery, it goes along with the federal machinery, it is not an easy task. So what are the areas where India need to improve out of these 16 SDGs? So basically you will see that the color which is there, green color, is generally okay. The one which is in yellow and red color are the ones where we need to improve. So you will find that the improvement is required in SDG Zero Hunger, which is number 2. We need to SDG 4 Quality Education, SDG 5 Greener Gender Equality, and SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure. These are the ones our scores are low. So some kind of a program will have to be evolved, and which is getting currently discussed. And once we start working on this, our scores will be relatively better. And the color coding, as you can see, red is aspirant, the score between 0 to 49,
performer is 50 to 64, front runners is the green color, and the blue color, currently there is no blue color, which is the achiever, which is 100%. Front runners are between 65 to 99. That's the scale which has been used. So these 16 or 17 SDGs, they have been divided, classified into 3 categories, which is basically the environment, social and governance. Some of these, they can appear in both social or governance, or some of them you will find that they are appearing between environment and social likewise. But these are basically the navigational tools which are being used for SDG through the ESG lens, and the detailed working of that is given over here. So individually, where the navigation, how it can be classified. For example, in case of gender equality, it is coming under social as well as governance. Likewise, you will find a decent work and economic growth also in social and governance. Industry, innovation and infrastructure actually is appearing all the 3, environment, social and governance. So likewise, these are the various ways in which classification has been done, and which is going to help to manage the ESG programs. So what is ESG investing? Basically, ESG investing is a core portfolio analysis to include ESG credentials, how the ESG credentials can be established. So many companies, they have the different rating system. In India, some of the companies they are following is CRISIL is one of the company which is trying to do the rating of the Indian companies. But generally, MSCI and Sustainalytics are the rating agencies globally acceptable. And ESG ratings become a part of the decision making because it helps you to take informed decisions. Sometimes the lack of ESG data can also be a problematic thing. We have been doing, OSHA has been doing ESG evaluations or audits for various companies in the recent past. And what we find, the common thread across is reporting is there, but whether that is correct reporting, the understanding of that subject and the calculations have been done properly or not, and most important is implementation on the ground. So for us, whenever we go to many companies, this implementation on the ground is one area which is an area of concern. Second area that we find is the knowledge base of the board of directors, and whether they are deep into it, because some individuals in the company are driving these projects which may not be sufficient. So basically, we need to see that what is the right way of managing these projects is left to the individuals, but there is some more maturity and also awareness is required for the various companies currently operating in India. So what are the various issues that get addressed? All of you, those who are little bit familiar, they know that these are the issues coming under the 3 categories: environmental, social and governance. So we have the biodiversity, climate change, energy efficiency, renewable energies, ozone depletion, waste management and resource allocation. These are some of the factors that are considered while looking at the environmental issues. Social issues is human capital investment, wealth distribution, access to the healthcare, workplace health and safety, DEI, employment rights and labor and slavery. Why companies, many people, they particularly from HSC, is a good field, because HSC becomes a subset of the ESG management. So those of you who are got good understanding of on health, safety, environment, and also especially the energy management, there are many companies also going for 50,001. So they have an edge compared to the other departments, somebody who is managing the sociability or governance, because the person from HSC can learn social aspects and governance aspects, but vice versa is a bit difficult. Somebody, you ask a person from HR to understand what is the ISO standards or HSC management system, is a bit difficult. So I find whenever I go to many other countries outside India, I find that many people, they are moving away
from the core competence of HSE into this field of ESG, because now wherever in other countries it's mandatory, the board is playing more important role and they are giving more weightage to this compared to the various ISO certifications. So we have a situation like social, various governance, executive compensation, anti-bribery, corruption, independent directors, ethics, business, whistleblowing policies, and also the implications of business strategy on social and sustainability issues. These are some of the factors which are taken into consideration. Now the question here is, which are the portfolios which are given importance, which are given less importance? So normally the people, those who are very well versed in this field of ESG, they are able to make out what is the strong ESG credentials, what are the kind of KPIs that the company has developed and which have been delivered, which will give an idea about which company has got good credentials and relatively weaker ESG credentials. So we can call it as a overweight or underweight. And some of the exclusions, wherever the unattractive ESG credentials are factored, those are some of the exclusions not to be taken into consideration when the preferred approach to ESG investment is considered. So the larger point we are making here is people are moving away from market cap to the ESG rating, in short. Oil and gas, as some of you may be aware, some of you may not be aware, forms a very large chunk of the industry business. That's why I've shown a small slide here. The crude oil business, how big is the oil market? So if you see the oil market, it works out to almost 2.1 trillion every year. That's the kind of size. So many companies put together, if you put about 30 to 40% of the industries on one side, will be equivalent to an oil and gas industry. That is why it is becoming more and more tighter controls. You will find most of the oil and gas companies, they are getting into the ESG field because it matters a lot to them. Also, it helps in building a fairer society. And when we say that strong ESG credentials is a reflection of your long-term commitment towards the goals. Because when you are giving this, sharing this information in your annual reports or to the shareholders, that not only the near-term goals, but also for the long-term. Now coming to the India, a lot of good things are happening compared to the other countries. All of you know that BRSR, the Business Responsibility and Sustainability Reporting developed by SEBI, is basically to ensure that the Indian companies practice responsible business and achieve sustainable development. So these are the nine principles which have been factored by SEBI, and all the companies. You may be aware that we are ramping up the reporting in terms of those who are listed companies from 150 first year, then 250, then 500, up to 1,000. That's what is the reporting going to be. So this has already has started, and this is showing a good sign, because people are more and more companies, even if they are not required to get into this as of now, they are not required to mandatorily required, but they are showing a lot of interest because they are trying to develop themselves to run for the future. So here again, those 9 BRSR principles, how these 17 SDG principles, how they are factored into the 9 principles of BRSR is shown over here. So these are the various 7, 8, 9, 10, 11 SDG goals, and they have been factored into by BRSR appropriately in their 9 rules and up to 17. So this is what is the classification of those SDGs. So which basically means that Indian companies will simultaneously work on these various sustainable goals when they are adopting the BRSR standards. So what are the global ESG framework? The sector-specific GRI, many companies are following. You have VRF, you have got SASB, CDP, TCFD, Climate Disclosure Standards Board, UN Principles of Responsible Investment, PRI, and SDGs, and International
sustainability standards of board ISSB. These are some of the global ESG framework. Depending upon which part of the world, or depending upon which is the right fit for you, the companies are selecting. Like recently I was there, they have adopted for GRI and CDP. So it is depending upon the company that you are working, the company can decide the right fit for themselves and decide the global ESG framework. So ESG ratings is a measure of companies' commitment to sustainability, that is for sure. So these ESG ratings will give you, based on a definitive criteria that has been set out, that companies' commitment and performance in terms of sustainability. These ratings will give you the companies to make long-term commitments and also manage the ESG risk and make sure that effectiveness is there in managing those risks. That is what is going to happen. And they will also be learning from the industry peers. So when you find that somebody is going for ESG rating, they can find out from their other peers what is being done by them, and based on the results, they can compare the results in a particular domain and they can adopt the good practices what other companies are doing. So by analyzing how well ESG aspects are integrated in your business strategy, ESG rating provides help to investors and stakeholders to make informed decisions. So basically, people are getting into this because ultimately they see that there is a merit in doing that, and the various benefits that one can accrue from environmental, social, and governance. Environmental will make sure that the carbon footprint or the resource usage or the waste management is properly tackled, is within the acceptable limits. Social will make sure that the relationship with employees, suppliers, customers, and communities are well maintained through the stakeholder relationship management and impact assessment studies. Governance is, again, it is going to be through the company's leadership, executive pay, audits, internal controls, and shareholders' rights, which are going to deliver the good results as far as governance is concerned. So this is just an example for some of you are little bit more interested as to how a ESG diagnostic dashboard can look like, and somebody who is going for an audit, what are the things that they are going to look forward to while assessing or evaluating the performance of that particular company. This is again, you are required to do the materiality assessment. In Europe, there is a dual materiality assessment. So not only the risk-related materiality or impact, but also financial assessment is required to be done. But as far as India is concerned, there is no double materiality assessment. Some companies are doing only the single materiality. So this is just an example. So depending upon the shareholders' expectations versus business priorities, you try to put the areas, whatever you are taken up, and this will be shown in which quadrant you are, and this will tell you what is relatively more important, what is relatively less important. And this is, again, this materiality concept, this is reviewed every 3 years, so that in a changing business environment, you get to know whether the materiality assessment that has been done is correct or it requires to be changed. So last 2 slides for me. So key benefits of ESG investing is enhanced portfolio performance. It improves the risk management and long-term resilience. So that is the second benefit we get. Greater innovation and adaptability by doing innovation by ESG. Positive the environment, because a lot of initiatives would have been taken by the company. And contribution to the global sustainability, because if each company is working in their own way, you are contributing to the nation, and in turn, the government of India has also set some goals. So you are helping the country to achieve the national goals. And regulatory compliance. So when you are doing anything on ESG, one of the important things that is required is the compliance to the regulations. So automatically this gets strengthened. So what is it that OSHA can offer is that first thing you can still do is there is a competition or the award, which we are saying 9th award,
you can participate where ESG is one of the criteria, one of the area where we are so whenever we touch upon ISO 39001, so these issues will come up. So do not think that transportation is not going to make a difference. It is going to make a big difference, and that is why people are getting into the hybrid or electric cars. So these are going to lay strong foundations where we are already very strong and deep-rooted. So we will be very happy to help anybody wanting to get into the area of this ESG collaboration. And as I said, after our entire program is over, anybody wants to have some dialogue with us, we will be here up to 7 o'clock, and we can have some detailed discussions, individual discussions. So that's it from my side. Thank you very much. Thank you so much, sir. So moving ahead, I would request you, sir, to please be on stage. I would be requesting Dilip Mohanty, sir, to please felicitate Sanjay, sir. As well as ladies and gentlemen, आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं ख़त्म. आफ्टर दिस फेलिसिटेशन लिए चलेंगे आज के हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ अवार्ड्स नाइट. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एवरीबॉडी. So here we go, everyone. Once again, we would like to thank Sanjay sir. We are very glad to have him here today with us. Moving ahead without any further delay, आप सभी लोगों से request करना चाहूँगी to be present with us. एक बार जोरदार तालियों की आवाज़ और लिए चलते हैं awards night. And the very first award is Lifetime Achievement. Then we are having Special Honor Award. Then we are having Individual Awards. And then we are having Factory Awards. So let's go, everybody. आप सब बिल्कुल तैयार रहें and present all the awards. I would requesting our guests to join us over here. We would also like to felicitate Avdesh sir once again. So thank you so much, sir, for joining us here today. He's the global president of OSI. So once again, we are very glad to have your presence with us.
Thank you. Can we please stop the music? Thank you. So I would be requesting Dilip sir to be seated. I would be requesting Avdesh sir, Sanjay sir to please be on. Also, it's time to present the awards. I would be requesting Monica Sharma ma'am and Dr. Professor R. Sridhar sir to please join us. We're all with us in this awards night. और सबसे पहली award category है हमारी lifetime achievement award. थोड़ा ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि बैक टू बैक सारे अवार्ड्स की ओर लिए चलें. सो नाउ टू गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट अवार्ड, इससे पहले कि हम शुरुआत करें एक बार ज़ोरदार तालियों की आवाज़ आप सभी लोगों की तरफ से फॉर ऑल अवर प्रेजेंटर्स ऑन स्टेज. एंड द वेरी फर्स्ट अवार्ड इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड द वेरी फर्स्ट नेम इज कैन वी हैव मिस्टर निर्मलेंदु महापात्रा. A round of applause everybody. So moving ahead, ladies and gentlemen, we are glad to tell you all that he's the director of SAIL. A very warm welcome to you, sir. And once again, the award category is Lifetime Achievement Awards. Up next, I would like to invite, can we have Shri Anthony Tirke sir for the next Lifetime Achievement Award? Can we have Shri Anthony Tirke sir? Yes, so here we go. So मैं चाहूँगी हमारे सारे अवॉर्डीज का आप सभी तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें. Up next, Anthony Tirke sir is joining us on stage. Also, we are very glad. We would like to thank Shri Nirmalendu Mahapatra sir for joining us here today. थोड़ी सी तालियां अगर बन जाएगी, I know energy is quite low, but अगर थोड़ी सी तालियां बजेंगी तो बहुत अच्छा. And as I said, back to back सारे awards की तरफ लिए चलेंगे without any further delay. Up next in the very same category of Lifetime Achievement Awards, can we have Shri DM Nema sir? Ma'am? Thank you. Thank you so much, sir. We are thankful to Anthony Tirke sir for joining us here tonight. And up next, we are having Shri DM Nema sir on stage. We welcome you, sir. Many congratulations to you. Moving ahead without any further delay, our next category awards. So मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनको भी अवार्ड्स मिले आप सभी प्लीज़ हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहें for the photo session as well. And moving ahead to get started with our special honor awards, the very first name is can we have Shri Rajiv Kumar sir with us? A round of applause, ladies and gentlemen. We welcome you, sir. आपका स्वागत करते हैं. एम राजीव सर फ्री में कोचिंग चलाते हैं और करीब करीब जो है 1000 से अधिक बच्चों को उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और उनके बच्चे जो है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है पास करे. एम राजीव सर. So we are having M. Rajiv Kumar sir with us on stage, or as you all know, युवा फ्री कोचिंग के नाम से आप सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. थैंक यू सो मच सर. अप नेक्स्ट वी वुड लाइक टू इनवाइट मीर अली मीर सर. आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज जॉइन अस. So moving ahead once again, he is one of the gems of Chhattisgarh. We welcome you sir. It is our honor to have you here tonight. थोड़ी सी तालियों की आवाज for all our guests joining us on stage. Come on, ladies and gentlemen. Thank you. Up next, can we have Shri Rupesh Prasad sir on stage, please?
रुपेश सर ने इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था और उनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला था। थैंक यू सो मच सर। Up next, can we have Shri Purushottam Lal? आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि श्री पुरुषोत्तम लाल सर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और एक बार फिर से दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल ऑनर एंड वी वेलकम ऑल अवर एमिनेंट गेस्ट्स विद अस। Up next, I would like to invite Shri S.L. Matre, sir. I would request you, sir, to please join us. मात्रे सर मेंबर जज रहे हैं इंडस्ट्रियल कोर्ट के और उन्होंने 3 दशक से अधिक अपनी सेवाएं जो है इंडस्ट्रियल कोर्ट में दी है। Thank you so much, sir. Up next, I would like to invite, can we have Kirti Sinha ma'am with us? Kirti Sinha ma'am, can we have her please? Thank you so much, Matre sir, for joining us. She is a very beautiful singer, ladies and gentlemen. और आप सभी लोगों ने थोड़ी देर पहले इनकी आवाज़ सुनी है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों की तरफ से कृति सिन्हा जी के लिए। मूविंग अहेड बढ़ते हैं हमारी अगली अवार्ड कैटेगरी विच इज़ इंडिविजुअल अवार्ड कैटेगरी। और एक कॉर्डलेस माइक प्लीज देंगे। सो चलिए वंस अगेन वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑल अवर अवार्डीज और सबसे पहला नाम है इस पे सुरेश प्रसाद जी। कैन वी हैव मिस्टर सुरेश प्रसाद विद अस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सेफ्टी। और इनके बारे में और भी जानकारी आप सभी लोगों को देंगे इन ब्रीफ ऋतुराज सर। सर प्लीज। Prashad sir has a total 32 years of experience, out of which more than 28 years of experiences in experiencing safety, fire, occupational health and environment in reputed engineering companies. Ladies and gentlemen, Suresh Prasad sir. A very warm welcome to you sir. बहुत सारी बधाई आपको हम देना चाहेंगे। Can we have Sunil Kumar Pandey sir on stage up next for the next award? Sunil Kumar Pandey sir, a result-focused senior health and safety environment person with over 25 years of expertise in designing and developing safety system. Sunil Kumar Pandey sir. A round of applause। मुझे लगता है हम एंड सेशन की तरफ है तो थोड़ी सी जितनी भी एनर्जी बची हुई है हम यहाँ पर हमारे सभी अवार्डीज के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड माइक का वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्लीज। Up next, can we have Tulsi Ram Yadav sir? Tulsi Ram Yadav sir, over 25 years of experience in safety, demonstrated ability to implement and maintain safety protocols, resulting in measurable reduction in accidents and incidents, effective communication and collaboration with management and staff to foster a culture of safety. Ladies and gentlemen, Tulsi Ram Yadav sir. एक बार जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। और थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों को बैक टू बैक अवार्ड्स के लिए चल रहे हैं। इन द वेरी सेम कैटेगरी मैं बुलाना चाहूंगी संजीव कासलीवाल सर को एंड वंस अगेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सेफ्टी। बहुत बहुत स्वागत। Mr. Sanjeev Kasliwal sir, over 25 years of experience as a competent person, one of the key person to spearhead structural safety in our state. Ladies and gentlemen, Sanjeev Kasliwal sir. Up next, we would like to welcome our next awardee. We welcome Shri Suryoday Dubey sir, Lifetime Achievement Award in HR Management. I would request you, sir, to please join us.
थोड़ी सी तालियों की आवाज लाउडर एक Surya साथ Dubey sir होनी has चाहिए. been a Come on beacon of everybody. excellence in HR management, embodying the principle of empathy, integrity, and innovation. Over the years, he has transformed workplace and championed diversity and cultivated environments where everyone feels valued and empowered. Yes. Up next, I would like to invite Dr. Hidayat Khan, once again Lifetime Achievement Award in Occupational Health. Dr. Hidayat Khan has dedicated his life and career to promote safer and healthier workplace. Through his expertise and passion, he has transformed practices and policies, ensuring that occupational health is at the forefront of organizational priorities. He has worked and not only improved countless lives, but has also set a standard of excellence for all of us in the field of occupational health. Dr. Thank you Hidayat so Khan, much. sir. Up next, I would like to invite Shri Pankaj Tiwari, sir. Hey, check. So, Shri Pankaj Tiwari, sir, Lifetime Achievement Award in HR Management. I would request you, sir, to please join us. तालियों के साथ इनका स्वागत करें. Pankaj Tiwari sir has always believed that people are of the greatest asset of any organization. His passion for fostering a culture of inclusivity, collaboration and growth has left an indelible mark on everyone they have encountered. Ladies and gentlemen, Pankaj Tiwari sir. Moving ahead in the very same category, I would like to invite for the Best ESG Professional Award, Dr. Sapan Kumar Saha, sir. Can we have him, please? Dr. Sapan Kumar Saha has been a trailblazer in the field of ESG, championing sustainable practices that have not only benefited our planet and industry, but also promote social equity and responsible governance. His innovative approach and strategic vision have paved the way for organizations to embrace sustainability as a core value, demonstrating that doing good is not just doing good at it, but also good business. Ladies and gentlemen, Dr. Sapan Kumar Saha. Up next, Best Safety Professional Award goes to Navneet Mishra, sir. Can we have him, please? We welcome you, sir. Navneet Mishra is a safety head from Nuwan Stills. He has dedicated his career to ensuring that safety is not just a priority, but also a core value within an organization. He has been part of safety delegation, and his tireless effort to implement effective safety programs, conduct training, and promote a culture of awareness have made a profound difference in the lives of countless individuals. Navneet Mishra. Up next, Emerging ESG Professional Award goes to Mr. Chandrakant Sahu, sir. Can we have him, please? Chandrakant Sahu has quickly made a significant impact in ESG space, demonstrating an impressive ability to innovate and inspire. His fresh and perspective and commitment to sustainability have already led to many few changes within their organization and broader community. Chandrakant Sahu. So many congratulations to you, sir. Up next, the Safety Hero Award goes to Dr. Kamal Kulshrestha, sir. Can we have him, please? Dr. Kamal Kulshrestha has published and copyrighted 0 to Industrial Safety books, developed new HSE Observer app for work permit and safety observation, asset management and safety inspection. Thank you so much, sir. Moving ahead, Best HR Professional Award goes to Nikhil Rao Shilar, sir. Can we have him, please? Can we have Nikhil Rao Shilar, sir, for the Best HR Professional Award? Nikhil Rao Schiller has always believed that people are heart of any organization. His unwavering commitment to fostering a positive workplace culture and enhancing employee engagement has made a significant impact on everyone around them. Through his innovative approaches to talent development, conflict resolution, and organizational strategy, he has transformed the HR landscape within the organization. Nikhil Rao Schiller, sir. So moving ahead, once again in the individual category, our next award is Emerging ESG Hero Award. This goes to Urmila Lilhare, ma'am. Can we have her, please? B-class town guy came from very big dreams in the big city and catch it and get it all the over. Thank you so much to all of you. Urmila Lilhare, in today's world, the importance of ESG cannot be overstated. It's not just a compliance, it's about building a sustainable future. She has embraced this mission wholeheartedly, demonstrating an unwavering commitment to driving meaningful change. Her innovative ideas and proactive approach has already made a significant impact, proving that emerging leaders can influence and inspire.
Up next, the award for Best Safety Professional goes to Vikas Kumar Pandey sir. Can we have him please? Vikas Kumar Pandey sir. Vikas Kumar Pandey sir is ex-competent person. He has devoted his career to safety, understanding that it's not just a priority, but a fundamental value that should permeate every aspect of an organization. His proactive approach has led to implementation of innovative safety programs and practices that have not only reduced incidents, but have also fostered a culture of safety awareness amongst all employees. Thank you. Up next, I would like to invite for the next award, Best Safety Professional Award. Can we have Vivek English sir with us? Can we have Mr. Vivek English? I would request you, sir, to please join us. Vivek Ingleji from Jai Balaji Group. From the very beginning of his career, he has shown an unwavering passion for ensuring the health and safety for every individual. Sir, can we have him please? जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका स्वागत करें. Come on everyone. Sudhar Gaupe has always gone effort beyond his role, embodying what it means to be a true safety hero. His proactive approach to identifying potential hazards and implementing effective solutions has not only improved safety standard but also fostered a culture of vigilance and responsibility amongst employees. Many congratulations to you, sir. Up next for the Best Safety Professional Award, can we have Mr. Nitin Deshmukh with us? Nitin Deshmukh is lead auditor and safety head of Excalibur Solutions. He has truly redefined what it means to be a safety professional. He has gone beyond to ensure safety is not merely just a set of rules, but to follow, but a core value embedded in our workplace culture. Nitin Deshmukh. Up next, once again, Safety Hero Award goes to, can we have Motilal Panda sir with us? Motilal Panda, he embodies what it means to be a safety hero. His dedication goes far beyond compliance. He genuinely cares about the well-being of every individual. Through his relentless effort, he has fostered a culture of safety that permeates every role of organization. Motilal Panda sir. Welcome you, sir. Up next for HR Hero Award, can we have Kunj Bihari Paswan sir? Kunj Bihari Paswan amplifies what it means to be HR hero. He is not just a professional in this field, he is also a champion of people, a mentor and an advocate for creating a workplace culture where everyone feels valued and empowered. Up next, Best Safety Professional Award goes to Gautam Kumar. Can we have Gautam Kumar sir with us? Gautam Kumar has always gone above and beyond his role, embodying what it means to be a safety hero. His proactive approach to identifying potential hazard and implementing effective solutions has not only improved safety standard but also fostered a culture of vigilance and responsibility amongst employees. Once again, we are having Gautam Kumar sir with us on stage. Moving ahead, we are all set for the Factory Awards, everyone. And I would request you all, जिनका भी नाम हम ले रहे हैं, please हमें यहाँ पर join करेंगे. And now starting with the Factory Awards, commitment towards workplace and workplace safety. The very first award goes to Sada Energy and Minerals Limited. Can we have Sada them, Energy please? and Minerals Limited needs no introduction. Is one of the finest producer of pele, billet, sponge iron, ferroalloys, wire rods, eco-friendly brick equipped with captive power plant in Raipur, Chhattisgarh, with a legacy of over 50 years with a multi-floor growth and is known as a The next award for commitment towards HR excellence, Mevan Stills Limited. Can we have them, please? Yes. And we are also having HR department from, yes,
Sharda Energy and Minerals Limited. After this, I would be requesting Mimang Steel Limited to be Sharda ready. Energy and Minerals has not just only function but to partner in consistent drive force for the business growth and has always placed its foot mark in leading with key HR initiative in the industry. Sharda Energy and Minerals Limited. एक बार जोरदार तालियों की आवाज. Come on, everyone. Up next, we are glad to welcome Mivan Steels Limited, and the award to them goes for commitment towards HR excellence. Mivan Steels Limited, formerly known as Monet Path Limited, established in 1990, now a wholly owned subsidiary of JSW Steels Limited. An integrated steel plant in Mandir Hasod, Raipur, have a capacity of 0.25 MTPA, structural steel with 1.2 MTPA captive iron ore mines at Kanker, Chhattisgarh. Mivan Steels Limited. Up next, I would like to call upon Adore Welding Limited Raipur for the award. The award goes to Adore Welding Limited Raipur for commitment towards workplace safety. Adore Welding has been a beacon in safety management, dedicated their efforts to promoting safer and healthier workplace. Adore Welding. Up next, I would also like to call upon the next award. This goes to HPCL LPG bottling plant, and the award is for commitment towards workplace safety as well. Up next, can we have HPCL LPG bottling plant, please? HPCL bottling plant has been a beacon in safety management, dedicated their efforts in promoting safer and healthier workplace. HPCL bottling plant. Up next, I would like to call upon the next award is for commitment towards workplace safety as well. I would like to call upon Vakrangi Metal and Minerals Private Limited, please. Vokranji Metal and Minerals Private Limited have dedicated their efforts in person safety, workplace safety, equipment safety, process safety, employee participation, compliance and incident management. These are the practices followed at the plant, and the company has also been a beacon in safety management. Up next, commitment towards HR excellence, and once again, I would like to call upon Vakarangi Mineral and Metal Private Limited. Can we have you guys for HR excellence as well? Up next, I would like to call upon the next award is for commitment towards ESG, and the award goes to Manorama Industries Limited. Can we have them, please? Manorama Industries Limited. Manorama Industries has been a beacon in ESG. ESG is not about compliance, it's about building a sustainable future over planet. Manorama Industries embraced the mission wholeheartedly to commit for a meaningful change. Manorama Industries. Up next, I would also like to call upon, after Manorama Industries Limited, can we have Adani Power Limited commitment towards workplace safety? The award goes to Adani Power Limited. Can we have them, please? After Adani, I would be requesting Jindal Steel and Power Cluster for the commitment towards workplace safety to please join us near the stage. Adani Power Limited, Raipur is whole-owned subsidiary of Adani Power Limited under energy vertical of Adani Group. 1370 megawatt supercritical thermal power plant. APL Raipur is certified with British Safety Council 5-star award, Green Tech Safety Excellence Award and CII Safety Excellence Award. 9 ISO certifications, 5 are certified by Quality Circle Forum of India. Adani Power. Up next, we would like to call upon Jindal Steel and Power Cluster for commitment towards workplace safety. Also, there is one more award for Jindal Steel and Power Cluster for commitment towards ESG. Jindal Steel has been beacon in safety management and HR excellence, dedicated their efforts in promoting safer and healthier workplace.
embodying the principles of empathy, integrity, and innovation. Over the years, they have transformed workplaces, championed diversity, and cultivated an environment where everyone feels valued and empowered. Jindal Steels. Jindal Steels and Power Crystal. Can we have Vandana Global Limited for commitment towards workplace safety? Vandana Global Limited. Can we have them, please? Vandana Global Limited, please आएंगे. Can we have Indian Oil Adani Ventures Limited? Indian Oil Adani Ventures Limited for commitment towards workplace safety. Indian Oil has been a beacon in safety management, dedicated their efforts in promoting safer and healthier workplace. Indian Oil Adani Limited and Adani Ventures Limited. Up next, I would like to call upon Real Ispat and Power Limited commitment towards workplace safety, please. Real Ispat has always believed that people are greatest asset of any organization. Their passion for fostering a culture of inclusivity, collaboration and growth has left an indelible mark on everyone they have encountered. Has been a beacon in safety management, dedicated their efforts in promoting safer and healthier workplace. Real Ispat and Power Limited. आप सभी प्लीज कहीं नहीं जाएंगे. एक ग्रुप फोटो होगा एट द एंड, सो प्लीज जस्ट थोड़ी देर और 10 more minutes max. It is also requested to all of you to submit their feedback forms at the registration counter and collect their participation certificates at the registration counter. Please. Up next, I would be requesting Ambuja Cements Limited to please join us for commitment towards ESG. Ambuja Cements have not only proved that ESG is not about compliance, it's about building a sustainable future for our planet. Ambuja Cements have embraced the mission wholeheartedly to commit for a meaningful change. Ambuja Cements Limited. Up next, I would like to call upon Sarthak Ispat, and the award goes to them for emerging safety industry. Sarthak Ispat has been awarded with emerging safety industry, has been a beacon in safety management, embodying the principle of empathy, integrity and innovation. Over the years, they have transformed workplaces, championed diversity and cultivated an environment where everyone feels valued and empowered. Sarthak Ispat. Up next, I would like to call upon IB Group Avis Private Limited for India's Integrated Protein Leader Award. Can we have IB Group as well?
I, Dr. Sanwaj Rampuri, on behalf of CG Talk and OSI Foundations, very thankful to all participants, including guest speakers, to participate and made success to this event. HPCL से आ जाएंगे HPCL This event will help to achieve sustainable business. I feel proud and again thanks to all participants to make success to this conclave. Thank you. Strange adventures and reveling conversations. So there is one award left for HPCL. Life is for deep kisses. Okay, we are having one more award left, and this goes to Monica Sethi ma'am. And to tell you all that she is the youngest vice chancellor of Chhattisgarh. A round of applause everyone, एक जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से. और चलिए, now we are all set to conclude this event, ladies and gentlemen. Once again, CG Talks and OSI की तरफ से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. I would request you all our eminent guests, please join us on stage for a group picture. Stage पर invited हैं. I would request you gentlemen to please join us. थोड़ी देर आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, कृपया अपनी कुर्सियों से उठ जाइए, हमें स्टेज पर ज्वाइन करें.